Before we begin, the conversations we have, the collaborations we build carry real weight beyond these walls. Before we begin, just a few housekeeping rules. Please keep your phones on silent, minimize movement during sessions, and avoid food inside the hall, please. Our team is available throughout the venue should you need any assistance. Thank you for being here, and thank you for being a part of these conversations. So, with that, I'd like to begin the inaugural session of this year's conference. I would like to invite Ms. Naz Afreen Saigal Lakhani, the Chief Executive Officer of the Dawn Media Group, to escort our speakers up on stage, starting with the chairperson of the session, Mr. Musaddiq Masood Malik, the Federal Minister for Climate Change and Environmental Coordination, Ms. Sherry Rahman, the Chair of the Senate, the Climate and Environment Caucus of the Senate of Pakistan, Mr. Adil Abbas, the Regional Climate Lead at the World Bank Group, and Mr. Mohammad Yahya, the Humanitarian and Resident Coordinator for the United Nations in Pakistan. If I could request everyone to give them a huge round of applause. Ladies and gentlemen, can I request you all to stand up for the national anthem of Pakistan? Thank you. Please be seated. We'll now move towards the recitation of the Holy Quran from Dr. Qari Ikramullah Mohsin, Tamgha Imtiaz, the Qari at the Senate of Pakistan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك
لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Allah is the one who created the heavens and the earth and sent down rain from the sky. Then He brought out fruits as food for you. He has made ships useful for you to travel in the sea by His command. And He has made rivers useful for you. And He has made the sun and the moon both always moving useful for you. And He has made the night and the day useful for you. Allah has spoken the truth. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Thank you, Qari Saab. Now to formally welcome you all here, I'd like to request the Chief Executive Officer of Dawn, Ms. Nazafreen Segal Lakhani, to deliver her welcome remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Distinguished ministers, esteemed speakers, partners and participants. It is an honor to open the second edition of the Breathe Pakistan International Climate Change Conference, a platform that has grown into an important space for dialogue, collaboration and action on one of the defining challenges of our time. Before I begin, I would like to extend my sincere thanks to all our partners, our speakers, participants, not only for their continued support in helping us to build this conference into the strong platform that it is today, but also for your understanding as we reschedule these dates. We deeply appreciate your flexibility and support at this critical juncture as Pakistan continues to engage in important efforts towards regional peace and stability. When we first convened this platform in 2025, we did so with a clear belief that climate change is no longer a distant threat. It is not a conversation for tomorrow. It is a lived reality for Pakistan, for South Asia, and for millions across the globe. Today, as we gather again, that reality has only intensified.
Pakistan is among the most climate vulnerable countries in the world, facing increasingly severe floods, heat waves, water stress, and dangerously poor air quality. These are no longer abstract risks or rare phenomena, they are recurring shocks. Behind every statistic showing up on our screens are real lives. Farmers are losing entire harvests, families are forced to leave their homes, children are growing up in hazardous air, and communities are rebuilding after each disaster only to face the next one. The 2022 floods made this painfully clear, affecting over 33 million people and causing more than $30 billion in losses. They showed how quickly climate shocks can become economic shocks and how deeply they can undo years of development gains. In 2025, monsoon rains and flash flooding once again devastated large parts of the country, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and Punjab, claiming at least 1,000 lives and affecting nearly 7 million people nationwide. Pakistan has also continued to face intensifying heat extremes. In Sindh, in 2025, prolonged heat wave conditions saw temperatures rise by 4 to 6 degrees. In parts of the province, temperatures climbed to around 49 degrees Celsius, placing immense strain on public health systems, energy infrastructure, and vulnerable communities. Such events prove that climate change is not just an environmental crisis. It is a threat to Pakistan's economic stability, public health, and the country's development trajectory. And the burden is not shared equally. Despite contributing less than 1% of global greenhouse gas emissions, Pakistan continues to face some of the most severe climate impacts. That imbalance must remain central to how we frame both global and local responses. At Dawn Media, we believe that journalism is central not only to documenting these realities, but also to shaping the conversations that lead to solutions. From the outset, this was envisioned to be a platform designed to bring together stakeholders who do not always engage with each other directly, and to create space for more aligned and practical dialogue. Our inaugural conference in 2025 brought together policymakers, industry leaders, development partners, and civil society to focus on climate finance, governance, and justice. It culminated in a shared declaration, a recognition that fragmented efforts will not deliver the scale of response that is required. This principle of multi-sector collaboration is at the core of this year's conference. Over the next 2 days, discussions will span climate finance, adaptation, energy transition, urban resilience, and regional cooperation. Across all of these themes runs a single thread: the need to move from isolated efforts to integrated action. No single actor can address this challenge alone. Governments set direction, the private sector drives investment and innovation, communities bring lived experience, and media informs and holds all stakeholders accountable. Real progress depends on aligning these roles into a coherent whole. For Pakistan, the urgency is immediate. It sits alongside deep economic and development pressures that are already shaping national priorities. Decisions on energy, infrastructure, agriculture, and urbanization will define not just our climate resilience, but our economic future. At the same time, Pakistan's voice within the global south remains critical in shaping fairness in climate finance, technology access, and capacity building. But we must also strengthen our ability to absorb and effectively deploy these resources. This begins with a shift in priorities at home. Pakistan must place greater emphasis on adaptation, strengthening flood defenses, improving urban drainage, building heat resilience, investing in climate-resilient agriculture, and expanding early warning systems. Globally, climate finance must better reflect on-ground realities. Adaptation must stand alongside mitigation. Technology transfer must extend beyond energy to resilient systems, and financing must reach where vulnerability is most acute. We must also manage the energy transition carefully, scaling renewables, modernizing our grid, and ensuring financing supports growth without creating unsustainable burdens. Finally, accountability is essential. Transparent tracking, consistent reporting, and independent verification must ensure delivery matches ambition. Because what gets measured is what gets done. Let this conference move us from discussion to alignment, and from alignment to action. Climate change is shaping our present, and how we respond will define what comes next. Thank you, and welcome to Breathe Pakistan 2026.
Thank you, Ms. Sehgal Lakhani, for setting the tone for this very important gathering. We'll now move on to our keynote speakers, starting with Senator Sherry Rahman, who is the chair of the Senate Caucus of Environment and Climate Change. She's going to be delivering her address to start off. Senator Sherry, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. And thank you to Dawn for organizing and convening such an important and stellar gathering at a key inflection point in our lives, in our climate transitions, and in the middle of many conflicts. So, I'm going to talk about three things quickly. Basically, I was asked to address the global politics of climate change. But as always, I'll go from global to local and dive into three things. One is, why is there such a gap between action and ambition, which there is, and we can talk about data points on that. Does climate finance even matter anymore? And what does conflict do to the environment? And is the financial architecture of the world able to handle all of these? And I'm being very structured here, but of course, I will wander away from that. Here's what the problem is to my mind today. All stated climate ambition, whether it's at multilateral conferences or at the community with the Fisher Folks Forum, which is a very grassroots response to climate stress and environmental degradation, you see a splintered, fragmented movement under stress globally and otherwise. But here's the problem that I've been seeing for the last few years, before anything had particularly changed, is that all climate ambition or goals are based on a carbon budget, as they have to be. As they have to be, you have to base it on the science of calculating and taking stock of how much carbon we're using and how much we're offsetting. Based on that, we are in the lived reality, as Ms. Naza Freen said, in the lived reality of 53 degrees centigrade in the summer in parts of Pakistan. I come from Karachi, where it is already 42, 43 degrees, and then the app tells you it feels like much more, and you already have people struggling to deal with this level of heat. And the heat is obviously related exponentially to the amount of carbon and greenhouse gases in the environment. We all know that. But while the global crisis is staggering, what is equally is the state of the global movement itself. It is 2026, and it is spectacularly delegitimized, it is defunded, it is divided, and it is also derided. Forgive the alliteration, but it is exactly what I feel is happening to the global climate movement. There are elites and there are grassroots movements, there are indigenous peoples, all are now fragmented in their responses, and that is a great blow to any champion of climate ambition. Now, coming back to the carbon budget that I spoke about, what worries me is not just the fragmentation in the face of deficits and opposition. Obviously, illiberalism and economic nationalisms are also changing the environment in which the ecosystem, the policy ecosystem in which global responses are made to the climate. It is the disappearance of data and everything. My dog's name is incidentally Data, because I think data is crucial to our lives. Everything is based on data. If it's not, then you're just talking, basically, it's a performative discussion. And in this data, the goal was set at the landmark Paris conference for the 1.5
temperature, global temperature to be maintained. And everybody tailored their emissions targets, their, renew their transitions, energy transitions to that. We all know by now, and I'm sure the minister will tell you much more about the climate injustice of for nations who are, I'm talking about you, so you might want to listen, Minister. So excuse the school mamish tone, but that's how it is. And so the minister will, I'm sure, tell you about climate injustice and its many forms and manifestations, because that doesn't go away. And speaking about it should not take away for the need for local action. They are sometimes considered one or the other. One is not a proxy for the other. So when we speak of that climate injustice, we all know Pakistan is a very small emitter, minuscule 1%, less than 1% emitter. And we do appreciate many countries that are still going ahead with their stated targets announced at Paris. But what really is now worrying is, and I come back to conflict, we have more than 60 active conflicts in the world right now. I link it to strategic security and all national security because conflicts are actually costing the environment much more than we know, compute, or understand. The data, ladies and gentlemen, is entirely missing. If it isn't, it's only 95%. 5%, and 95% is underaccounted. Surely, scorched earth, when the Mongols went through entire swathes of territory, they scorched the earth, as did Napoleon Bonaparte. They did not scorch it like our modern wars. Today's wars are devouring the environment, they are eating away our futures, and they are negating any spirit of collective action that is needed, because it is needed beyond borders. What you do in another continent does impact the heat wave I'm experiencing in Karachi. It's simple as that. So while we apportion responsibility to each other, it is important to know that no matter what we say about the climate and 1.5 alive, 1.5 is no longer alive. We have already passed that trajectory. The heating is going past that, the emissions are going past that. And I'm sorry, but elite privilege is practically, probably willfully blind to the impacts, the catastrophic impacts of wars and climate, on the climate and the environment. And that has actually manifested itself in fatal decisions to go to endless wars. We thought the 21st century would be different after the Second World War. We thought multilateralism would solve a few of humanity's problems. But here we are, in more active conflicts than any since the Second World War. Some are internecine, some are protracted, some are far away, but we have one right next door. And there is very little discussion of what lasting and medium-term impact these wars will have on the environment. Because as I said, of course, the humanitarian impacts are devastating. But just to, clear the mind, we are next door to Tehran. That's a city that was water scarce just a year ago maybe, like Cape Town, and were able to come back from that. We are very close to that here. Our urban scarcity is pretty serious in terms of water. But the human exposure and the pollution quotient, which is entirely within a border's hands, has gone up. It is no longer our own problem. I mean, you do have a neighbor impacting you, as you all know. There's a constant tussle going on about who burns more crops in the winter than does Pakistan do it or India do it, to a point where we can't breathe. And here we are at the Breathe Conference. So the Tehran exposure itself, it's a 9 million people city and 3 million in its environments.
there were 14 million people impacted. Now, Pakistan, whose baseline crisis is actually pollution, not emissions. Emissions is different. The impact is different. It's global. But pollution is generated locally, and it is making us breathe very toxic air at least 1/4 of the year. And that 1/4 may extend itself, as was rage on, as the oil facilities that get burnt and attacked in these wars rage on, and there is no calculation yet of the destruction. There are people are doing back of the envelope computations, but there's no calculation yet of that is actually very credible and able to form part of a carbon budget calculus. Why is this happening? The Kyoto Protocol and the Paris Agreement never computed the carbon footprint of any war or conflict or military. Let that sink in. The Kyoto Protocol did not include any conflict or war spending or even a military movement footprint. Neither did the Paris Agreement. This has been the great silence. And now I think it's time to talk about it, because it will impact our coastline, it will impact the air we breathe, which is already the most toxic in the world at certain times, parts of the year. We have over 140,000 fatalities due to just air pollution. That number is going up. Arguably, there is much to be done outside of this whole arena, but I think since we are in an environment where stock take is valued as a priority, why is the cost of conflict from Darfur to Somalia to Pakistan and there are anywhere, the Ukraine, not being counted? That carbon footprint is missing. And at this point, the sum of the data I have suggests we are burning through 40 million tons of carbon dioxide very quickly, just from the war. And the war, for instance, just the 14 days of the war in the Gulf, just the 14 days of the war in the Gulf, burnt up the emissions worth of a small country like Kuwait or Iceland. And as it goes on, it is emitting the carbon footprint of 84 low emission countries. 84 low emission countries. Now 84 includes Pakistan, I'm pretty sure, because we're a low emission country. So that's where we are. Nobody's counting this. And this is the state of the climate movement. It never counted in the cost of conflict. And here we are with geopolitics devouring our futures. So I mean, there's a lot more to say, but they're saying your 15 minutes are up. Happy to get off. But I do want to say that climate finance becomes a long subject for every conference. We all attack it, and we all have, and there are informed people who deal with it technically. But the point here is that, look, 75% of financing for Pakistan for climate, as we all like to repeat, has been loans. And look at our debt burden. We are up to somewhere, I mean, we have a fiscal deficit, sure, but our climate losses are projected at 18 to 20% of GDP. And our total public debt, just the debt servicing, goes into a very high percentage, about 47%, 46% of the federal budget. 30% of our import bills are for the hydrocarbons we are fighting about. These are hydrocarbon wars, make no mistake. These are energy wars. And that's where our money is going. So, if the IMF, the World Bank, and other MDBs, ADB, anyone is listening, they should be. This is time to prove that the Bretton Woods architecture is not broken. I've been saying this for a while. So has Pakistan at the official level. And it's important to find a reset for a country
that clearly needs scalable, immediate assistance, not in the form of loans anymore, not financing that comes in dribs and drabs and is not agile, does not respond to the vulnerability on the ground. There is no point adding to the fragility, the debt fragility of the country. So I think that needs to be addressed a little substantively, and obviously local action. And I would identify 3-4 things as very, clear for and open for action. Some of them are doables. Obviously, you have to address water security. I'm sure the seminar will address it substantively. You have to address air pollution. We are the most polluted country, but we are also consuming very high capita water. Just going through that water like it's an infinite resource. It's not. Perhaps I think we are one of the 4th largest per capita water consumers in the world. That figure may go up or down. So that's where we are. And there are lots of things to not do. I mean, the not do involves invading a rewilded environment with concrete. And that's right here in Islamabad. When I come from Karachi to Islamabad, I suddenly feel the environment is air conditioned. It feels like all of Pakistan's tiny forest cover, 5%, the lowest in the region, is right here. The Margalas are beautiful. But it's not just about beauty. These are the lungs of the city. And they will not continue to be the lungs of the city if we are going to make the same bad choices that many urban towns have made all over the world, which is offsetting development as a core 20th century initiative while not counting in the cost to the environment, the cost to the public, and the public health costs of having non-green cities. We already have them. This is the only green city we have. Please, let's ruin this. Thank you. Thank you, Senator Saiba, for such a candid and powerful message. I'd now like to request Mr. Adil Abbas, who is the regional climate lead at the World Bank Group, to come and deliver his address. Sir. Your Excellency, esteemed guests, thank you very much. I'm really, really honored to be here. And it was a pleasure to hear your candid remarks, Your Excellency. And I will not necessarily directly respond to them, but I will maybe address and put some of those numbers in front of our audience as well. We all know why we are here. We all know the challenges that the climate change is posing, not only in this country, but global. And that's why I won't necessarily talk about the challenges, but share a perspective on how World Bank views climate and how we are approaching the issue. But before I do that, let me acknowledge and recognize the government of Pakistan's commitment, the policy, and the direction that the government of Pakistan is setting. Whether it is the new NDC 3.0, the National Carbon Policy Guideline, and a number of other policies. I work on 24 countries in this region on climate change. I think Pakistan is among one of those countries that has set the agenda right. But it is not just about setting the policy and agenda right. I think we really now need to move from that ambition, that policy agenda, to action and scale. And that's what I would talk about briefly. Now, at the World Bank, we know that climate change is making our lives much more difficult. It's not just about air pollution, it's not just about heat waves, it's also not just about flood, even though they are devastating. It is really at the heart of climate is an economic development issue. And that's how we need to approach. We cannot look at how we used to do development before and keep repeating the same mistakes. As our lovely minister and friend always says, the definition of insanity is
keep doing the same thing and expecting different results. So with that, just let me bring few points. We know that financing is really squeezed. There's global fragmentation. Many countries, not just developing countries, but developed countries who had been the source of financing for many development priorities, including climate change, are facing their own fiscal deficit. So within that environment, what can we do? From the bank perspective, just to share a few facts. World Bank is, and not very many people recognize this, is that World Bank is the largest MDB financier of climate action. Of course, that financing comes in different forms, but it enables about $39 billion of financing globally from World Bank was recognized as climate-related finance. What this financing did was not just do one-off projects here and there, but it enabled green growth policy. There are several global examples. We just were in Egypt where we were discussing about $1 billion of green growth policy reform package. This has been done in many other countries. In South Africa, World Bank and its private sector arm, IFC, is enabling about $9 billion of financing package for clean energy transition. And this is happening around the world. Just last month at the World Bank's annual spring meetings, the World Bank has launched new landmark initiative because we want to move away from just the financing and counting these numbers to impact. One of those initiatives is called Water Forward. And at the core of the Water Forward is providing water security to 1 billion people. 400 million of that would be supported by World Bank and IFC financing, and we are crowding in about other MDBs, other financiers to add 600 more million people to provide finance. Similarly, another initiative, AgriConnect, was launched. AgriConnect aims to connect farmers through climate-smart agriculture practices with the markets around the world for at least 300 million people over the next 5 years. These initiatives are just examples of how World Bank looks at these and how we are looking at financing, from financing to scale and impact. Now, of course, coming from global to local, just to share a few examples, in Pakistan as well, we know, and many of you may be familiar, World Bank has committed about $40 billion over the next 10 years as part of our commitment to the government of Pakistan as part of a country partnership framework. That 40 billion, 20 billion of which would be financing in different forms directly to government and private sector, and then leveraging another 20 billion. What does this financing do? Let me not just talk about what will happen in future, but what is already happening. In Pakistan, for instance, we talked about air pollution. This is Breed, Pakistan. Have a look at some of the projects that World Bank is supporting in Punjab, for instance. There is a $300 million project that was approved last year to work on air pollution issues in Punjab, the industry, the transportation, and other green financing initiatives. In Sindh, there's already more than $2 billion committed from the bank, and they are under implementation for flood response and housing reconstruction that is flood resilient in future. There are many other projects and examples, but I will not bore you and take more of your time on those. All of that information is available, and later in the day, during the climate finance session, maybe I'll expand on many of those examples as well, on how we can use that financing to leverage larger amounts of financing so that we can really have low carbon, green economic development and build resilience in our community. So with that, thank you very much, and I look forward to staying with you for the rest of it. Thank you. Thank you, Mr. Abbas, for nudging the room towards action instead of just policy, but also acknowledging the positive actions the government of Pakistan is taking, and telling us a bit about what the World Bank is pursuing in our dear country.
I'd now like to request Mr. Mohammed Yahya, the UN United Nations resident and humanitarian coordinator for Pakistan, to come and deliver his address. Assalamu alaikum, distinguished guests, distinguished speakers, excellencies, colleagues from the UN, ladies and gentlemen. It's really a pleasure to be here again at Free Pakistan. I really want to thank the incredible work that's been done by Dawn Media for creating the space. The space does very important and rare thing, I think, in the climate discussion. It connects urgency with practical actions. This year's theme, time is running out, and I think all the speakers have emphasized this point. And the demand is to move from diagnostics to real action. I think we all agree the science is clear, the impacts are visible. Very recently, I went up north. You really don't have to be a scientist to see the receding glaciers. A quick conversation with local community will tell you what they're seeing. And for Pakistanis, I think you've seen these constant floods that damage every year. The country loses billions of dollars. I was thinking actually while I was sitting there, the losses from every year financially is probably equivalent to the IMF program that Pakistan is in it in terms of finance. Billions of dollars are lost every year. On Monday, Senator Sher Rahman will probably know she was in Karachi. The temperatures there were, I'm told, the highest has been for decades. The constraints and the challenges overall is one of execution. There's a lot of discussions around climate action, and countries like Pakistan are at the forefront of that. But we are seeing very little implementation. So today, it's worth re-emphasizing three realities to frame this critical moment. One is we know we are heading to the wrong direction. The current commitments of 1.5 degree, I think the consensus now is we'll probably end up at 2.3 and 2.5 Celsius by 2100. And what will that mean for a country like Pakistan? I think that is clear. This is not abstract for community. People are losing their livelihood, their homes. There's a real climate displacement already happening in Pakistan. So for them, translating commitments to action is what has been asked. And the reality is, a country that is at the forefront of climate impact, and you've heard from two previous speakers have contributed very little, is also experiencing drought of solidarity. Nobody is coming to invest specifically when it comes to grant. So that is one critical issue. Where will the financing come? Where will the grant come for a country like Pakistan and others who are impacted on this? While expenditure in wars and conflict and weapons has never been higher globally. The second issue is around adaptation. The gap is widening. The costs to build resilience are growing. Again, financing is nowhere to be seen in terms of grants. I say grants because, of course, there are important concessional loans that are coming, and the World Bank and other financial institutions are at the forefront of this. But if you think about it, Pakistan has been asked to take loans to fix what this country did not cause, so that then you pay back that loan and you're indebted. I mean, the Senator just pointed out 47% of your budget every year or last year went to servicing debt. What kind of justice is that when you lose resources, your farmers are damaged, your glaciers are melting, you had very little things to do with it, and then the international community says, here are some loans to fix those problems. And of course, you're going to have to pay us back.
Third is the issue of implementation. Climate action is now a defining challenge. Many countries, including Pakistan, there are credible plans. The question is whether they can be translated in this. Pakistan's role and leadership will be incredibly important. The country has made important commitments with the NDC 3.0 to reduce emissions, to pursue a just transition, and to strengthen resilience. The opportunity to convert those commitments into progress will fall on government, and I want to recognize the leadership of a minister who's here today, Musadak, who's been incredible. And I can tell you, for those who haven't dealt with the minister, is a minister who always asks, where is the result? Where are the tangible results? And I think I want to personally thank him for his leadership when it comes to climate action and also pushing beyond the talk to seeing real results on the ground. This year we will have COP31. Countries will be asked to raise their ambition and show results. Pakistan has an opportunity to help shift the global conversation from promise to action. But this will require support, not only from more financing, but innovative blended financing, not only good policies, but federal and provincial coordination frameworks, not only national strategies, but provincial and local ownership. This is where the future lies in terms of Pakistan's ability to deliver these real tangible results that we're all looking for. Excellencies, there is a tendency in the global debate to frame countries like Pakistan as victims of climate change, which is true, but that is half of the story. Pakistan is also a test case for solutions on adaptation at scale, on integrating climate finance and climate perspective into the development agenda, and also on international cooperation and practice. If progress is to be accelerated, especially in a country like Pakistan, I think it will send a powerful signal to the rest of the world. So United Nations, and my colleagues are all here, you will see we've done in huge numbers. We also have colleagues from our headquarters who are here, from UNEP. You'll hear more about from what the incredible work UNEP is doing in support of this, but entire UN system. We are committed to supporting the government of Pakistan through partnership, through financing frameworks, through bringing experiences, global experiences to bear as Pakistan takes leadership in this important topic. Time is running out, but what happens next is still a matter of choice and collective action. Thank you very much. I've heard Mr. Yahya speak a number of times, and every time I felt that he has a true passion for change in this country, and today was no different. It is my honor now to request the chairperson of this session to deliver the closing remarks. He's the Federal Minister for Climate Change and Environmental Coordination, Mr. Musaddiq Masood Malik. Sir, if you could. Khawatino Hazrat, बहुत बहुत शुक्रिया. Because most of my friends have spoken in English, I would take the liberty of speaking in Urdu. मैं जब पिछली सदी की बात है, मैं जब 7 साल का था तो एक लाहौर में स्कूल है, डिविजनल पब्लिक स्कूल, वहाँ पढ़ता था. तो वहाँ पे हमारी एक आर्ट और क्राफ्ट की क्लास होती थी. तो उस क्लास में एक मर्तबा हमें हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने तस्वीर बनाने को कहा, लैंडस्केप बनाने को कहा. अब 7 साल का बच्चा क्या ही लैंडस्केप बनाएगा. तो सब बच्चों ने तस्वीरें बनाई जिसमें कोई एक छोटा सा घर था, आसमान था, गुडियाँ वुडियाँ, क्योंकि लाहौर था, हवा में गुडियाँ रंग बिरंगी उड़ रही थीं, उस वक्त पाबंदी भी नहीं थी. और आसमान पे कौसे कज़ा रेनबो जो है वो सब बच्चों ने बनाई. और किसी ने ना जानते हुए
कि जुगनू रात को होते हैं, तितलियां दिन में होती हैं, मगर 7 साल के बच्चे को इससे क्या गर्ज, किसी ने जुगनू भी बना दिए और तितलियां भी बना दी। ये पिछली सदी की बात। अभी कुछ 2024 में इसी तरह की एक और खबर अल जजीरा में आई कि उसी शहर में, मेरे शहर में, जहाँ पे कई सदियों से हम आबाद हैं, एक छोटी 7 साल की लड़की को ये कहा गया कि काका तो बनाओ, तस्वीर बनाओ लैंडस्केप लाहौर की। तो उसने बादशाही मस्जिद बनाई, उसने मीनार पाकिस्तान बनाया, उसने अपना छोटा सा मकान भी बनाया, अम्मा अब्बा भी बनाए, लेकिन आसमान का रंग बदला। उसने नीले रंग का आसमान ही नहीं बनाया, उसके गुमान में ही नहीं आया कि आसमान नीला होता है। ना जुगनू थे, ना तितलियां थीं और ना नीला आसमान। और ये कोई अकेली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक बच्ची ने, 7 साल की बच्ची ने, एक बिल्कुल उसी शहर में जहां मैं रहता था, उसी शहर में एक यकसर मुख्तलिफ तस्वीर बना डाली, रंग ही बदल डाले, सारे लैंड के, सारी तस्वीर के रंग बदल दिए। बिल्कुल इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में एक एक आबादी है, एक वैली है जिसका नाम रोशन है। 22 अगस्त 2024 को, 22 अगस्त 2025 को सुबह 4 बजे एक क्लॉक फटा और सूरज चढ़ने से पहले पहले वो रोशन जो था वो बिल्कुल गुल हो चुका था। यानी उस सैलाब ने जो आसमान से कहर की तरह, ऐसा था कोई कुछ समंदर आसमान में है जो नीचे आबादी पे आ बरसा, वो रोशन तारीख हो गया। उस रोशन वैली, उस रोशन गांव का हर घर तारीख हो गया। ये पिछले साल की बात। सिंध में एक साहब थे बरकत अली, वो पिछले सैलाब में जो सिंध में आया, उनको 2 या 3 नस्ल लगी। ऐसी मैं बहुत सी कहानियां हर जगह जगह सुना चुका हूं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में, बलूचिस्तान की भी कहानियां हैं। तो वो 3 नस्ल लगी या 2 नस्ल लगी गुर्बत से निकल के हारी को 2 भैंसे खरीदने में। पूरी 2 नस्लें लग गई सिर्फ इस काबिल होने में कि वो अपने बच्चों को दूध दे सके, थोड़ा बेच सके, कुछ काम वाम चला सके। तो सैलाब आया तो दोनों बह गए, तो बेबरकत हो गया, तो बरकत भी बेबरकत हो गई। इसी तरह एक साहब, ये हमारी जो वैली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो बुनेर और शांगला में छोटी छोटी खेती बाड़ी थी, छोटी खेती बाड़ी, और वहां पे जब टोरेंशियल रेन आई और फ्लड्स आए, तो वो ठेके पे ली हुई जमीन, जिसका कोई 50-70 हजार रुपए का ठेका होगा, और वो खेती जो उससे उगाई हुई थी, वो 4-4, 5-5 फुट पानी में डूब गई। और पठान आदमी था, रोया तो नहीं, मगर बेनूर आंखों से देखता रहा, बेनूर आंखों से देखता रहा कि बीज कहां से आएगा और अब खाना कहां से आएगा और अब ये फर्टिलाइजर खाद कहां से आएगी, इस सब के पैसे कहां से आएंगे। और बलूचिस्तान में तो आप सब जानते हैं कि कभी कहर, कभी बारिश नहीं, कभी जरखेजी नहीं, लोग जिप्सीज की तरह एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में निकलते। तो अजीब सा नहीं लगता आपको? अजीब सा नहीं लगता कि एक मुल्क 4 कोने, 4 कहानियां, 4 चेहरे, मगर एक ही बर्बादी। तो अजीब सा नहीं लगता? भाई मुझे तो बहुत लगता है।
तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है, बहुत अच्छा सा नाम है, ब्रीथ पाकिस्तान, सांस लो। तो मैं आपको बताता हूं कि सांस क्यों नहीं आता। सांस इसलिए नहीं आता कि जहां पे 4 सैलाब गुजरें और 7,000 लोग मर जाएं, जो जंग में भी ना मरे हों, फिर सांस नहीं। अगर 20,000 लोग जख्मी हो जाएं 4 सैलाबों में, 20,000, और डिसेबल हो जाएं, लाचार हो जाएं, तो फिर सांस नहीं। अगर 40 मिलियन, कितने हुए भाई, 10 मिलियन का 1 करोड़ हुआ, तो 4 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो जाएं 4 सैलाबों में, तो फिर सांस नहीं। और जब एक सूबे में 1 करोड़ 10 लाख बच्चे, 1 करोड़ 10 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम हो, वो सांस ना ले पाए, क्योंकि तकरीबन 100 गुना जो सांस लेने के लिए जो सेफ हवा है, 100 गुना उससे ज्यादा हवा खराब हो, 100 गुना, 100 गुना, 100 टाइम्स, नॉट 100%, दुगना जो है वो 100% होता है, दुगना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना जब वो हवा सांस लेने के काबिल ना रहे और तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बच्चे वहां पे सांस ले रहे हो, फिर सांस नहीं। और एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च आई कि तकरीबन 6 से 7 साल जिंदगी के, 6 से 7 साल जिंदगी के सिर्फ हवा की खराबी से, यानी ऐसी हवा जो मुज़िर हो, जो लेने से सेहत खराब होती हो, 6 से 7 साल जिंदगी के कट जाते हैं ओवर अ लाइफ टाइम। तो मैं आपको कहूंगा, आप सोचें, अगर किसी के बूढ़े माँ बाप या दादा दादी अल्लाह को प्यारे हो गए, तो जब वो आखिरी दमों पे सांस ले रहे होते हैं और आप उनका हाथ पकड़ कर बैठे होते हैं, तो आपके गुमान में क्या क्या नहीं गुजरता है, आप क्या क्या दुआ नहीं मांगते कि या अल्लाह एक दिन दे दे, एक, कि वो तमाम बातें जो मैं कह नहीं सका या मैं कह नहीं सकी, वो मैं आज, अगर एक दिन मिल जाए, अगर एक हफ्ता मिल जाए, तो आप क्या ही नहीं करेंगे। 7 साल, हर खानदान में हर बुजुर्ग के 7 साल अगर जिंदगी के काट दिए जाए, भाई फिर सांस। तो इस वजह से ये तमाम चीजें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये हमारे, ऐसे लगता है जब मैं आपसे बात करता हूं कि कोई मैथ के नंबर हैं कि 1 करोड़ 5 करोड़। वो मंटो साहब का एक शॉर्ट स्टोरी थी, मैं याद करने की कोशिश करता हूं, बहुत पुरानी बात है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शख्स की मौत तो मौत घर में हो जाए और जनाजा पड़ा हो तो मौत दिखती, लेकिन चाहे गजा हो, चाहे सैलाब हो, चाहे तबाही हो, जब 1 मिलियन 2 मिलियन 60 लाख 30 लाख, ऐसे लगता है कोई नंबरों का हेर फेर है, कोई खेल है ये। तो ये खेल नहीं है। अभी आपने सबने बात की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, याहिया साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, जिनने मुझसे पहले ही वो बात कर डाली कि ये आग तो है मगर हमने तो नहीं लगाई। हम तो 1% से कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया में पैदा होती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ग्लेशियर्स फटते हैं, जिससे ये तमाम तबाही होती है, सीजन वेदर्स बदलते हैं। ये तो सब लोग कह चुके हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखा। हम तो 1% से कम करते हैं। 3 तकरीबन 60% के करीब, 57% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट करते हैं, 30 जमा 20 जमा 16। और 10 ममालिक जो हैं वो तकरीबन 70% दुनिया की कार्बन, सिर्फ 10 मुल्क, 190-95 मुल्क हैं, 10 मुल्क
दुनिया की 70-75% कार्बन एमिट कर रहे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान में तबाही जो आती है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने वहां पे कोयले के कारखाने तो नहीं लगा रखे, तो फिर उन पे तबाही क्यों आती? वहां पे तो कोई कोयले का कारखाना नहीं। गिलगित और बल्तिस्तान के रहने वाले कोई ऐसी चीज नहीं करते जिसकी सजा उनको दी जाए। ये जो सिंध के अंदर हारी हैं, इनने क्या किया कि समुद्र का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया? भाई क्या किया उनने? ये जो बच्चों को जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिन्हें सांस नहीं आता, इन्होंने कुछ घर में मोमबत्तियां जला के क्या हवा खराब की है? तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर जो कर रहे हैं वो भुगत नहीं रहे, और जो भुगत रहे हैं वो कर नहीं रहे। और ये तकरार तो चलती रहेगी। आप इसको ग्लोबल इनजस्टिस कह लें, ग्लोबल हिपोक्रेसी कह लें, जो आपके जी में आए कह लें, मगर हकीकत यह है कि जो भुगत रहे हैं वो कर नहीं रहे, और जो कर रहे हैं वो भुगत नहीं रहे। ये इंसाफ नहीं, ये इंसाफ नहीं। ऐसे नहीं कि हम इंसाफ के तलबगार हैं, हमने दुनिया में देख लिया है क्या हो रहा है, तो ऐसी तो कोई हमें भोलापन नहीं है कि हम कह रहे हैं इंसाफ नहीं है तो दुनिया उठेगी और इंसाफ करना शुरू हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है, मगर ये इंसाफ नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यह मामला इंसाफ का है या राइट्स का है, हकूक का है? क्या यह दुनिया की इस हमारी साउथ में रहने वाली जो बस्ती है, क्या उसके लोग लोग नहीं हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके इंसानी हकूक नहीं है? हकूक सिर्फ पार नदी के उस तरफ के जो लोग हैं उनके हैं। तो ये हकूक की बात है या इंसाफ की बात, या ये पॉलिटिकल विल की बात है? और पॉलिटिकल विल हमारी भी, सिर्फ बैनुल अक़वामी नहीं, हमारी भी, मेरी। तो क्या ये पॉलिटिकल विल की बात, या ये सिर्फ इमेजिनेशन, गुमान की बात है कि हमारे गुमान में ही नहीं आता? अभी मैं बैठा दोस्तों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि क्लाइमेट पे कुछ बात जबरदस्त नहीं होती। मैडम शहरी रहमान भी मुझे कह रही थी कि हम इतनी बात करते हैं मगर लोगों के गुमान में नहीं आती, पूरी दुनिया के गुमान में नहीं आती। तो क्या फिर ये गुमान की बात है, सिर्फ इमेजिनेशन का फुकतान है? तो आई लीव दिस क्वेश्चन विद यू। इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल विल? इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ जस्टिस? इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ राइट्स? और इज जस्ट लैक ऑफ इमेजिनेशन? तो ये तो शायद कोई आमेजिश है इन तमाम चीजों की, जिसकी सजा गरीब तरीन लोगों को मिलती है। गरीब तरीन मुल्कों में गरीब तरीन लोगों को इसकी सजा मिलती है। तो मैं एक दफा एक साहब से बात कर रहा था, दोस्त थे, तो हम आपस में मामलात यही मुल्क के इस तरह की तरक्की के और तबाही के और क्लाइमेट की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कोई मशवरे दिए, मैंने भी कोई मशवरे दिए, उन्होंने फिर कोई मशवरा दिया, मैंने भी कुछ मशवरा दिया, उन्होंने फिर जोर से मशवरा दिया। तो मैंने बोला, लोग चाली, we are doing this for our own children, so we are going to do this with you or without you. If we do it with you, it may take us 5 years. If we do it without you, it would take us 10 years, but by God we are going to do it, because we are doing it for our own children. तो हमें इंसाफ है या नहीं है, ये गर्ज उन लोगों से जो समझते हैं कि दुनिया में इंसाफ होना चाहिए। हमारे तो बच्चे हैं, हम तो उनसे इंसाफ करेंगे, तो हम तो कमिटेड हैं। हमारे 64% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं, 64%। और आप दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वैसे तो हमारी अपनी बड़ी अजीम यूनिवर्सिटियां हैं, ये हमारी JIK क्या और लम्स क्या, और मैं हर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, मगर हमारी अपनी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, और उनमें से निकले हुए जो बच्चे बच्चियां हैं,
उनके जहन में बहुत से खाके हैं, बेहतरीन खाके हैं, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं उनको मिलता। हमें देना है वो रास्ता, हमें देना है वो रास्ता। तो हम आपसे कमिट कर रहे हैं कि हम वो रास्ता देंगे। अगर क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक काम करेगी, सिर्फ एक काम, तो इन बच्चे बच्चियों को एम्पावर करेगी। हमने एक प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिस प्रोग्राम पे हमारी मैडम सेक्रेटरी जो है आजकल तगोदौ से काम कर रही हैं। हम यहां पे हर क्वार्टर में एक कंपटीशन करेंगे और तमाम बच्चे बच्चियां जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास समझ बूझ है, जिनके पास साइंस है, जिनके पास जील है, और सबसे अहम चीज यह है कि उनकी आंखों के अंदर सितारे हैं, उनको अभी भी हमारी तरह बुढ़े से निकल नहीं हो चुके, अभी भी सोचते हैं दुनिया तब्दील हो सकती। तो ये बिलियंस, ट्रिलियंस, 50 मिलियन, 100 मिलियन नहीं, हमें सिर्फ थोड़े से पैसे चाहिए इन बच्चे बच्चियों को एम्पावर करने में कि ये अपना रास्ता, अरे भाई इनकी हवा है, दे आर ब्रीदिंग, दे विल फाइंड द सोल्यूशन। और इनकी एक कॉमराडरी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के यंग लोग, पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटीज के लोग, उन तमाम बच्चे बच्चियों से जिनके जहन में आज भी एक रोमांटिक आइडिया है कि दुनिया बदली जा सकती, इन सबको जोड़ेंगे पूरी दुनिया में। वो वहां से टेक्नोलॉजी लाएं या हमारे बच्चे यहां पे इजाद करें, हम उनको कंपटीशन के जरिए पैसे देंगे ताकि वो काम करें जो किसी के गुमान में नहीं। और फेल हो जाएं तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? इधर 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 7 बिलियन की बात ऐसे करते हैं जैसे कुछ कीड़े मकोड़े हों। तो कोई 50-60 लाख रुपया अगर कोई बच्चा ज्यादा जाया कर देगा तो क्या ही हो जाएगा? उसके हाथ में बैट तो थमाए, उसको स्विंग तो करने दें एक दफा, और इस ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से निकलें कि साल भर में ये करेंगे, 3 साल में कमेटी बनाएंगे, 5 साल में ये नहीं। छोड़ें यार इस सबको। आप इन बच्चे बच्चियों को थोड़े पैसे दें और उनके रास्ते से हट जाए, और फिर आप देखें क्या तमाशा होता है। तो ये है तमाशा जो हम लगाना चाहते हैं। कल मैडम ने, हमारी इटालियन एम्बेसडर बैठी है, मैं सल्यूट करता हूं आपको। कल उन्होंने, हमारा एक आइडिया है ग्रीन यूनिवर्सिटी का, कल उसकी फाइनलाइजेशन मैडम सेक्रेटरी बैठकर कर रही हैं। आई सल्यूट यू। It was a rolling conversation in Italy that I had just a few months ago, and the team was here yesterday, and we were talking about putting together a framework जिसमें इकट्ठी रिसर्च होगी। हमारे बच्चे बच्चियां इटालियन बच्चे बच्चियों के साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। उनके जो प्रोफेसर्स हैं, जिनमें से कई नोबेल लॉरिएट भी हैं, वो हमारे बच्चों की रिसर्च को सुपरवाइज करेंगे। और रिसर्च हम वो करेंगे जो कमर्शियल रिसर्च है, जो अप्लाइड रिसर्च है। ये हैं वो आइडियाज जिन्हें जब $2 लाख डॉलर या $50,000 या $40,000 मिलेंगे तो एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। तो आइडियाज की दुकान भी खोल दी इस ग्रीन यूनिवर्सिटी से। और जिस चीज को हम ग्रीन फील्ड, पाकिस्तान पिच फॉर क्लाइमेट कह रहे हैं, उसके जरिए जो कमर्शियल आइडियाज हैं, कमर्शियल आइडियाज, इन बच्चे बच्चियों में, इन्हीं में बिलियनर बैठे हैं, रुपयों में नहीं, डॉलर्स में बिलियनर बैठे हैं। क्योंकि जिस तरह का क्लाइमेट हमारा है, जिस तरह की तबाही यहां आती है, जैसे हम जोर से कहते हैं ब्रीथ पाकिस्तान, जो बच्चा है इसको डिकोड करेगा, जो इसका सोल्यूशन लाएगा, उसको पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जो पाकिस्तान में पानी फराहम करेगा, वो पूरे अफ्रीका में पानी फराहम करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ना जाने कितने ही $1 बिलियन आइडियाज इसी कमरे में मौजूद। तो वजीर आजम के बिहाफ पे, वजारत के बिहाफ पे, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि यही वो आइडियाज, यानी गुमान का जो फुकदान है, सोच का जो फुकदान है, इस ग्रीन यूनिवर्सिटी के जरिए उसको दूर करेंगे।
और वो तमाम starry eyed young men and women who are willing to swing the bat, will empower them, and we will get out of their way. तो आज मैं आप सबको घड़ी भर को कहूंगा कि एक लंबा सांस लें और रोक लें, अब जाने दें। बस इस एक सांस का है झगड़ा। So my friends, breathe Pakistan. Let's begin, and let's begin today. Thank you very much. Thank you, sir, for such impactful remarks, and very pleasant to hear your continued focus on the next generation of this country. With that, I'd like to request all of you to give a huge round of applause to our speakers. They've really set the tone for a powerful day, 2 days to come. Thank you all. Thank you for being here. Ladies and gentlemen, please remain seated. We're about to start session 2. And before we do, I'd like to request everyone to keep their phones on silent, please. Ladies and gentlemen, please remain seated. We're about to start session 2 immediately. Palmolive Naturals. New look, natural glow. विटामिन ई के साथ ना बाल गिरेंगे ना आंसू। सनसिल्क वर्क्स फ्रॉम गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज V5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी *400# मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। Introducing the new line of Pell refrigerators, a new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। विटामिन ई के साथ ना बाल गिरेंगे ना आंसू।
Samsung works for me. Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. Like Pakistan, 4 urgent truths become clear. First, as we heard, climate change is no longer a distant or abstract concern. It is actively generating disasters and are having profound and immediate impact on people's lives. Floods, heat waves, droughts, storms are not just environmental events, but they are taking lives, destroying homes and livelihoods, displacing families, disrupting health and education systems, and pushing already vulnerable communities deeper into poverty. In Pakistan, we saw this firsthand, most dramatically in the floods of 2010 and 2022, and again last year. These events overwhelm communities and institutions alike, and they stretch humanitarian systems to their limits. Second, these disasters are no longer isolated or exceptional events. They are becoming more frequent, recurrent, and compounding. Each shock lands before recovery from the last one is complete. The economic damage, as you also heard, is enormous. Lost infrastructure, lost productivity, shrinking fiscal space, and rising public debt. But beyond the headline numbers, the deeper issues are structural. Climate shocks are now reversing development gains, impacting communities into cycles of vulnerability and reshaping national development trajectory. In other words, climate change is transforming disasters from one-off emergencies into long-term developmental challenges. Third, our policy and institutional responses have not fully caught up with this reality. Disaster risk reduction and climate change adaptation have largely emerged from different disciplines, different institutions, and different planning traditions. Disaster risk reduction has tended to focus on preparedness, response, and recovery, often operating on short time horizons and driven by emergency imperative. Adaptation, by contrast, has focused on long-term planning, resilience building, and climate-proofing development. Yet for communities on the ground, these are not separate challenges. A farmer facing repeated floods or droughts does not experience response, recovery, and adaptation as disconnected agendas. It is one continuum of risk. And when our systems remain fragmented across institutions, policies, planning horizons, and levels of government, the result is reduced effectiveness despite higher expenditures. Put simply, adaptation and disaster risk reduction need to come together, not just in theory, but in practice. And finally, fourth, this integration is critical not only for better outcomes on the ground, but also for financing. At present, too much climate-related finance is still reactive, mobilized after disaster strike, through emergency appeals and short-term instruments. Integrating adaptation and disaster risk reduction opens a door to more predictable, efficient, and scalable finance. It strengthens the case for investing upfront in risk reduction, for aligning humanitarian development and climate finance, and for moving from crisis-driven spending to resilience-oriented investment. Again, this is not just a technical issue, it is central to fiscal sustainability and national development planning. That brings us directly to the purpose of this session on synergies between adaptation and disaster risk reduction. If we accept that climate change is generating recurrent disasters, that these disasters are now structural development challenges, and that fragmented approaches are no longer fit for purpose, then the central question is not whether we respond or whether we adapt, but how we do both
together more efficiently and at scale. This session, therefore, will focus on four interconnected areas. First, policy coherence. How adaptation policies and disaster risk reduction strategies can be better aligned through integrated system-based approaches. Second, governance. How coordination can be strengthened across ministries, provinces, and institutions to reduce fragmentation and increase impact at scale. Third, implementation. How risk and plans are translated into practical, joined-up action at national, provincial, district, and community level. And finally, fourth, finance. How Pakistan and its partners can shift from funding reactive crisis-driven plans only towards investing in predictable, resilient-focused plans. Together, these issues go to the heart of how countries like Pakistan can confront a climate reality that is already with us, and how they can lead the way in building climate resilience in an era where time is clearly running out. Again, I'm very honored to introduce our two distinguished panelists, who are the leaders in the disaster risk reduction and climate change adaptation sectors. Ms. Aisha Humera Chaudhry, she is a career civil servant of Pakistan Secretariat Group. She has senior leadership roles across ministries in the past, including Economic Affairs Division, Ministry of Food Security, Ministry of IT and Telecommunications, and now Ministry of Climate Change and Environmental Coordination. She has had also international experience serving as economic counselor at Pakistan's mission to the World Trade Organization in Geneva. She holds advanced degrees from various universities, including Harvard and Geneva and London School of Economics. Mr. Mohammed Idris Masood, also a senior Pakistani civil servant with experience in public policy, governance, and disaster risk management. Currently serving as member of DRR in NDMA, he is leading national DRR policy, anticipatory action, and provincial coordination. He has spearheaded major initiatives on multi-hazard risk assessment, disaster risk financing, climate change adaptation, and shift from reactive response to risk-informed resilience building. He also has various international and academic credentials, including diplomatic service in Vietnam, Laos, with a Master of Public Policy from University of Melbourne, also other degrees from University of Peshawar and National Schools of Public Policy, Lahore. Again, very excited to welcome these distinguished panelists as we start our conversation. My first question goes to Secretary Aisha. Pakistan has made significant progress on climate change, climate adaptation planning and implementation following the devastating floods of recent years, including the National Adaptation Plan of 2023, and more recently, the Flood Mitigation Plan for 2026 monsoon. Please share with us your assessment on the progress on advancing adaptation impact. Thank you very much. As the previous session speakers have set the tone, that there are certain global challenges which has brought Pakistan in a situation where climate crisis is converting into a debt crisis for Pakistan. So adaptation policy is there since 2023, and the efforts that Pakistan is making, I can talk about it. But these climate challenges have forced us to choose between son and a daughter. DRR and adaptation are from the same parents, but we are forced to choose between the two. Why? Because, one event takes away 8 to 10% of GDP of Pakistan. So we are constantly struggling between our growth and development and the recovery response that we have to make. So this is the challenge in which we are spending on adaptation.
and trying to implement the adaptation policy. It obviously covers the nexus of water and agriculture, which is very much linked with food security. It is also looking at sea level rise, forestry, impact on health and education, and very important part of the policy is inclusion. As the minister also talked about, including youth in our action and policies. So adaptation has more than 170 actions, and we are very actively engaged with all the provinces. Today, KP province is launching its district adaptation plan. So we are also working in rest of the provinces, and we are helping them to go down to the district level and prepare their adaptation plan, keeping in view the challenge that they face, whether it's hill torrent, flash flood, drought, or heat wave, or GLOF in GB. So these district adaptation plan is the main building block. It also includes the hazard mapping, which is important for DRR as well as for the adaptation. Under the flood resilience plan, which was approved in November by the Prime Minister, there are short, medium, and long-term interventions. And we regularly interact with the provinces and take stock of that. And Prime Minister is regularly taking stock. We at the ministry level engage with the provinces and the technical teams. So the institutional arrangements are in place. The level of seriousness at the top is commendable. I think Pakistan was among the top 30 countries who submitted their NDC in September, when Prime Minister was there in the climate conference. Even EU NDC was submitted later on. So a country which is committed to reduce carbon emission and protect this planet obviously require resource mobilization and climate finance. So DRR was indicated in our NDC. Pakistan needs $139 billion by 2035 to fulfill our DRR need. And there are ample studies by the World Bank to indicate the adaptation needs for Pakistan. And in COP30, we made a very strong case for the tripling of adaptation financing. But it's really sad to see that there was not even a complete consensus that what is the baseline from which we are talking about tripling of the adaptation fund. So we cannot control global temperature, but obviously we have to protect our people. So adaptation is an area where Pakistan is very seriously working. Our green tagging also indicates our commitment to adaptation and mitigation. Under the flood resilience plan, we are working on improving zoning, floodplain management, and not just big and small dams, but there is a lot of focus on small ponds. Because this is one area which is a low-hanging fruit, and with the engagement of communities, we can really ensure that the excess water is available to them when there is not enough water for their livelihood and for their livestock. And at the same time, we are also working with the provinces that we need to convert this excess water to drought-prone area. So the water channels have to be there to ensure that all the water is not going into the sea and raising sea level. So that's where a lot of investment is required in the critical water infrastructure. And that is one of the priorities in the PSDP as well as annual development plan. Similarly, having infrastructure which is resilient to these calamities. So the schools and hospitals have to be resilient. So green building codes are there. We have different initiatives under adaptation to create resilience, not just in infrastructure, but in communities, in food security, in livelihood. And the governance structure, as I told you, are very clear. We have
even under the Climate Change Act, there is a council which is headed by the Prime Minister, and it has representation from all the chief ministers. So that is the apex forum through which decision making is made. And wherever we need consensus, we did that in when we were working on the carbon credit guideline. So that was the forum where we took all the concepts and created consensus, and then the carbon market became operational. So that is, maybe we can talk about climate finance later. So yeah. Thank you, Secretary Aisha, for elaborating on some of the key examples on the progress made on advancing adaptation. And I took note of your point about having the same parents. I think that's really a key also to always remember. Member Mohammed Idris Masood, next question. Pakistan has strengthened its disaster risk reduction and management architecture over the years, including intergovernmental coordination in support of preparedness, early warning, response, and recovery. How does the current NDMA strategy align with medium and long-term climate change adaptation objectives? Thank you. You rightly pointed out that, and it was in fact after the unfortunate earthquake of 2005 that we brought in a comprehensive legal and institutional framework for disaster risk management. The core focus of all the architecture and the structure was to mitigate and reduce the impact of likely disasters, both geophysical and hydrometeorological or human-induced. So here I would like to, just inform you about our understanding. We don't see climate change adaptation and disaster risk reduction as very much different thing. In simple terms, the climate change adaptation is actually disaster risk reduction, mostly actually disaster risk reduction against hydrometeorological hazards. While the scope of disaster risk reduction could be a little bit broader because it would also include actions and mitigation measures that are aimed at reducing vulnerabilities and, against geophysical hazards like earthquakes and landslides or tsunamis or things like that. But mostly, they are interlinked, and that is why precisely we and the Ministry of Climate Change are working very closely with each other. The Ministry of Climate Change is part of our APEX institutional structure, which is National Disaster Management Commission, headed by the Prime Minister, where the Minister of Climate Change is sitting in there. We also have in the Council, even the National Disaster Management Authority is part of, important deliberations and decision making. We have a National Disaster Risk Reduction Strategy, 2025 to 2030. It's a living document. We also have a policy. We have National Disaster Management Plan that outlines specific interventions that are required to be undertaken and which are likely to have us more resilient as a nation and community. Now, our National Disaster Risk Reduction Strategy has specific goals and objectives. Among others, it includes strengthening of risk knowledge, and that is the basis of all decision making, adaptation, disaster risk reduction, preparedness. Now here we lack, and you were told by the Honorable Minister in the morning that a very good initiative with the Italian government of Green University that is likely to, we need to specifically know how climate change is likely to affect us, in what areas, to what extent, and whether there are opportunities also which we can tap, and what are the specific measures that are likely to reduce the impact of such hazard or impact. Now, we at the NDMA have been working since 2007 on different initiatives that included multi-hazard vulnerability risk assessments to understand where we are likely to be hit by specific hazards and how we can then take decisions of reducing or mitigating the impact of such hazards. This also lays
emphasis on the strategy lays emphasis on climate adaptive, risk sensitive, and inclusive development. So whatever has been done, that needs to be corrected, but whatever is to be done needs to be risk sensitive, climate adaptive, and inclusive. And in that, our prime importance is towards building resilient infrastructure and community through ecosystem-based approach. Now, there are other interventions also, like modernizing our preparedness and response. You may be knowing that now we are introducing drone technology. We don't need to have rescuers going into the middle of the river like in Swat. A drone can pick up 100 kg human body and can bring it to the safe area. So these interventions, and we didn't had any urban search and rescue team back in 2005. This Margala Tower was, the normal responders, the firefighters were doing that response. Now, alhamdulillah, we have over 9 urban search and rescue teams. We have one of our urban search and rescue teams is UN Insar. We have traveled a long way, but we need to catch up a lot. And and we also need to focus on sustainable investment and financing channels. And I'm happy to inform most of the audience that may not know that Pakistan is one of the few countries that has a specific dedicated national disaster risk management fund for investments in disasters. Our ministry is making a lot of efforts on attracting or getting the funding from GCF or other sources. While there are disappointments in there because the access issues are there, but we are continuously working. We understand that our standard disaster risk reduction measures, primarily funded through Pakistan public sector development program, development partners contributions, needs to take we need to implement that vigorously. But the shortest possible answer is anticipatory action against specific hazards, which we are working with the communities and with the responders, and even the WFP is one of the contributors to such efforts. So disaster risk reduction strategy and climate change adaptation, all these are very much linked, and contributing to both of them actually make us resilient. Thank you again for also highlighting that connection and the linkage between the two. We now have a bit more time, so maybe 3 minutes each, the final questions. Secretary Aisha, please, having listened to Member Idris, tell us about Pakistan's progress in terms of disaster risk reduction, particularly floods, and what are the ministry's priorities going forwards in terms of coordination, integration, adaptation, and financing for adaptation. For the livelihood protection, water channels are being created and community awareness is created. So we work hand in hand with PMD, which is the Met Department, and NDMA to ensure that these early warning systems are working effectively. So this is one area where we coordinate with the disaster related institution. But on the other hand, we also work on preempting these incidents. For example, these Gulf incidents can be preempted by having a good research of the highly dangerous Gulfs and then creating timely drains so that water is regularly released and the Gulf incident does not happen. So these are some of the adaptation related measures which need to be taken for a long period of time so that
in every Gulf season, we can at least minimize the Gulf incident. So for these type of events, kind of a preemptive work, again, we collaborate not just with NDMA, provincial disaster management authorities, WAPDA, which has a glaciology center, and we also work with Karakoram University. There is another one in Gilgit, another university. So, and the development partners. So the approach, whether it's early warning or disaster recovery and response, or creating long-term resilience against those challenges in the form of adaptation, I think the key is coordination, having correct policy in place, and then taking all the stakeholders together, and always ensure that there is an R&D component, because this challenge is such that we must keep on looking at the latest research. So we have a center called Global Climate Impact Study Center. Through them, we have created a lot of collaboration with not just national institutions but international institutions as well. So we are also preparing short, medium, and long-term climate impact research. And just also to highlight some, GLOF was just one project. World Food Program is doing another project, which is water recharge. Again, we are collaborating number of provincial institutions, all the irrigation departments who are at the front line when they are Federal Flood Commission, the organization which are at the front line when these catastrophes come. Similarly, SAFER is another adaptation project where we are very closely working with UNICEF and an EC Mode, which is a regional organization, to enhance adaptation capabilities of the community. Thank you for really enriching us with those real examples, including on GLOF. And very much, I heard you on the research and development. I think Senator Sherry Rahman had also talked about the importance of data, but great to hear that there's also investment in the research and development area. Member Mohammed Idris, final question, 3 minutes, please. Follow-up question-wise, where do you see the strongest synergy, now that you've been hearing and also talking about synergies, where is the strongest synergies emerging to achieve climate resilience for the most vulnerable communities? Thank you. You know, there is a lot of scope and room for further integrating and synergizing the efforts. We have now, alhamdulillah, very strong institutional structure in the form of National Disaster Management Authority at federal level. Provincial disaster management authorities are fairly strong in all the provinces. They were not existing mostly during 2010 floods. Besides, NDMA was there, but except Khyber Pakhtunkhwa, the others were not existing in 2010. We have district disaster management authorities, but here is a challenge that we face. And the district disaster management authorities, though, are a sort of committees, or the district administration leads that, but personally I would like to see a dedicated department assisting the deputy commissioner or the district disaster management authority in championing disaster risk reduction and adaptation measures at ground at the district level. That would be a key for both the disaster risk management and climate adaptation at local level. They need to see which areas at the community level, which areas are vulnerable to what kind of hazards and what needs to be protected. For example, why should they build in 100-year, a 10-year return period flood area, any school or hospital or near in the fault line areas, or even if they build that has to be compliant to the building code, that has to be resilient, and such measures needs to be taken. They need to have a good sewerage and stormwater drain system. Just imagine that in 2020 we had a situation in Karachi, and only 300 millimeter rainfall in few hours created havoc. But with our emergency nature of
development work that NDMA piloted, like we revamped 3 nallas, Korangi, Gujar and Mahmoodabad, and there are 48 other nallas or stormwater drains in Karachi. Only with these 3, we had 2 times in the past years similar kind of rainfall, but it withstood that, that kind of rainfall, and we didn't see much of problem like in 2010. So just imagine if the district disaster management authorities are capable of clearing their stormwater drains and all those things. Another thing, for example, school safety framework. We among Inclusive Pakistan, NDMA is one of the few in the region, maybe that has a dedicated cells of gender and community cells. We launched a massive school safety framework, and I see my former chairman NDMA, General Asghar Nawaz, who was the architect of this system, and now most of the schools have those mechanisms that know what to do in such calamity area time. In 2005, we lost 18,000 school children and teachers in schools. If those schools were resilient, they knew everything, we would have saved much of that human loss that we had. So institutional structure, if we have at district disaster management authority level, and we prepare our communities under communities-based disaster risk management initiatives that NDMA can only, pilot in a few areas. The main implementation level has to be the humanitarian community, the local organizations, the district disaster management authorities, and we can facilitate that. That would, be a decisive factor if we have communities engaged. Most of the communities won't even know what climate change adaptation is or what climate change phenomena is. So we need to make them aware. We at the National Disaster Management Authority have a strong risk communication system now in place. We have National Institute of Disaster Management Authority, National Institute of Disaster Management Center of Excellence that is trying to create that critical human resource for taking on such. Thank you. Very rich. And I understand the time is up. So really, I just wanted to thank both of our key panelists. We've heard a lot of great synergies happening already. We couldn't touch on all the areas, but I think elements of policy coherence, governance, implementation, financing, collaboration did come up. So I really commend, I think, all the great work that is being done. I think progress is there. I think I also do want to come back to the earlier remark by one, that Pakistan shouldn't be seen as a victim of climate change, but I think we have elements of great success stories and solutions emerging from Pakistan, so that Pakistan can become more leaders in confronting and addressing and managing climate change from local to global. With that, I really thank our 2 panelists, and I look forward to also engaging with them and others as the sessions go by. Thank you so much. नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके। Introducing the new line of Pell refrigerators, a new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. विटामिन ई के साथ ना बाल गिरेंगे ना आंसू। सनसिल्क वर्क्स फ्रॉम गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। इंसान हर नए काम से डरता है,
पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैस कैश ऐप खोलो, प्लान सिलेक्ट करो, हो गया जैस कैश इंश्योरेंस। सोचो, समझो, कर लो। Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. विटामिन ई के साथ ना बाल गिरेंगे ना आंसू। सनसिल्क वर्क्स फ्रॉम गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। Hear this. Here the people are sitting here, they are the friends of environment, and let me congratulate Dawn Media Group and the Breathe Pakistan team for organizing this second Breathe Pakistan International Climate Change Conference. This is a vital platform to demonstrate our collective commitment towards a greener, a caring and a responsible Pakistan, inshallah. This also shows the commitment of the organizers with respect to having a smooth transition of the country and having an environment-friendly ecosystem in the country. Ladies and gentlemen, as we all know, that Pakistan is among the world's most climate vulnerable countries with very limited financial resources to cope with this existential challenge. As declared in 2025 Breathe Pakistan resolution, climate change in Pakistan is not an isolated environmental issue. It is a cross-cutting national emergency that cuts across every sector of our economy and society. The recurring floods, droughts, and extreme weather conditions are having very strong and huge implications on our agriculture sector, on our water resources and infrastructure. Heat waves are intensifying, with temperatures exceeding 50% in some regions and cities. Is no longer a rare event, it becoming an emerging norm. The 2022 floods displaced over 33 million people and caused losses of, these are direct losses, of more than $15 billion. And if you include the indirect losses, they were exceeding $28 billion. The direct losses were more than 4% of our GDP. Even the losses in 2025, though they remained relatively contained, but they also displaced millions of people and caused huge disturbance and cost and miseries to the citizenry. The climate risk is projected to cause annual losses of 18 to 20% of GDP by 2050 if we don't build our resilience and our capacity to cope with these challenges. But given these challenges, you could see that still, despite all these efforts and initiatives by the forums like this one, still there is a lack of concern towards this existential risk. Still we can see the vehicles running on the road emitting very large amount of smoke, black smoke that is being emitted. And I can see on the roads of Karachi, the buses of 50 years old, they are still running on the roads. The way we are using our water resources,
despite being a severely water-stressed country, still our culture, our habits are not reflecting that we are aware and we are cognizant of that risk. So that culture will have to be inculcated, and that would require collective and collaborative efforts, numerous such forums, the interventions at school levels, the interventions at education levels, the interventions at various organizational levels, so that we would embed that culture that we must be responsible, we must be caring towards our environment. Otherwise, things are getting difficult and difficult with each passing day. So given this gigantic and existential risk, Pakistan demonstrating that we are a responsible country, despite the fact that we are contributing less than 1% in the GHG emissions. But still we committed that by 2035, we would be reducing our GHG emissions by 50%. But that is a very ambitious plan. And that ambitious plan requires a financing to the tune of more than $550 million, billion dollars, my apologies. So this is a huge amount. And that, what we can see, that still the overall plan with respect to financing with this very large amount of funding that is needed is still largely missing. There are efforts going on. We have been collaborating with various multinational partners and the donor agencies. But at the same time, there needs to be a plan whereby we could see that what amount of resources we would be able to generate domestically through our domestic markets, and what amount of resources we would be able to generate through our international collaborations and the partners. We have been having interactions with World Bank, with ADB, with AIAB, with Islamic Development Bank. There are efforts going on, but still a consultative plan developed with the consultation of all the relevant stakeholders, including the banks and financial institutions, and including our partners, that needs to be in place. So now, what the central bank has been doing to ensure that the banks and financial institutions have that realization and understanding of this huge risk. This risk is not going to impact their own balance sheets, but the overall business viability and business continuity of their respective clientele. So, having the cognizance of that huge risk, we have been taking various initiatives since last about 10 years. Our journey in this respect started in 2017 when we issued the green banking guidelines, and the objective was that the banks should be prepared to have a smooth transition towards a green and environmental friendly financing and investment policies and practices, as well as operations. And the banks should be able to embed the climate risk in their overall risk inventory. Then in 2022, we came up with another initiative that we developed in collaboration with IFC, and the initiative was that we issued the environmental and social risk management framework. Here again, the objective was to provide that toolkit and structured approach to the banks and financial institutions to assess, measure, and mitigate the climate change risk. The most important initiative that we took, we started in 2023 and we completed that initiative in 2025, is the development of the green taxonomy. And that is, to me, one of the most critical steps and initiative that we took in collaboration with Ministry of Climate Change. We partnered with Ministry of Climate Change and came up
with Pakistan Green Taxonomy. With the help of World Bank, we have that taxonomy developed. And now that taxonomy provides the scientifically approved benchmarks and parameters and thresholds to identify that which project is green and which is yet to be green, maybe in transition towards green, and which project is red. So you have a clear benchmark available. There can no more be greenwashing. So that is the most critical step that we have taken, and we believe that it will provide that clarity to the banks, financial institutions, to the investors, as well as to the industry. And thereby it will enable us to mobilize the green financing and the green resources. Globally, there is a significant development with respect to the green bonds and green financing. In 2024, the overall green financing surpassed $2 trillion US. In our market, it is relatively at a very initial stages. We have a few green bonds, but what we believe that with the availability of this Pakistan Green Taxonomy, we will be able to mobilize more and more green resources to finance our green projects. And similarly, the industry and the business community, they would be able to have that plan. And first, the assessment that where do we stand, and then a plan that how can we move towards the green operations, because there are more and more demands on the part of particularly international buyers that they would like their suppliers to have green operations and the green activities. So that is something that would provide that basis to the business community and the industry to move towards the greener operations and the greener activities. And the next step with respect to this green taxonomy, we are within this month, I think by 15th of this month, we are kickstarting the pilot to have the adoption and implementation of this strategy. In this pilot, we have selected 6 banks, 2 large banks, 2 mid-sized banks, 1 Islamic bank, and 1 specialized bank, which is dealing primarily in the agriculture sector. And in the pilot, the consultants who have developed this taxonomy, they will be working with these banks and their clients so that an assessment can be made with respect to the existing portfolio of the banks and financial institutions with respect to the benchmarks available in the green taxonomy. And as this is sort of a first step in the pilot, we would also be identifying the data gaps, because there will be data gaps. To have an objective assessment, you must have the relevant data, requisite data available with you to make an assessment with respect to the overall quality of the project as far as green is concerned. So those data gaps would also be identified in this in this phase, and then the data templates will be developed. We believe that in 6 months' time, inshallah, we will be able to complete that pilot in these 6 banks and their clientele, and that will, because it is dealing, the taxonomy is dealing with all the relevant sector, including manufacturing and agriculture and the transport and the energy, blah, blah, blah. So those prototypes will be available. And with these prototypes, when these are available, now it will be made available to all the banks and financial institutions so that they should be able to make an assessment of their respective portfolio and educate and guide and facilitate their respective clients in moving and transitioning towards the greener operations. So that is something that we believe that that would create that, at least at the domestic level, we would be able to
to have that capacity and the urge so that we could mobilize the greener resources. As the 50% reductions, out of the 50% reduction in GHG emissions that we have committed in the NDCs, 17% are unconditional, that we will be generating our internal resources, but 33% are contingent upon the grants and the concessional funding and the resources that we are expecting from our international partners and donor agencies. So these collaborations with international partners and donor agencies would also be critical so that we could have that requisite financing available. In the end, let me congratulate again Dawn Media Group and the Breathe Pakistan team for this beautiful initiative. Let me say this: you are the leader in that respect. I believe that, as I was saying earlier, because still people at large are not having that awareness and that realization and that understanding with respect to the severity of that risk. Media has a very, very critical role to play, and I highly appreciate the Dawn Media Group for having this initiative to create that awareness. Not only the awareness, but also the advocacy towards moving that environment and that policies. Thank you very much. Thank you, Governor Saab. It's great to have a data man sitting at the helm of affairs at the State Bank. Now, I'm going to request someone who's spoken earlier today, Mr. Adil Ahmed. Mr. Adil Ahmed to come on stage and give us his thoughts on where climate finance is going for Pakistan. Please, sir. Assalamu alaikum and good morning. I will try to speak in English, but also use a little bit of Urdu. I'm inspired by some of our comments that our Senator Musaddiq Malik provided in Urdu, so that's why. Your Excellencies, distinguished guests, again, the Dawn Media, it is an absolute pleasure and an honor to be among yourselves. I will not take too much of time, but just few messages from the perspective of World Bank. First, let me recognize the initiatives of the government of Pakistan, the initiatives of the State Bank of Pakistan in developing not just the green taxonomy, but setting an integrated framework for how financing can be mobilized for green transition. So I think it is a huge step, and not many countries have done it, so congratulations. If I may ask the team if you could help me move the slides, just few messages, just so that we understand. Sometimes there's a lot of misunderstanding around climate finance and what it is. So just first to look at the high level numbers. These are global numbers, and of course we will come to Pakistan as well. Globally, we know that just on climate change, basic low carbon transition and resilience development, it's $6.3 trillion that are needed. Now, with that amount of financing, and given how countries are facing fiscal deficit, not just the developing countries, but countries that are supposed to provide this financing or fill these gaps, they're all having fiscal and economic challenge. So how do we approach this gap? I think that is the question that we have. Next, please. Now, just to demonstrate, a lot of people have slight misunderstandings about what all is in climate finance. So I tried to elaborate that a little bit more clearly today. On the left-hand side box, you will see that these are the concessional climate resources, whether they are dedicated climate finance, grant, or financing from development financing institutions that have climate co-benefits. But that's just one of the blocks. And I want you to broaden your focus beyond those resources, because those are simply not enough to meet the needs of the countries such as Pakistan for climate transition. So
Now let's look at the blue box. If I could go back. There are huge financial resources from private sector and development funds of countries. Because climate challenge, while it is global, it is an issue for future generations and the children of this country. Therefore, it is a collective responsibility. Yes, we can advocate, we can try to mobilize more financing from international resources. We should still try to bridge that huge financing gap with any and all resources that we have at our disposal and bring in investment from private sector. So that blue box is where I think we could use to expand and leverage our own very scarce resources. At the bottom, which some of you may not be able to see from where you're sitting, there's also new innovative instruments where you can use revenues from carbon finance, not loans, but really the investments and international interest in buying carbon credits from countries like Pakistan. So if we are able to work on an ecosystem on how international standard carbon financing approaches can be adopted in Pakistan, many of you may be familiar with estimates, even the conservative estimates, annually you could mobilize up to $1 billion of financing, given how much a scale of development Pakistan is implementing these projects. So, but we need to work more on it. So, next slide, please. Let me show you how we are thinking about it. Now, another big number. I know these are very big numbers, but this is just to give you a sample or a demonstration. While we say $6.3 billion are required for climate, we know that there are more than $28 trillion that were invested last year in long-term infrastructure finance. So those resources are there in global economy or in the global financial system. How do we leverage those to really direct towards green economic development, but also building resilience in countries like Pakistan is what is our collective responsibility. How will this happen? Improved coordination at a national level, at a jurisdictional provincial level, and among different sectors, planning versus implementation, and then innovative solution. I think our Deputy Governor has presented the green taxonomy as a model to bring those innovative solutions together. Next, please. Few examples of how this is already being done. If you look at the left side, for instance, you can mobilize with millions of financing billions of large packages. So just if you look at two examples, South Africa, the World Bank and IFC has worked with the government of South Africa to do a package of about more than $8 billion for their energy transition, away from fossil fuels, away from coal. That has limited amount of financing from World Bank and IFC, but private sector investment is willing to come forward and complete that package. Similarly, a few years ago, many of you have attended COP27 in Egypt. You would have seen that Egypt launched a platform, a Nawafi platform, for water energy nexus platform, where they invited investment from international sources, of course concessional, but then also public and private sector investment, so that they can work together to mobilize more than $10 billion of finance. That's just one example on how large sums of financing are being led. Of course, capital markets, and I won't speak too much more about it. Green bonds are being issued in many countries, including in Pakistan. Congratulations on issuing first local currency denominated green bond last year as well, with the participation of banks, commercial banks in Pakistan. Also, again, I made a mention of new revenue through carbon finance. You can. सालों तक नबाताती हयात नहीं होगी, कई सालों तक पैदा होने वाले बच्चे मफलूज होंगे, कई सालों तक सूरज की रोशनी नहीं होगी, कई सालों तक 100 फुट ज़ेरे जमीन पानी ताबकारी के असरात का शिकार होगा और नागासाकी हिरोशिमा से मिलियंस टाइम्स ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। खुदा न खास्ता अगर ये जंग का मसला बना तो बाज आ जाओ, मत करो ये
हिंदुस्तानी एग्रेशन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पाकिस्तानी हुकूमत, जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनकी पूरी काबीना सफारती महाज पर सरगर्म हुई, राब्ते हुए हिंदुस्तान के मुवक्कफ के खिलाफ पाकिस्तान के मुवक्कफ को पजीराई मिली। चीन की तरफ से, तुर्की की तरफ से, इंग्लिस्तान की तरफ से, जीसीसी ममालिक की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, आप नाम लेते जाएं, गिनते जाएं, 70-72 ममालिक के सुफरा की हमारे वजीर खारजा जनाब वजीर आजम के साथ मुलाकातें हुई। हमारे मुल्क में कतर के वजीर, सऊदी अरब के वजीर, गर्जा नाम लेते जाएं, वो सब के सब यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस मौक़िफ़ की तायद की कि आप तो तीसरे फरीक को भी ये हक दे रहे हैं कि तहकीक कर लें, तफ्तीश कर लें। ये एग्रेशन, ये दरअंदाजी, मेरी सॉवरेनिटी को ब्रीच करना, सरहद पार से मेरे मुल्क में हमला करना, ये मेरी हुर्मत पर हमला है, पाकिस्तान की हुर्मत पर हमला है। और सफारतकारी के हमला करना, ये मेरी हुर्मत पर हमला है, पाकिस्तान की हुर्मत पर हमला है। और सफारतकारी के मैदान में अपना मौक़िफ़ तस्लीम कराने के बाद मैं थोड़ा सा, जिस दिन DDISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनाब मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि देखें भाई, ये हमला तो आपने कर दिया, अब ये जंग कैसी होगी ये फैसला पाकिस्तान करेगा। ये इतनी देर चलेगी। Thank you, Mr. Abbas, for really putting the climate finance landscape into perspective. Before we move on, I'd like to formally welcome the Honorable Minister for Finance, Senator Mohammad Aurangzeb, who's really made an extraordinary effort to be with us here today. Senator Saab, I'd request you to come over and please deliver your keynote address. I'd request you to come over and please deliver your keynote address. Bismillahirrahmanirrahim. All the distinguished delegates and participants here, Assalamu alaikum and a very good morning. I would like to start by complimenting the organizers for staying the course year after year in terms of keeping the focus on what is indeed an existential issue for Pakistan, which is climate and climate change. I won't dwell on that because Dr. Musaddiq Malik was here earlier, so I'm sure he has dwelt on the what and the why and what we need to do. I was in Washington 3 weeks back, and on the back of the IMF World Bank meeting, we had about, because 100 से ज़्यादा finance ministers होंगे from all over the world in terms of the coalition of finance ministers for climate action. And the operating word is action. जो अभी पहले भी बात की जा रही थी, from Baku to Belém to Turkey this year in terms of the COP. So what and why, तो सबको मालूम है. We are living this day in and day out here in Pakistan. And for us, it's a reality. Equally, it's also quite clear, and that's why the finance ministers are coming together, that we have to work very closely with our counterparts, with the ministers of climate change, the ministers of planning, and really take hold of the government approach. Because जब तक हम इसको मेन स्ट्रीम नहीं करें, ये एकेडमिक डिस्कशन ही रहेगी. If you don't bring it down into your budgets, if you don't bring it down in terms of your resource allocation, then
as I said, it will remain a debating club. And as Pakistan, we cannot afford to be that at this point in time. मुझे नहीं पता कि डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने क्या बातें की हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन आई एम श्योर ही मस्ट हैव डेल्ट विद a lot of things in terms of the enabling principles and the pillars which are already in place. NDCs have been there for some time. We are now moving into NDC 3.0, climate prosperity plan with the help of the V20. I think that's there. State Bank की green taxonomy की बात आई. From my perspective, there आए, दुरुस्त आए. I think this should have happened some time back. But in any case, we are here with the taxonomy and the rollout. And then NDMA. I think in that case, we are now in a very, very good place. If some of you have been to NDMA, बड़ी अच्छी बात है. अगर आप वहाँ नहीं तशरीफ लेकर गए, I would strongly suggest कि जनरल साहब से बात करके आप NDMA सेंटर में ज़रूर जाएं. Because now the kind of AI-led early warning systems which are now in place. And if you've been in that center, you'll be absolutely mesmerized and surprised in terms of the information that we have. It's month by month rendition in terms of a possibility of a glove incident, of a heat wave situation, in terms of any flood indication. So from a preventive perspective, we now have a very good place in terms of our preparatory discussion. क्योंकि अब ये नहीं हम कह सकते कि जी ये अचानक हो गया, ये कल हो गया, ये परसों होने वाला है. We now have very scientific data available to us in terms of how and what we need to do around the policy measures and very specific measures that we need to take in terms of the of looking at these events. जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ताल्लुक है, और अगेन जैसे मैंने जिक्र किया कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प सपोर्ट this whole effort. The way I look at it is that actually at three levels. The first one is कि जो fiscal buffers को create करने की जरूरत होती, and it goes back into macroeconomic stability, and it's यहाँ बड़ी debate होती है कि what's the big deal about macro stability. The big deal about macro stability is that it's basic hygiene in any country, whether it's foreign investors, local investors, and also when it comes to exogenous shocks. और ये again academic discussion नहीं है. 22 का flood आया, was a devastating flood. एक दरिया and primarily one province, और एक और province उसमें affect हुआ. And we went running to Geneva to get the pledges. We went for an international appeal right away. और उसमें से कुछ पैसा आया, कुछ नहीं लगा, because bulk of it was project financing, these were not grants. 25, पिछले साल, October में, we again had to realize the consequences of the flood that happened over the summer. And this time around, the intensity was much larger, as you all know. We were all here. This time with 3 rivers and almost the entire Pakistan, starting with GB, KP, into Punjab, into Sindh. But this time around, although there were a lot of voices coming in, कि अभी जाएं, अभी international appeal करें. And the Prime Minister and the Cabinet decided, no, we have the resources available with us. And that's what we did in terms of the rescue and relief effort. किसी की हमें मदद की जरूरत नहीं थी, किसी की हमें आगे जाके बात करने की जरूरत की महसूस नहीं हुई, because we had the fiscal buffer and the fiscal space available. And then of course on to rehabilitation and reconstruction. और वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि of course a lot of things that we fought at that point in time in terms of worst case scenario, I think agriculture has
jumped back in because we were able to catch the next cycle, the next crop cycle, or let's see how it goes. But this is very, very important. Okay, from finance and from the government side, we continue to have these fiscal buffers available or back to indigenous resourcing, because that I think is very important. अब जो बाकी क्लाइमेट फाइनेंस की रिसोर्सिंग है उस पर भी बात हुई है, मल्टीलैटरल सपोर्ट की, वेदर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक. We are very grateful to Ajay and his team for providing the country partnership framework, which is a 10-year partnership framework. और इसमें 3 pillars हैं. 2 of those are dealing with existential issues for Pakistan. One is climate, the other is population, and the third one is sort of the fiscal side of things. तो अगर हम climate को ही देखें, तो अगर $2 बिलियन का उन्होंने कमिटमेंट दी है हर साल, तो तकरीबन 600 से 700 मिलियन डॉलर्स हमें अवेलेबल हैं इन क्लाइमेट फाइनेंस. इसी तरह जो IMF की है उनके साथ जो डिस्कशंस हैं उसमें one is the EFF part of it and the other is the climate resiliency. तो अल्लाह करे इंशाल्लाह बोर्ड फ्राइडे को है और ये अप्रूव हो जाए, तो वहाँ भी हमें रेजिलियंसी के क्लाइमेट रेजिलियंसी पे वी एक्सपेक्ट another $200 million coming in. इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें ये सपोर्ट दे रहा है. लोकल इशुएंस ऑफ ग्रीन सुकूक्स की बात हुई है. We are working very hard at this point in time to go for the inaugural Panda bond, which is going to be roughly $250 million equivalent of RMB. And during this month, we expect to print that. The important thing is the green bond. And more, we are looking at, as the government of Pakistan, to look at diversifying sources around sort of the green financing. उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये some of the institutional stuff which is there, which is the Green Climate Fund, या अभी शर्मल शेख की बात हुई, Loss and Damage Fund. The reality is कि अगर हम bureaucracy हैं, इनसे बड़ी bureaucracies कोई नहीं है. To get, first of all, getting accredited, and then at least trying to get some money out of that. So we should not rely. I mean, I think it's an and discussion. I think it's an important discussion that we continue to engage with them, but this is not how we're going to move forward in terms of climate finance. The other thing which is important is कि financing की बात होती है और billions of dollars के gap की बात होती है, trillions of dollars की gap की बात होती है. One needs to be pragmatic and practical about it. Let's first use the funds which are available now and put them to good and effective use. जब ये बिलियन, $1.5 बिलियन, $2 बिलियन आपके खर्च हो जाएंगे तो फिर हम जरूर जाएं कि जी $365 बिलियन का गैप है, कि $400 बिलियन का गैप है या $200 बिलियन का गैप है. ये सारी एकेडमिक डिस्कशन इस वक्त जो हैं उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल कीजिए. एंड दैट्स वेयर द बॉल इज इन आवर कोर्ट in coming up with investable, bankable projects. And that is very important. I think CPP जो ये V20 की मदद से ये climate prosperity plan आया है, I think it's a very good start in terms of looking at the pipeline, looking at the projects which can help us in terms of adaptation as we go forward. Also, I think we all met, those of us who were engaged in this with Dr. Majun. Last week he was here from Beijing, and he has played a very, very important role in China's transition into green finance. So जो China को कहते हैं from zero to hero, from 0% they went into 40% of the global market in terms of green bond issuances. So we are very grateful. Dr. Majun is a great friend of Pakistan, and he has volunteered to help us in terms of Green Accelerator, which is essentially looking at projects जिसमें आगे green investment जो है वो आ सके. तो ये दूसरी बात है जहां हम को practically हम Ministry of Finance की हम help और support कर सकते हैं. And the third one is the current conflict. And the current conflict
2020 hindsight is a wonderful thing. And as you know, our leadership is at it, is not giving up in terms of the mediation efforts. And we saw some positive development overnight. और हम सब दुआ गो हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है जल्द से जल्द इस पे खत्म हो. But there are also lessons learned, and a few lessons which we need to think through as we move forward as a country, as a nation. We cannot just focus on commercial reserves. We have to move towards having a strategic reserve. And the second thing is कि जो हमारी journey है towards renewables, that has absolutely got to be accelerated. And reduction in terms of our reliance on fossil fuels as we go forward. So I think उस journey में, whether this is solar, whether it's wind, whether it's hydro, in terms of in conjunction with the Economic Affairs Division and ourselves, to find the right resourcing to get these projects accelerated so that we can get to a certain stage in terms of renewables, I think is going to be very critical. और दूसरा ये है कि यहाँ I see the chairman of Pakistan Bank Association is sitting here, Salimullah Saab is here, but also in terms of energy efficiency, in terms of whatever we are doing, whether it's the fan replacement program or the focus on the EVs as we go forward. इसमें जो Ministry of Finance ने जो subsidies देनी है, जो first loss guarantees देनी है, we are very committed to get this journey accelerated, inshallah, as we go forward. So, from my perspective, in a very pragmatic and practical way, first of all, continue to build fiscal buffers, because these exogenous shocks are here to stay, whether it's on the climate side or unfortunately many other things. The other thing is climate finance. Even before we go to the fancier things in terms of carbon credits and debt for debt swaps and all of that, there's plenty to do in whether it's the multilateral support or our own resourcing as we go forward. The focus has to be more and more and more indigenous. और आज सुबह भी मैं एक कॉन्फ्रेंस पे था जहां हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, ओवर रिलायंस ऑन बैंक्स. कैपिटल मार्केट्स में बहुत गुंजाइश मौजूद है where we can actually come and gather these resources and move them towards green investment and green finance. So I think there मैंने चेयरमैन SCCP को भी आज सुबह कहा है और आज जो सारी बात हुई है कि we are going to put more and more focus on capital markets, on debt capital markets as we move forward in terms of green finance. And the last thing is anything that we can do and we are doing in terms of accelerating our journey towards renewables. Ladies and gentlemen, it's been an absolute pleasure. Thank you again and God bless. Thank you, sir. An absolute pleasure to hear how Dawn मीडिया के ज़ेर एहतमाम ब्रीथ पाकिस्तान बैनुल अक़वामी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे. और एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर. हेडलाइंस के लिए ताउन किया है पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सॉल्यूशन. पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान. प्रोजेक्ट फ्रीडम मुअत्तल कर दिया. ईरान के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने का ऐलान. ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त होने का दावा कर दिया. कहा कि देखना होगा मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं. ईरानी सदर ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो धमकियां देना बंद कर दे. वाज़े किया कि जबर के सामने ईरानी सर नहीं झुकाएंगे. इराकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मुतालबात मानना नामुमकिन करार दे दिए. उनका कहना था कि अमरीका चाहता है ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और उसकी यकतरफा शराइत मान ले.
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी और इसराइल के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी करार दे दी। कहा कि बराह रास्त मुज़ाकरात कशीदगी कम करने का मौसर रास्ता है। They're isolated, they're starving, they're vulnerable, and at least 10 sailors have already died as a result of the civilian sailors. So already many nations privately and some publicly have asked the United States to help free their ships and to restore freedom of navigation in the Straits of Hormuz and this critical artery of global trade. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अपनाए हुर्मुज़ में तसादुम के दौरान 10 आम शहरी हलाक होने का दावा। अमरीकी फ़ौज के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल कर लिया गया। ईरान को अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी गुज़रगाह है, कोई भी मुल्क उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का अपना हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। Described that ultimately with the ceasefire the clock stops. If it were to restart, that would be the president's decision. That option is always there, and Iran knows that, and that's why their choices in Project Freedom are important. अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्जिट ने अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सूरत में ईरान को सख्त नताइज की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता। ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे और ना ईरानी पानियों में। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दूसरे रोज़ भी मिसाइल और ड्रोन्स के हमले का दावा कर दिया। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का एक्स पैगाम। यूएई ने ईरान को ज़ाहिर अमन के लिए ख़तरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की ईरानी हमले की मज़म्मत यूएई के मौक़िफ़ की तौसीक़ करती है। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफ़ा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक यूएई को अमरीकियों और सहूनियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अमरीकियों और सहूनियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। पोप लियो ने सदर ट्रंप की तनकीद एक बार फिर मुस्तरद कर दी। अमन की तबलीग चर्च का मिशन करार दे दिया। वाज़ेह किया कि तनकीद की परवाह नहीं। चर्च ने हमेशा एटमी हथियारों के खिलाफ बात की। हथियार उठाने के बजाय मुज़ाकरात करना बेहतर होता है। जंग के जरिए हथियार साजी की फैक्ट्रियां अरबों डॉलर कमा रही हैं। पैसा जंग पर खर्च करने के बजाय इंसानों की मदद और दुनिया से भूख के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल पर आ गई। डॉन मीडिया के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में ब्रीथ पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस। CEO डॉन मीडिया ग्रुप नाज आफरीन सहगल लाखानी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। सेनेटर शहरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान को तेजी से बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ने बेपनाह नुकसान उठाया। वाज़ेह किया कि माहौलियाती तब्दीली के असरात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ 1% कार्बन पैदा करता है। हक हमारे लिए
सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है कि जो कुछ आपने उस वक्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिसकैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तरदीद सबूत करार दे दिया। वाज़े किया कि मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़े और दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। मार्का हक से वाज़े हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जुई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वाज़े किया है कि मार्का हक एक दिन मनाने की बात नहीं है। भारत ने पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। सवाल उठाया कि भारत इंसाफ के उसूल के मुताबिक पहलगाम के वाक़े को बैनुल अक़वामी अदालत क्यों नहीं ले गया। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी की अलामत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुश्मन को शिकस्त फाश देने की सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारत की मगरूर सियासी सोच के लिए वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहद, मजबूत और हर लिहाज से दिफा के लिए तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। फील्ड मार्शल का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके माविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज कार्रवाई से महफूज बनाने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान का शहरियों को निशाना बनाने का गुमराहकुन बयानिया मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। चीनी सफ़ीर की मार्का हक की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। की हर चाल, हर फ़रेब हमारे पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। हम जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारा लहू, हमारी जान, वतन के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्का हक का एक साल मुकम्मल। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर मुश्किल और हर तूफान में मुल्क के साथ खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैगाम। भारत की इबरतनाक शिकस्त का एक साल मुकम्मल। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। तो याद रखें के उन्वान से जारी प्रोमो में मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तकारीब का सिलसिला जारी। पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज पिशावर के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। असातिज़ा और तलबा ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड गूंज उठा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक हुकूमत का फोकस करंट अकाउंट पर है। माशी तरक्की के लिए निजी शोबे की शमूलियत अव्वलीन तरजीह करार दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इलाकाई कशीदगी अहम सबक है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब फौरी मुंतकली नागुज़ीर हो गई। वाज़ेह किया कि मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशा बीबी तक जाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अदालत के सामने पेश नहीं हुए। मंगल को दोबारा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल तलब। बुशा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों के हवाले से तफसीलात भी तलब कर लीं। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो गया। 3000 से ज़ायद मराकिज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। पाकिस्तान का मजीद LNG के लिए स्पॉट खरीदारी का फैसला। आलमी कंपनियों से 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली गईं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 7 मई तक बोलियां तलब कर लीं। उसी दिन बोलियां खोली जाएंगी। पहले कार्गो की सप्लाई 12 से 14 मई तक रखी गई है। दूसरे LNG कार्गो की सप्लाई 24 से 26 मई के लिए होगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सारिफीन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर 19 मई को समाअत होगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। लाश और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में पुलिस की फायरिंग से कार सवार नौजवान की हलाकत। केस में 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। महकमा मौसमियात की आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में गर्मी की शदीद लहर। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म रहने। पंजाब में गर्म मौसम के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। सिंध में 11 मई तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दादू, जैकाबाद, लाड़काना और सखर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डिंट्रॉन की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तानी आर्मी कैडेट सरदार अरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। ISPR के मुताबिक कामयाबी पाक फौज के जूनियर क़यादत के आला पेशेवराना मयार, अज़्म और बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर है।
रूस के यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमलों में 25 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। कई मकामात पर आग भड़क उठी, मुतादिद गाड़ियां तबाह। रूस ने विक्ट्री डे तकरीबात के दौरान 8 से 9 मई तक जंगबंदी का ऐलान कर रखा है। न्यूयॉर्क में मुजाहरे के दौरान फ़लस्तीन और इसराइल के हामियों के दरमियान झड़पें हो गईं। मुजाहिरीन ने पुलिस की लगाई गई रुकावटें तोड़ दी। पुलिस ने हालात को काबू कर लिया। कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फिटनेस टेस्ट फील्ड डे तकरीब के दौरान बच्चों को अपना मखसूस डांस का स्टेप सिखाया। अमरीकी सदर की बच्चों के साथ डांस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और चीन के शहर शियानिंग में रंगारंग नाइट शो, ड्रोन से आसमान जगमगा उठा। रिवायती फूलों से सजे अफराद और लालटेन उठाए गार्ड्स ने झील के किनारे परेड की। फनकारों ने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। That's the shot. Flawless. फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं। न्यू लक्स, जिससे मिले टैंजरीन की फ्रेशनेस और सीरम जैसा ग्लो, तो मैं करूं कुछ नया। वेट, लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर शॉट्स। मगर किसके लिए? वी गॉट द शॉट। मेरे लिए। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन, ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, डॉन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सैयद रज़ी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ अहम खबर के साथ। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम फौरी तौर पर रोक दिया। ये भी दावा किया कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा है कि हम मुसलमान अल्लाह के सामने सर झुका चुके, अब कोई और हमें नहीं झुका सकता। अमरीकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया, ताहम ईरान के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की गई थी। उनका कहना था कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई। अब देखना होगा कि आया मुआहदा हतमी शक्ल देकर इस पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में अब तक 10 मलाह हलाक हो चुके हैं। बहुत से ममालिक ने अपने जहाज निकालने के लिए अमरीका से दरख्वास्त की है। वाज़े किया प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई ऑपरेशन है, अमरीका पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के साबिक सरबरा और ईरान की मसलहत तशखीसी कौंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में अमरीकी सदर, वजीर दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमरीकी सदर, वजीर जंग और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ में एक सिफ्त मुश्तरका है। ये सब अपनी खाम ख्यालियों को कामयाबियों के तौर पर पेश करते हैं।
दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें नहीं झुका सकता। इराकी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद कर दे। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफी और लाकानूनियत है, ये सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में एक अहम सिफारती मुलाकात का आगाज़ हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग जी से मुलाकात की। बीजिंग में होने वाली मुलाकात के दौरान चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक फ़ैसलाकुन मोड़ पर है और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ही कशीदगी कम करने का मौसर रास्ता है। मुलाकात में चीन ने खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया और सिफारती हल पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने चीन के मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि बीजिंग का मजबूत मौक़िफ़ ख़ास तौर पर काबिल क़द्र है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़े कशम जजीरे पर धमाके और किसी भी किस्म के नुकसान की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा हर्मुज़गान के मकामी हुक्काम का कहना है कि जजीरे पर सुनी जाने वाली ज़ोरदार आवाज़ें दरअसल दिफाई निज़ाम की जानिब से ड्रोन्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का नतीजा थीं, जो छोटे और जासूसी करने वाले ड्रोन्स से मुकाबला कर रहा था। हुक्काम ने कशम जजीरे पर धमाके और किसी किस्म के नुकसान की तरदीद कर दी। फ्रांसीसी शिपिंग और लॉजिस्टिक कंपनी CMACGM ने अपने जहाज़ सैन एंटोनियो पर गुज़िश्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए हमले की तस्दीक कर दी। कंपनी के मुताबिक इस हमले के नतीजे में जहाज़ के कुछ अमले के अरकान ज़ख्मी हुए और जहाज़ को भी नुकसान पहुँचा। कंपनी की जानिब से मज़ीद मालूमात जारी की जाएंगी। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद अहम फैसला जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं बल्कि हम पल्ला अदालतें हैं। अदालत ने करार दिया कि आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। अदालत ने निशानदही की कि आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, लिहाजा आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल इख्तियार किया जाएगा और दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। चारसद्दा में मौलाना शेख इदरीस के हमले के दौरान हासिल CCTV तस्वीर में एक मुल्जिम की शनाख्त हो गई। चारसद्दा पुलिस और CTD CCTV से हासिल शुदा तस्वीर से मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। शनाख्त होने वाले दहशतगर्द की मज़ीद प्रोफाइल और डेटा पर काम जारी है। चारसद्दा में मौलाना शेख इदरीस के कत्ल केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। CCTV फुटेज से एक मुल्जिम की शनाख्त कर ली गई है, पुलिस की जानिब से बताया गया, जबकि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसद्दा में छापे भी मारे जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। खुशी है सुपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। Palmolive Naturals, new look, natural glow. चाय बस रेडी है, सही टाइम पे आई हो। बताओ आज इतनी परेशान क्यों हो? ऑफिस में आज बहुत बुरा दिन गुजरा। चल अब तुम रिलैक्स करो। मेरा दिन तो फिक्स हो गया, अब तुम्हारा दिन फिक्स कर। आ जाइए।
तुम हेल्प के लिए मुझे कॉल कर लेती ना। मुझे पता था तुम खुद ही आ जाओगी। बिन बोले समझ जाने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. New and improved Lifebuoy, विटामिन E और ग्लिसरीन के साथ स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि लाइफ के हर टेस्ट के लिए स्किन रहे रेडी। स्किन रेडी तो हम लाइफ रेडी। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैज कैश ऐप खोलो, प्लान सिलेक्ट करो, हो गया जैज कैश इंश्योरेंस। सोचो, समझो, कर लो। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। ले आए गैविस्कॉन, ये मैदे की इजाफी तेजाबियत को करे बेअसर और बनाए एक तह, ताकि आपको मिले बदहजमी का फौरी हल। गैविस्कॉन तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खुराक दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मालिश के मशवरे से इस्तेमाल करें। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज V5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। नया लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके। रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना, इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। न्यू डव इंटेंस रिपेयर, जिसमें है 8% बायो प्रोटीन फ्यूजन, पाकिस्तान में पहली बार बालों की गहराइयों तक जाए and reverses up to 3 years of damage with New Dove Intense Repair. Palmolive Naturals, new look, natural glow. न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। पेल इन्वर्टर, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। दो 2022 के सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि मौसमियाती तगय्युर के नुकसानात से बचाव के लिए अमली इकदामात ज़रूरी हैं। ग्रीन इकॉनमी की जानिब मुंतकिल होना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिमली डैम का दौरा, डैम के अतराफ इलाके का जायजा लिया, तफरीही सरगर्मियों के फरोग और डेवलपमेंट का प्लान तलब कर लिया।
और चारसद्दा में मौलाना शेख इदरीस के कत्ल की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। एक मुलजिम की शिनाख्त हो गई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। शेख इदरीस की गाड़ी के ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। Palmolive Naturals, new look, natural glow. हाय। हाय। जरा ध्यान से चलाओ, लिपस्टिक लगा रही हूँ। डोंट वरी, सर्विस टायर्स के फ्लेक्सिबल कारकस से मिले स्मूथ राइड बिना शॉक्स। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। सर्विस टायर्स, पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड। इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैज कैश ऐप खोलो, प्लान सेलेक्ट करो, हो गया जैज कैश इंश्योरेंस। सोचो, समझो, कर लो। बच्चों के हेल्थ की बात हो या पूरी फैमिली के टेस्ट की, एक माँ होने के नाते स्टैंड तो मुझे ही लेना पड़ता है। ऐसे में मेरी स्मार्ट चॉइस है डालडा स्टैंड अप पाउच, क्योंकि ये है इजी टू पोर और इजी टू स्टोर, जो बनाए अब कुकिंग और भी आसान। बेहतरीन टेस्ट के साथ डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू स्टोर, जहां ममता वहां डालडा। Introducing the new line of Pell refrigerators, a new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना, इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। Introducing the new line of Pell refrigerators, a new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. इन्वर्टर फैन, सिर्फ रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना, इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा।
एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। Palmolive Naturals, न्यू लुक, नेचुरल ग्लो। वेलकम बैक। मार्का हक पाकिस्तान की फैसलाकुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़े और दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। मार्का हक से वाज़े हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिमजोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसलाकुन होगा। कोई गलत अंदाजा या मिसकैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसलाकुन होगा। हम उस वक़्त भी तसादुम नहीं चाहते थे और आज भी हमारी ख्वाहिश यही है, ताहम कोई इबहाम ना रहे। पाकिस्तान सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि वो नताइज की सही सिमत का तयन भी करता है। हमारे खिलाफ की जाने वाली कोई भी मुहिम जुई महदूद नहीं रहेगी। ये बात हम तय करेंगे कि ये कैसे शुरू होगी, क्या रुख इख्तियार करेगी और किस अंजाम को पहुंचेगी। अगर किसी ने गलत फहमी की बिना पर यह समझा कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सकता है, उसे तनहा या दबाया जा सकता है, तो मार्का हक इस गलत तासर को हमेशा के लिए दफन कर चुका है। आज हमारी जवाबी सलाहियत बर्री, बहरी और फिजाई मैदानों में किसी के तस्वर से भी ज्यादा तेज, मौसर और मजबूत है। चीनी सफीर ने मार्का हक की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान की फैसलाकुन कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सफीर ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी की मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर से पाकिस्तानी वतन से तजदीद वफा का इजहार कर रहे हैं। दुश्मन की हर चाल, हर फरेब हमारे पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। हम जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारा लहू, हमारी जान वतन के नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा लहू, हमारी दुआएं सब पाकिस्तान के लिए। वतन पर कोई भी आंच, कोई भी तकलीफ आए हमारे दिल में लगती है। हर तूफान में, हर तकलीफ में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सच बनकर, हक बनकर, क्योंकि हम हैं बुनियानुल मरसूस। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। Palmolive Naturals, न्यू लुक, नेचुरल ग्लो। $7 करोड़ मेरे अकाउंट में आएगा, फिर तू जाएगा। 7 करोड़? 7। चल, फैमिली को कॉल मिला। हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो अंकल, थोड़े पैसे चाहिए थे। खाला, अब जितने आसानी से कर सकती हैं मैं कर दे। चंदा इकट्ठा कर रहा है क्या? नॉट फेयर बट यार, जिंदगी का सवाल है, अब तो मेरा उधार वापस कर दे। ये किसे उठा रहा है? शिदे, तू? कितनी बड़ी फैमिली है तेरी? 7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलेनोर की कॉलिंग फैमिली।
यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली मिलकर हो गई मोर देन 7 करोड़। ओह, तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With Ufone and Telenor, call more than ever before. ये बात है। यार तू सबसे मांग रहा था, भाई से ही मांग लेता। क्या? मैं भी तो तेरी फैमिली हूँ। यूफोन या टेलीनॉर एक ही बात है। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। Introducing the new line of Pell refrigerators, a new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। न्यू एंड इम्प्रूव्ड लाइफ बॉय विटामिन ई और ग्लिसरीन के साथ स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि लाइफ के हर टेस्ट के लिए स्किन रहे रेडी। स्किन रेडी तो हम लाइफ रेडी। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी। शोहदा फाउंडेशन के रहनुमाओं की जानिब से न्यूज कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कि रात को वो जहरियत, वो दहशत गर्दी की, उसने मासूम शहरियों पे हमला किया, उसने मसाजिद को तबाह किया, उसने मसाजिद पे हमला किया जिसमें मासूम शहरी हमारे शहीद किए गए, मासूम बच्चे शहीद किए गए, शहरी आबादी को तबाह किया गया। और चांकिया के नालायक शागिर्द, तुम्हें तो जंग लड़नी भी नहीं आती, तुम्हें तो जंग लड़ने gaps which are out there. Now, climate in nutshell is actually frontier financing. It's a priority sector financing indeed. And nowhere in the world, and ladies and gentlemen, when I say nowhere in the world, I mean nowhere in the world, priority sector or frontier financing is done without the support of the government, without the support of the sovereign. Even in the quintessential capitalist economies like United States of America, the frontier financing is only achieved when the government's intervention is there, the government support is there. Tesla, let me just share with you an example here. Tesla was initially conceived and funded through the Department of Energy under Ministry of Defense in USA's concessional financing arrangement. And I don't know why we are so averse to the idea of not asking for. 4 घंटे के अंदर पूरी पाक अफवाज ने तेरी सारी फौजी तंसीबात, तेरे सारे तैयारे, तेरे सारा मिसाइल सिस्टम, इसे कहते हैं इखलाकियात, कि सुबह फजर के टाइम तो रात के अंधेरे पे हमला कर रहा है, हम सुबह फजर के टाइम रोशनी में हमला कर रहे हैं और फौजी तंसीबात पे तुम्हारी हमला कर रहे हैं। तुम्हारी 600 अरब डॉलर की इकोनॉमी को हमने जेर करके रखा, सबने देखा। अल्लाह ने फिर क्या कुरान में, वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन,
हिंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो शोहदा हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, बल्कि रिस्क भी खा रहे हैं। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस करना था। अल्लाह ने यह भी कहा कि खिदमत खल्क करो। हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। इसलिए मैं महसूस किया कि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो तारीकी में डूब जाती हैं। हम नहीं भूलेंगे। सारी जिंदगी शोहदा के फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, खड़े रहेंगे। हमने फिर हुकूमत से मुतालबात किए। हमने हुकूमत से कहा कि ये जो जुल्म करके गया है मासूम शहरियों पे, इनके इमारात को तबाह करके गया है, इनकी फैमिली की कफालत कौन करेगा? इनके घरों की तामीर कौन करेगी? और वो जो इमारात तबाह हुई हैं, शहरी इमारात, उनकी तामीर कौन करेगा? हमने कहा कि इनके लिए यादगार बनाएं। हाँ, इनकी यादगार बनाएं, इनकी माली मदद करें, इनकी फैमिलीज की कफालत करें। हाँ, शुक्र गुजार हैं हम शुक्र गुजार हैं। हमारी गवर्नमेंट ने फैमिलीज की दाद रसी की। हाँ, आज भी पूरा साल हो गया है, उन्होंने, उनके ओहदेदारों ने, उनके नुमाइंदों ने फातिहा खानी भी की। लेकिन हमने उनको उस वक्त ये भी कहा था कि आलमी अदाराए इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा पे जोर दें। हम तो जंग लड़ेंगे, पूरी आलमी बरादरी को बताएंगे कि शोहदा के साथ जुल्म हुआ है। लेकिन हमने उस वक्त कहा था आपने भी इस फोरम पे तवज्जो देनी है, सफारती मामलात को तेज करना है, और आपने आलमी अदारा सेहत को, इंसाफ को आपने बताना है कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। और आपने वो बात आज भी हम कहते हैं, आपको दोबारा कह रहे हैं कि आपको आलमी अदारे इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदारों पे जोर डालना पड़ेगा। हाँ, आप जोर डालेंगे। मैं ये पूछता हूँ आपसे, आलमी अदारों से पूछता हूँ, उस 6 साल के बच्चे मोहम्मद उमर का क्या कसूर था? मासूम था शायद। हाँ, उस 4 साल के बच्चे मोहम्मद एवान का क्या कसूर था? वो हवा बीबी जो 1.5 साल की थी, सिर्फ बच्ची, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? हाँ, आप I also have to share with you that the time is ripe. This is the time when the feel-good factor is out there in the international community, and we really need to go ahead collectively and grab that opportunity. Salimullah Sahab already talked about taxonomy. Operationalization of taxonomy is required as of yesterday, really. And the more involvement of the private sector is necessary there, sooner rather than later. More inclusive, the provincial engagement is necessary in the execution of the projects under taxonomy. Number 4, better engagement is necessary with ADB, with AIIB, with GCF. And merely funding is not the only thing that is needed from them. We actually require the technical support for conceiving the project and make them into a bankable project. Lastly, I'm going to suggest something very radical here today. Salim Saab is also there, Minister Saab is also there. Minister Saab की मैं थोड़ी सी attention चाहूँगा, ये मैं ज़रा radical बात करने लगा हूँ, आपको बड़ी पसंद आएगी Minister Saab. मेरा ये ख्याल है कि हमें बहुत seriously consider करना चाहिए climate specialized bank. Yeah, one of the DFIs should be given the mandate to do the climate specialization. Without that specialization, अगर आप expect करेंगे कि हर बैंक अपनी capacity को build करे, तो गालिबन ही एक challenge होगा. और इसके साथ साथ जो ecosystem develop करने की बात expect करेंगे कि हर बैंक अपनी capacity को build करे, तो गालिबन ही एक challenge होगा. और इसके साथ साथ जो इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है about pension fund and insurance is also something which is an absolute must to move forward, ladies and gentlemen. Thank you very much.
Thank you, Mr. Zafar. And that's a very critical perspective because this transition that we're talking about will only succeed if domestic financial systems are fully aligned and activated. So my next question is for Anoj. He has joined us online. So we've seen an increasing use of instruments like blended finance, guarantees, and green bonds. But adoption at scale still remains limited in the Pakistani market. From your experience at ADB, which financing instruments have actually proven effective in crowding in private capital in comparable markets, and what makes them work in practice and not just in theory? डॉन मीडिया के ज़ेरे एहतमाम ब्रीथ कॉन्फ्रेंस जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. Palmolive Naturals, new look, natural glow. Palmolive Naturals, new look, natural glow. देखिए आज शब 7:05 सिर्फ डॉन न्यूज पर। यूज करो ओलिविया लाइट क्रीम। ओलिविया, शुक्रिया। रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना, इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। Pakistan's biggest all-new dynamic AI inverter AC. Self-cleans with 5th gen auto clean. Sterilizes with advanced UVC. Eliminating bacteria for cleaner, safer air. Because every breath matters. Orient. Living innovation. जहाँ प्यार की रस्में, वादे कस्में, चाहत का इकरार है, वहाँ गुल बहार है। जहाँ प्यार, वहाँ गुल बहार। वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है पाकिस्तान्स बेस्ट हेयर फॉल सॉल्यूशन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसला को अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तर्दीद सबूत करार दे दिया। वाज़े किया कि मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़े और दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वाज़े किया है कि मार्का हक एक दिन मनाने की बात नहीं। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। सवाल उठाया कि भारत इंसाफ के उसूल के मुताबिक पहलगाम के वाक़े को बैनुल अक़वामी अदालत क्यों नहीं लेके आया।
पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम मुअत्तल कर दिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने का ऐलान। ईरानी सदर ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो धमकियां देना बंद कर दे। वाज़ेह किया कि जबर के सामने ईरानी सर नहीं झुकाएंगे। इराक़ी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मुतालबात मानना नामुमकिन करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी करार दे दी। मुत्तहदा अरब अमारात ने दूसरे रोज़ भी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का दावा कर दिया। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का एक्स पैगाम। UAE ने ईरान को जहरे अमन के लिए ख़तरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफ़ा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। That's the shot. Flawless. फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं। न्यू लक्स, जिससे मिले टैंजरीन की फ्रेशनेस और सीरम जैसा ग्लो, तो मैं करूं कुछ नया। वेट, लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर शॉट्स। मगर किसके लिए? वी गॉट द शॉट। मेरे लिए। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन, ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, एक बार फिर रुख करेंगे डॉन मीडिया के ज़ेरे एहतमाम ब्रीथ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। And now is being repurposed away from health and education and sanitation to devastation. We are 165 in Human Development Index out of 190 some odd countries. How much bad should it get before we stop diverting money away from health and education and sanitation? I leave this question here for all to debate. So, we are 145 on SDGs, we're 160 some odd on human development, and the solution of the world for us is repurposed loan. Take them away from these health, education, human development related matters and put them into the infrastructure or put them into the reconstruction that has come about because of the devastation that was not caused by us. Not right. Not right. Not fair. The second idea, the fantastic idea, is debt and bonds. Most of the discussion here has been about debt and bond. Let me give you some reality. We raised about, all in all, 15, 16, 17 trillion rupees. Those are the government revenues that come directly from taxation and other instrumentation. 8.2, 8.3 trillion rupees out of 15 or 16 go into debt service. So the total revenues are 16, and 8.2, 8.4, 8.5 go into debt servicing. The rest go, another 8 trillion go to provinces. So we start with zero or minus. And the solution that the world is proposing to us is more debt. What kind of math is this? What kind of math is this? More debt that we have to pay back, and like how?
So this entire kind of discussion about green bonds and yellow bonds or orange bonds with yellow polka dots works. We need that money. And under dire circumstances, we would take that money. But I would bring to your attention that we are not polluting. It has to be real, it has to be fair, and it has to commensurate with the burden that certain areas of the world or regions or countries of the world are putting on the environment. It has to be commensurate. The third and the most important thing that comes forth is blended finance. I'm a great sponsor of blended finance, but blended finance requires a very robust private sector. Because by blended finance, you're saying that we'll get some money and the rest comes from the private sector. You've seen our private sector footprint. We don't have Gates Foundation. We don't have GlaxoSmithKline Foundation. We don't have these foundations here. Even our largest corporations, you would consider SMEs. So what blended finance and from where? So I'm demystifying financing for you. I'm simultaneously and ironically grateful for the support that I get. I'm most grateful for the support that we're getting because we would not be able to pull through. But I would be amiss if I did not highlight the true nature of what we discussed. So I'm bringing it to the fore. What is our solution? We have divided climate into two components. There's a bucket where the public rate of returns are high. When you go and you put together these little kind of stones interwoven with wires in Gilgit-Baltistan, you can't make money out of it. But the public rate of returns, the benefit that people of Pakistan get from putting that stone wall, which protects them from devastation, is enormous. And I'd give you many, many such examples. This is just one. We'd be most grateful. And we'd continue to work with the development partners and all of the people who've been supporting us, and most of all, the Asian Development Bank, the World Bank, and the UN system. They have done a tremendous job helping us put the early warning systems, helping us putting these stone walls, trying to save these poorest of the poor communities from devastations. We are most grateful, and we will work very hard, I promise, to create the world-class projects for you consideration. But then there's another bucket, and that is where the private rate of returns are high. I have a friend whose wife I just saw here somewhere. There. They've come up with a solution that works on solar system and provides communities clean drinking water for free, F-R-E-E. And they create, because of the technology that they've created, north of 15, 16, I don't know. They don't give those numbers. They're very secretive about them. IRR. How about that for an idea? That doesn't need anyone's grant. That just needs idea. An idea that can be unleashed, an idea that can be financed, and anyone sitting here, including my friend sitting here, who's a very dear friend, if she can finance, if we can bring these kids to these very rich people and very rich organizations, our very rich is your kind of middle tier. But there's enough of this middle tier in Pakistan. I have a commitment from a friend of mine who, for reasons of philanthropy, has told me, don't name me. And he in Karachi told me, I would give you whatever amount of money you need if it is for the youth. And he said, take the money. And I said, I don't need your money because no politician should be deciding who should get money. You come to the table, just sit around the table, listen to these guys, and if they make sense, give them your money and take equity from them. That's our solution for areas where the private rate of returns are high. And as I told you this morning, we have this idea, we're calling it Greenfield Pakistan's pitch. Pakistan
pitch to the youth, from the youth, for the youth. This pitch is going to come from the youth. Our pitch is to the youth. And the solutions are going to be youth-driven. And some of the people whom God has given a lot, and many of the organizations who are fundamentally affluent, God bless them, if they're willing simply to come to the table and sit there, God, what does it take to just come and sit there? No one is asking for the money. There's no government fund that I'm proposing. No bureaucrat would touch it with a barge pole. No politician would tell you what to do. All we are asking you is to come to the table and just listen to these people and fund them. And then you see where it all goes. We're calling it Greenfield Pakistan's pitch. As I said, from the youth, to the youth, for the youth. We're also creating this green university where we would like our youths to interact with kids in the Netherlands and in Spain and in the United States and in the United Kingdom. And this morning I mentioned Spain, and I would be amiss if I do not mention the Green Compact that we've developed with the United Kingdom. And a big component of that is to link Pakistani universities with the UK universities and Spain universities and have these kids come together and just fund them for commercial research and new ideas and novel ideas. So you have a chain of ideation. You have a pipeline that private equity and venture capital dreams for. So we've structured the pipeline that the private sector is dreaming for. The private equity or venture capital or angel investments, no matter what part of the risk capital value chain you belong to, will have a solution for you. But come to the table. I only ask you to come to the table and start thinking, in addition to these grants and these loans and these bonds, think business. Think new business creation. Just about 15 years ago, the two most polluted cities in the world were not New Delhi and Lahore. They were Beijing and Shanghai, somewhere out there. Right now, they're the exporters of 75 to 80% of the world's solar technology. They used that enormous demand function to their advantage and created a whole cluster of solar technologies that no one can defeat now. But there are new revolutions brewing. There's an electrification revolution brewing. There's a battery revolution brewing. And all of these revolutions, we have copper. All we are doing is trying to get into that business, the new revolution that you haven't yet seen, and unleashing our youth and their fantastic ideas and your capital onto this new revolution. That's what we're trying to do. And I have... वो पाकिस्तान के झंडे के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं और रोज ये आप तमाम लोग इस चीज की गवाह होंगे कि रोज हमारे बॉर्डर के ऊपर आज भी जंग लगी हुई है। वो फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ, फितनातुल ख्वारिज के खिलाफ। रोज हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, रोज यहाँ माएँ बेवा हो रही हैं, लेकिन उनका अज़म ये है कि उस झंडे पे लिपटी हुई शहादत नोश किए हुए जब अफसर अपने घर पहुंचता है तो कहती हैं कि हमारा अगला बच्चा जो है बेटा, उसको भी हम फौज में कराएंगे। तो इस जज्बे को कौन हरा सकता है? हमारे जो मुखालिफ फौज थी, जब हमारे जज्बे ने, पाकिस्तानी फौज ने, हमारे एयरफोर्स ने उनके महंगे हाईटेक जहाज गिराने शुरू किए, तो ये हकीकत में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह के कागज के जहाज हैं, और वो जहाज जो है मेरी रब की मदद के बगैर नहीं गिर सकते, और वो मेरे रब की मदद थी जिसने पाकिस्तान को ये कामयाबी दी। मेरे रब की मदद थी तो उनका दुनिया में अनडिटेक्टेबल, जिसको कोई आज तक डिटेक्ट नहीं कर सकता, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम S-400, उसको पाकिस्तान ने
हराया और तबाह किया। ये मेरे रब की गैबी मदद थी। पाकिस्तान हर आने वाले दिन में जो हमने जंग में कामयाबी हासिल की, अल्लाह ताला ने हमें हर आने वाले दिन में इज्जत दी और आज हम एक फ्रंट जंग का जिसमें कामयाब हुए और दूसरा फ्रंट जो डिप्लोमेसी का। पाकिस्तान जिसको प्रोपेगेट किया जाता था कि एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान जिसमें कभी सुबाइयत के ऊपर झूठी हवा दी जाती थी, कभी मजहब के नाम के ऊपर झूठी हवा दी जाती थी, कभी शिया सुन्नी के ऊपर झूठी हवा दी जाती थी और दुनिया को बताया जाता था, वो आज सिर्फ एक नाम से जाना जाता है और वो है क्या? पीस निगोशिएटर। जब अमन का नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम आता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी नीयत साफ हो। हम कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम शायद कोई बेस्ट कौम भी नहीं है, लेकिन अज़म है और इंशाअल्लाह ये एक राइट टीम है फील्ड मार्शल साहब की, आपके प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की और ये पूरी काबीना। यहाँ दिन रात की मेहनत है और इंशाअल्लाह हम अपनी अफवाज के साथ, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपनी मसरूफियात छोड़ के इधर आए हैं, कोई अपना चर्च छोड़ के आया है, कोई मसाजिद छोड़ के आए हैं, कोई अपने मदरसे का टाइम छोड़ कर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं अपनी कौम के लिए, अपने अफवाज के लिए और इस अज़म और इस जज्बे को इंशाअल्लाह ना कोई हरा सकता है, ना कोई हराएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जश्न बुनियाद We want real, fair, keeping all these things in mind, you know how Pakistan is climate vulnerable, we don't have a strong private market, we want real, fair financial instruments. How can Pakistan apply these instruments more systematically, particularly to de-risk early stage projects, reduce transaction costs, and build a pipeline that investors can, engage with at a bigger scale? Thank you. I hope you can hear me. I think I was going to apologize firstly for, for sort of standing in between lunch and the audience there. But also, I think, this is, it's a great point to come in because of the remarks of the minister just before me, which are all really fine points that he raised. I think what I'll try to do is, from my perspective, try to maybe give 3 or 4 messages, I think, which may sort of relate to some of the discussions previously, and 3 or 4 examples. Firstly, thank you very much for having me here. Sorry not to be there physically. From ADB's perspective, and Pakistan is an extremely important member for the ADB, having been a founder of ADB back in 1966. We've had an office in Pakistan since 1989, almost 50 billion worth of assistance to Pakistan in different forms. So it's a very long-standing relationship. When I look at the climate finance issue, which has been very eloquently raised by डॉन मीडिया के ज़ेर-ए-एहतिमाम ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के आबना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। अमरीकी सदर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर शुक्रगुजार हूँ। वाज़ेह रहे कि अमरीका की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया गया था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसे पाकिस्तान के कहने पर रोक दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर के आबना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया गया था, जिसे पाकिस्तान के कहने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया है और अब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बहुत एक
एक सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट है, तो हम चाहेंगे कि इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर आए वो इस पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी आए, इंटरनेशनली भी यहाँ पर लोग आए और पार्टिसिपेट करें। तो इंटरनेशनल बिड्स जो है वो हम देने जा रहे हैं, जो कि अभी अगले 1 हफ्ते के अंदर चली जाएगी सारी चीजें। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारी जो ब्रदर मुल्क है हमारा सऊदी अरब, ये उसके टोटल फंडिंग से ये सारा, उसकी ग्रांट से ये हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे। तो ये और भी हमारे लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी थी, एम्बेरसमेंट थी कि एक दोस्त मुल्क, एक भाइयों जैसा हमारा जो है वो मुल्क, वो हमें सपोर्ट कर रहा है और हम उसको शुरू करने में हमने कोई 9 साल लगा दिए। तो जब भी गुफ्तगू होती थी, मुझसे पहले भी हुई होगी बहुत सारे लोगों से तमाम, तो सऊदीज बेचारे ये वाली रिक्वेस्ट करते थे। तो मेरे भी आने के बाद उन्होंने जो है वो हमसे एक ही दफा बात की है, और खैर उससे पहले से हमने इस काम को शुरू कर दिया था। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस ग्राउंड पे, मैं चाह रहा था कि मैं इसको अपनी टीम के साथ देखूं फिजिकली, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो कमरे में बैठकर देखने में और ग्राउंड पे जाकर देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये कितनी प्राइम जगह है, और यहाँ अगर ये 200 बेड का हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल है ये, जो कि ये बनेगा, और ये फर्स्ट फेज है, और इंशाअल्लाह ताला जब ये सारे फेजेस इसके कंप्लीट होंगे तो ये हॉस्पिटल 600 बेड का हो जाएगा, ये 600 बेड्स का हो जाएगा। लेकिन इस 200 बेड के इस हॉस्पिटल पे आज जो हमें इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो हमें इस वक्त 7 अरब रुपए पाकिस्तानी समझ लें आप, 7 अरब रुपए से काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो मैं जितना भी टाइम हमारा गुजर गया उससे तो वापस नहीं आ सकते, 9 साल वापस नहीं आ सकते, लेकिन आज हमने इसको मॉडिफाई करके आज की इस हॉस्पिटल को जब हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ना कि सिर्फ आज का बल्कि आने वाले कल का ये हॉस्पिटल होगा, ये फ्यूचरिस्टिक हॉस्पिटल होगा। इसके अंदर सारे वो डिपार्टमेंट्स मौजूद होंगे, इसके अंदर सारी वो यहाँ पर हॉस्टल्स मौजूद हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, और यहाँ पर वो तमाम 8 डिपार्टमेंट्स हैं कि जो कि कोर हैं, जो कि बैकबोन होती है किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए। तो तमाम मैं इस्लामाबाद के रहने वालों को और इस रीजन के रहने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि ये बहुत ही एक प्राइम और बड़ा प्रेशियस किस्म का ये प्रोजेक्ट है, जो कि 9 सालों की ताखीर के बाद इंशाअल्लाह ताला अब ये यहाँ पर आप अगले इंशाअल्लाह ताला में अल्लाह ने सब करम किया तो जुलाई से आप यहाँ पर फुल फ्लेजेड जो है वो यहाँ पर मोबिलाइजेशन देखेंगे। जुलाई से यहाँ पर आपको जो है वो फुल फ्लेजेड जो है वो काम होता हुआ नजर आएगा, ये सारी जगहों पे जो है वो काम होता हुआ नजर आएगा। तो और हम इसे विद इन राउंड द क्लॉक काम करके हम इसे जो इसकी मुद्दत है उस मुद्दत से इंशाअल्लाह पहले बनाएंगे। मैं आपके जरिए पाकिस्तान को ये, और ये चूंकि ये इस रीजन में इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा से मरीज आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से मरीज आते हैं, कश्मीर से मरीज आते हैं, इस रीजन के मरीज आते हैं, तो इस्लामाबाद के ही मरीजों को, पेशेंट को जो है वो कैटर नहीं करता, बल्कि इस्लामाबाद जो है वो इस पूरे रीजन के जो है वो मरीजों को कैटर करता है। तो यहाँ पर ये 200 बेड का पहले फर्स्ट फेज में और बाद में 600 बेड का ये हॉस्पिटल जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही बड़ा संगे मील जो है वो साबित होगा यहाँ के हेल्थ केयर के निज़ाम के लिए, और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके रश को वो ईज आउट कर देगा। मैं आपको सिर्फ बताता चलूं कि 1 साल के इस बड़े महदूद अरसे में अब तक हम 380 नए बेड्स तमाम इस हेल्थ केयर के निज़ाम में इस्लामाबाद में ऐड कर चुके हैं। 380 बेड्स हम पोली क्लिनिक में, पेम्स में, BHUs में, सेकेंडरी केयर में, ये सारे मिलाकर हम 1 साल में 380 बेड्स हम इस्लामाबाद में नए ऐड कर चुके हैं, नए शामिल कर चुके हैं इस 1 साल की मुद्दत में। और इसमें हमने जो सेहत सहूलत
जो वजीर आजम का इनिशिएटिव है जो कि बंद पड़ा हुआ था, जो कि हमने एक्टिवेट किया है, हमने उसे शामिल नहीं किया। अगर हम वो शामिल कर लें तो 6,633 हमने नए बेड्स और इंक्लूड कर दिए हैं। 6,633, क्योंकि जो सेहत सहूलत वजीर आजम का ये जो प्रोग्राम है, जहां पर इस्लामाबाद, जीबी और एजेके के शनाख्ती कार्ड होल्डर्स जो है वो अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं, तो हमने अगर 19 के करीब नए हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐड किए इस्लामाबाद में, और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके जो बेड्स हैं उनकी तादाद है 6,633 जस्ट इमेजिन कि इस 1 ईयर ऑफ स्पैन ऑफ टाइम में हमने 380 के 80 बेड्स जो है वो गवर्नमेंट ने ऐड किए, और गवर्नमेंट के इस सेहत सहूलत को दोबारा रीएक्टिवेट करने के नतीजे में 6,633 नए बेड्स एक साल में ऐड हो चुके हैं। जिस तरह से हमने मोबिलाइज किया है अपनी तमाम मशीनरी को पॉपुलेशन के हवाले से, जो हमारा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के, हमारी जो पॉपुलेशन है वो इससे टिकिंग बॉम्ब, हम 3.6 हमारी फर्टिलिटी रेट है पाकिस्तान में, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम हर साल 6.3 मिलियन लोग जो है बच्चे ऐड हो रहे हैं, आबादी ऐड हो रही है हर साल पाकिस्तान में, जो कि एक न्यूजीलैंड की, पूरी न्यूजीलैंड की आबादी से बड़ी आबादी है। तो हमें अगर ग्रोथ अगर हमें करनी है, अगर हमें इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रेंथन होना है, तो दुनिया की ये मिसाल है कि दुनिया 2.0 फर्टिलिटी रेट पर जब तक नहीं आई है, कहीं पर भी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के एक एक नौजवान को, सरहदों की हिफाजत करने वालों को दिल किया था गहराइयों से, एक तो उनको मुबारकबाद, और फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जनाब आसिम मुनीर साहब को, पाकिस्तान की पूरी फौज को, पाकिस्तान की फजाइया को, पाकिस्तान की बड़ी फौज को, पाकिस्तान की आर्मी को, बिलखुसूस पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद। ये जो दुश्मन ने हम पर शब खून मारा था, जो मार का हक था, उस में जो अल्लाह ताला ने एक 6 गुना ज्यादा बड़ी फौज के आगे, और दुश्मन जो कि बहुत खुद को ताकतवर भी समझता था, इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रेंथन था, दुनिया में भी उसकी बड़ी बात थी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये वो मुकाम दिया कि हमारी फौज ने दुश्मन को रुसवा किया, उसको शिकस्त फाश से जो है वो हमकिनार किया, और पाकिस्तान दुनिया के ग्लोब में, दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान एक नई ताकत और कुव्वत और पहचान के साथ दुनिया के नक्शे पर उजागर हुआ, और पाकिस्तान की अहमियत दुनिया को पता चल गई इस मार्का हक में, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो सिलसिला 1 साल पहले शुरू हुआ था, आज पाकिस्तान ने उसी गेन को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने उसी गेन को हासिल करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए आज दुनिया की जंग को रुकवाने का भी जरिया बनाया उसे, और हम डोमेस्टिक महाज पे भी इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मार्का हक में फतह हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल। Bonds, what we call disaster relief. This is very interesting because it's raising money from global markets, from insurance, which provides a very quick relief in the event of certain triggers of disasters. A very interesting instrument, disaster relief bonds, which are worth looking at because it's combining insurance, capital markets, creating funds at the national level, and something which can be developed. My very last word, which is nothing works if you don't have institutions of delivery who can absorb the money and implement the projects, not just technical, but the financial use of money in a sustainable manner. And for that, where we really, really need to focus heavily and things are being done in different parts is subnational. We are working with state-owned enterprises to improve their capacity to raise and use money better, but also city governments who really will be doing a lot of work on water, floods, heat, air pollution.
the city level governments have to be better structured and be better empowered to really use the money that we can raise for them, with them at a national level. So that's just a very quick overview of things. I'm sure it cannot match the passion of the minister who spoke before me, but I hope it helps, provide at least some ideas for thought. Thank you very much. Thank you. Thank you, Anuj. Your points give us a very clear sense of the tools and instruments that are already available and that Pakistan can use to implement and scale its climate action. So before we close, let me bring this all together. We discussed global systems, we discussed financial constraints and implementation gaps and the private sector barrier. So I would like to just ask all the speakers, we'll go online first and then the one sitting here, that in one line, looking ahead to the next 2 to 3 years, what is the one concrete action that Pakistan must take to unlock climate investment at scale? We'll start with Alain. No, thank you very much for the discussion. Honestly, we see it's a question of scale and speed, clearly. There have been like many ideas, a lot of money available, a lot of about capacity building and about policy. But in the end, what matters most is the implementation impact and the outcome, as stressed by the minister. So this will be basically my conclusion, focusing on the outcome, the impact on the ground. Thank you. Thank you. Over to you, Anuj. Just in one line, please. Develop the local institutions for managing projects better financially and creating instruments, both capital markets, bonds, as well as national de-risking funds. I think critical. Dr. Murtaza. Thank you. Let me just first pay tribute to the audience for staying despite this being lunchtime and the minister having sort of thrown a grenade at our panel and almost destroyed everything that we were saying, but I think great tribute to the audience for staying. I would just say that Pakistan needs to try to lower the country risk premium. That's a very important part of what we need to do, and I think we can do that by managing our macroeconomy better. And also, when we are hit by natural shocks like the floods of 2022 and the floods of last year, to, I think, do a better job of actually putting our money where our mouth is by protecting the most vulnerable people that have been affected, so that the world can also then contribute commensurately. Thank you. Thank you. Shazab and then Mr. Thank you. My suggestion would be that as we have a very clear list of projects under CPP, that we prepare a project preparation facility, make investable, bankable projects, and have some sort of de-risking platform or de-risking institution where platform is probably a better structure. So, and just do the projects. Thank you. Anam, thank you very much. मेरे ख्याल से बड़ा अनफेयर क्वेश्चन है. एक तो मैं हर चीज़ पे शिकायत कर रहा हूँ, मैंने पहले भी शिकायत की, मैं अभी भी शिकायत पे शुरू हो गया हूँ. बड़े अनफेयर क्वेश्चन है given the complexity and the enormity of the problem at hand and the challenge at hand. But nevertheless, अगर उसको बॉक्स इन करना ही है और आपने मुझे बिल्कुल स्पॉट पे डाल दिया है और स्ट्रेट जैकेट कर दिया है, तो अगर एक चीज़ मुझे उठानी पड़ेगी तो आई वुड से कि जो टेक्सोनॉमी है सलीम साहब, उसको हमें ऑपरेशनलाइज करना है एज ऑफ यस्टरडे, मगर उसको इस तरह ऑपरेशनलाइज करना है कि उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन सूबों की बहुत ज़्यादा चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की चाहिए. खाली बैंक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैन गो टू एन एक्सटेंट, बट जब तक कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी एक्टिवली, आई डोंट थिंक दैट इसका हमें तो बहुत इनॉर्मस फ़ायदा होगा. आखिर में फॉर शकील साहब और नाज के लिए, नाज बैठी हुई तो थी अभी, वो चली गई हैं. दिस शुड नॉट बी, ब्रीथ शुड नॉट बी नशिस्तम गुफ्तम बरखास्तम. We needed to go beyond this really, and I'm offering myself in my personal capacity. OGDC I could see right there, I supported you on this one. SPBA, as Bank of Punjab, we are at your disposal. You're doing a great job, but we need to take it forward. This is a collective responsibility, not yours or Naz's
or Sophie's or your entire teams. We have to all work together. And thank you very much. Thank you to all our panelists. बहुत shukriya. We had a very rich and insightful discussion. Over to you, Mikhail. Thank you. I know I learned a lot from these esteemed financiers from across the region. And of course, the counter narrative from Minister Saab was also food for thought. Speaking of which, lunch is served across the foyer. We do have an overflow of guests today, so please be very patient with our team. And we'll be back at 2 p.m. sharp with a very interesting conversation around the Indus Basin and our glaciers. Thank you. See you back at 2 p.m. sharp. डॉन मीडिया के ज़ेरे एहतमाम ब्रीथ पाकिस्तान का सेशन आपने मुलाहिजा किया और अब एक नज़र न्यूज़ अपडेट पर। इस न्यूज़ अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के आबना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी सदर ने जुर्रत का मुजाहरा किया, मुस्बत इक़दाम अमन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ख़ित्ते के ममालिक के दरमियान सिफारतकारी जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वफाक के साथ माली और आइनी इख्तियारात से मुताल्लिक़ कमेटी तश्कील दे दी। स्पीकर की ज़ेर सरबराही कमेटी में वज़ीर तालीम, वज़ीर क़ानून, मुशीर ख़जाना और अपोजिशन लीडर शामिल। वो अपनी हारी को वाइप कर देगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। न्यू डव इंटेंस रिपेयर, जिसमें है 8% बायो प्रोटीन फ्यूजन, पाकिस्तान में पहली बार बालों की गहराइयों तक जाए and reverses up to 3 years of damage with New Dove Intense Repair. अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. New and improved Lifebuoy, विटामिन E और ग्लिसरीन के साथ स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि लाइफ के हर टेस्ट के लिए स्किन रहे रेडी। स्किन रेडी तो हम लाइफ रेडी। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। दे आए गैविस्कॉन, ये मैदे की इजाफी तेजाबियत को करे बेअसर और बनाए एक तय ताकि आपको मिले बदहजमी का फौरी हल। गैविस्कॉन तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, खुराक दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मालिश के मशवरे से इस्तेमाल करें। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले।
Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना, इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। अरे भाई साहब, ये तरीका हो गया पुराना, इससे हम करें। तो तुम ऐसा सोच क्यों रही हो? अली, नए मुल्क जाने की परेशानी है या किसी से दूर होने की? दादी, उसने कहा है तुम्हारा इंतजार करेगी। पहले तुम जाके तसल्ली से सेटल हो जाओ। वैसे दादी, आपने उससे बात कब की? मैं क्यों बताऊं? वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारे दादा की तरह। हर उम्र में चलने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। चाय का मजा ले जाए ऊपर, सीधी सादी खुशी है सुपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। नए मुल्क जाने की परेशानी है या किसी से दूर होने की? उसने कहा है तुम्हारा इंतजार करेगी। वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारे दादा की तरह। हर उम्र में चलने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। बच्चों के हेल्थ की बात हो या पूरी फैमिली के टेस्ट की, एक माँ होने के नाते स्टैंड तो मुझे ही लेना पड़ता है। ऐसे में मेरी स्मार्ट चॉइस है डालडा स्टैंड अप पाउच, क्योंकि ये है इजी टू पोर और इजी टू स्टोर, जो बनाए अब कुकिंग और भी आसान, बेहतरीन टेस्ट के साथ। डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू स्टोर, जहां ममता वहां डालडा। हाय हाय, जरा ध्यान से चलाओ, लिपस्टिक लगा रही हूँ। डोंट वरी, सर्विस टायर्स के फ्लेक्सिबल कारकस से मिले स्मूथ राइड बिना शॉक्स। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। सर्विस टायर्स, पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड। Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. बातें खत्म हो सकती हैं, पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा
हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन, ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैस कैश ऐप खोलो, प्लान सिलेक्ट करो, हो गया जैस कैश इंश्योरेंस। सोचो समझो कर लो। Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. इन्वर्टर फैन सिर्फ रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र है, मुझे चादर दे ज्यादा रहा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। That's the shot. Flawless. फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं। न्यू लक्स, जिससे मिले टैंजरीन की फ्रेशनेस और सीरम जैसा ग्लो, तो मैं करूं कुछ नया। वेट, लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर शॉट्स। मगर किसके लिए? वी गॉट द शॉट। मेरे लिए। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। $7 करोड़ मेरे अकाउंट में आएगा, फिर तू जाएगा। 7 करोड़? 7। चल, फैमिली को कॉल मिला। हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़े पैसे चाहिए थे। खाला, अब जितने आसानी से कर सकती हैं मैं कर दे। चंदा इकट्ठा कर रहा है क्या? नॉट फेयर बट यार, जिंदगी का सवाल है, अब तो मेरा उधार वापस कर दे। ये किसे उठा रहा है? शिदे, तू? कितनी बड़ी फैमिली है तेरी? 7 करोड़ से भी बड़ी है। यूफोन और टेलेनोर की कॉलिंग फैमिली। यूफोन और टेलेनोर की कॉलिंग फैमिली मिलकर हो गई मोर देन 7 करोड़। ओह, तो अब यूफोन से टेलेनोर और टेलेनोर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With यूफोन एंड टेलेनोर, call more than ever before. ये बात यार, तू सबसे मांग रहा था, भाई से ही मांग लेता। क्या? मैं भी तो तेरी फैमिली हूँ। यूफोन या टेलेनोर एक ही बात है।
Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैज कैश ऐप खोलो, प्लान सेलेक्ट करो, हो गया जैज कैश इंश्योरेंस। सोचो, समझो, कर लो। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। सुबह की धूप से हमारी स्किन का टेस्ट स्टार्ट, कभी गर्मी का टेस्ट तो कभी मिट्टी का टेस्ट, फिर आता है स्वेट टेस्ट, कभी पोल्यूशन का टेस्ट। न्यू एंड इम्प्रूव्ड लाइफ बॉय विटामिन ई और ग्लिसरीन के साथ स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि लाइफ के हर टेस्ट के लिए स्किन रहे रेडी। स्किन रेडी तो हम लाइफ रेडी। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैज कैश ऐप खोलो, प्लान सेलेक्ट करो, हो गया जैज कैश इंश्योरेंस। सोचो, समझो, कर लो।
मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। बातें खत्म हो सकती हैं, पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। चाय बस रेडी है, सही टाइम पे आई हो। बताओ, आज इतनी परेशान क्यों हो? ऑफिस में आज बहुत बुरा दिन गुजरा। चल, अब तुम रिलैक्स करो। मेरा दिन तो फिक्स हो गया, अब तुम्हारा दिन फिक्स कर। आ जाइए। तुम हेल्प के लिए मुझे कॉल कर लेती ना। मुझे पता था तुम खुद ही आ जाओगी। बिन बोले समझ जाने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है कि ये जो बारिशें ख़ास तौर पर आजकल हो रही हैं, ये मौसमी बारिशें नहीं हैं। और जितना ये शहरी लोग जिसको जितना एंजॉय करते हैं, उतना जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उतना ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इन्वायरमेंट को किसी भी लिहाज से हो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। अभी पिछले दिनों अर्थ डे भी था, वो भी गुजरा। हमें जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, स्कूलों में करने वाली चीज़ें हैं। एंड वी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, नॉट जस्ट पाकिस्तान, एवरीबडी। हम तैयारी में नहीं थे, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें जो सारा इन्वायरमेंटल का जितना भी फैक्टर है, हमने कंसिडरेशन का करना पड़ना है। यूज करो ओलिविया लाइट क्रीम। ओलिविया, शुक्रिया। रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना, इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। Pakistan's biggest all-new dynamic AI inverter AC. Self-cleans with 5th gen auto clean. Sterilizes with advanced UVC. Eliminating bacteria for cleaner, safer air. Because every breath matters. Orient. Living innovation. जहाँ प्यार की रस्में, वादे कस्में, चाहत का इकरार है, वहाँ गुलबहार है। जहाँ प्यार, वहाँ गुलबहार। Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. Next. वो निहारी को वाइप कर देगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का खैर मकदम। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की मुकम्मल हिमायत करते हैं।
उम्मीद है ताज़ा तरीन पेशरफ खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के मुआहदे पर मुंतज होगी। शहबाज शरीफ ने ट्रंप का इकदाम जुर्रतमंदाना करार दे दिया। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम मुअत्तल कर दिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते के ममालिक के दरमियान सिफारतकारी जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी और इसराइल की ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी करार दे दी। ईरानी सदर ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो धमकियां देना बंद कर दे। वाज़े किया कि जबर के सामने ईरानी सर नहीं झुकाएंगे। इराक़ी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मुतालबात मानना नामुमकिन करार दे दिए। मुत्तहदा अरब अमारात ने दूसरे रोज़ भी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का दावा कर दिया। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का एक्स पैगाम। यूएई ने ईरान को जाहरे अमन के लिए ख़तरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़े किया है कि ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफ़ा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आबनाए हुर्मुज़ में तसादुम के दौरान 10 आम शहरी हलाक होने का दावा। अमरीकी फ़ौज के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का आबनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल पर आ गई। डॉन मीडिया के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में ब्रीथ पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस। CEO डॉन मीडिया ग्रुप नाज आफरीन सहगल्ला खानी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। सेनेटर शहरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान को तेजी से बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। दो 2022 के सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मौसमियाती तग़य्युर के नुकसानात से बचाव के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। ग्रीन इकॉनमी की जानिब मुंतकिल होना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ने बेपनाह नुकसान उठाया। वाज़े किया कि माहौलियाती तब्दीली के असरात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ 1% कार्बन पैदा करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसलाकुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तरदीद सबूत करार दे दिया। वाज़े किया कि मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़े और दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वाज़े किया है कि मार्का हक एक दिन मनाने की बात नहीं। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। सवाल उठाया कि भारत इंसाफ के उसूल के मुताबिक पहलगाम के वाक़े को बैनुल अक़वामी अदालत क्यों नहीं ले गया। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर तफसीली फैसला जारी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक जाती मौलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरखास्त पर समाज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अदालत के सामने पेश नहीं हुए। मंगल को दोबारा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल तलब। बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों के हवाले से तफसीलात भी तलब कर लीं। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो गया। 3000 से ज्यादा मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिमली डैम का दौरा, डैम के अतराफ इलाके का जायजा लिया। तफरीही सरगर्मियों के फरोग और डेवलपमेंट का प्लान तलब कर लिया। चारसद्दा में मौलाना शेख इदरीस के कत्ल की पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। एक मुलजिम की शनाख्त हो गई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। शेख इदरीस की गाड़ी के ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। कोयटा में पुलिस की फायरिंग से कार सवार नौजवान की हलाकत केस में 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। सिंध में 11 मई तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दादू, जैकाबाद, लाड़काना और सक्खर में दर्ज हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। पाकिस्तान का मजीद LNG के लिए स्पॉट खरीदारी का फैसला। आलमी कंपनियों से 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली गईं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 7 मई तक बोलियां तलब कर लीं। उसी दिन बोलियां खोली जाएंगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सारिफीन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर 19 मई को समाअत होगी। बरसों से बंद डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट बहाल हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और वजारत दिफा को खिराज तहसीन। और ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डेंट्रॉन की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तानी आर्मी कैडेट सरदार इरसाम अब्बास और ऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। ISPR के मुताबिक कामयाबी पाक फौज की जूनियर क़यादत के आला पेशेवराना मयार, अज़्म और बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर है। That's the shot. Flawless. फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं। न्यू लक्स, जिससे मिले टैंजरीन की फ्रेशनेस और सीरम जैसा ग्लो, तो मैं करूं कुछ नया। वेट, लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर शॉट्स। मगर किसके लिए? We got the shot. मेरे लिए। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन, ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी खबर है अमेरिका को ईरान के जवाब के इंतजार के लिए अगले 48 घंटे अहम हैं। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को ईरान की जानिब से अहम निकात पर आइंदा 48 घंटों में जवाब की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस का मानना है कि वो ईरान के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल मफाहमती याददाश्त पर मुआहदे के करीब पहुँच रहा है, जिसका मकसद जंग का खात्मा और मुस्तकबिल में तफसीली जौहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क
तय करना है। अमेरिका को ईरान के जवाब के इंतजार के लिए अगले 48 घंटे अहम हैं। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को ईरान की जानिब से अहम निकात पर आइंदा 48 घंटों में जवाब की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस का मानना है कि वो ईरान के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल मफाहमती याददाश्त पर मुआहदे के करीब पहुँच रहा है, जिसका मकसद जंग का खात्मा और मुस्तकबिल में तफसीली जौहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तय करना है। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के दौरान शिपॉनर कॉलेज में सुपर विजिलेंस टीम ने तलबा को मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल करते हुए पकड़ लिया। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वसीम से। वसीम, कितने तलबा को नकल करते हुए पकड़ा गया और कॉलेज इंतज़ामिया का क्या कहना है? बिल्कुल, इंटरमीडिएट इम्तिहानात में सुपर विजिलेंस टीम ने शिपॉनर कॉलेज का अचानक दौरा किया है, जहाँ शिकायत थी कि बैरूनी अनासर न सिर्फ कॉलेज इंतजामिया को तंग कर रहे हैं, बल्कि दौरान इम्तिहान जो है वो तलबा मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर सुपर विजिलेंस टीम ने चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड के हमरा इस फ़कीर मोहम्मद लाखों के हमरा जो है वो दौरा किया। इस मौके पर रंगे हाथों जो है वो कुछ तलबा पकड़े गए, जबकि जो कॉलेज की इंतजामिया है उसने जो है वो इस बात में शिकायत भी की कि बैरूनी अनासर तंग। बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। कराची में ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का बड़ा और मुनज़्ज़म नेटवर्क फ़ाल होने का इंकशाफ हुआ है, जिसका दायरा-ए-कार खुसूसन पौश इलाकों तक फैल गया है। हुकाम के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ अज़ला में 73 हाई प्रोफाइल मुनशियात फरोश गिरोह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरगर्म है। डिस्ट्रिक्ट साउथ इस हवाले से सरफहरिस्त है। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, मज़ीद क्या मालूम हो सका? जी बिल्कुल, देखिए कराची में ऑनलाइन मंशियात फरोशी का बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क फाल है। कराची के पोश इलाकों में मंशियात ऑनलाइन फरोख्त होने का रुझान बढ़ने लगा है, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑनलाइन मंशियात फरोशी के हवाले से सर फहरिस्त है। कराची में 73 हाई प्रोफाइल ऑनलाइन मंशियात फरोशी के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी हैं। साउथ समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट में 51 इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश डीलर्स ताहाल मफरूर हैं। बोर्ड बेसन, दरख्शा, सिविल लाइन, सदर, गिजरी, पिलियर, क्रिप्टन समेत दीगर थानों के हदूद में ऑनलाइन मंशियात फरोशी का नेटवर्क ऑपरेट होने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि ज़ेर हिरासत मंशियात फरोश गैंग की सरगना अनमोल उर्फ पिंकी से मंशियात के नेटवर्क में शामिल दीगर कारिंदों और सवसकारों के बारे में तफ्तीश जारी है। मतलूब मंशियात फरोश डीलर्स ताहाल मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं, जबकि ज़राए की जानिब से ये बताया गया कि पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में ही तमाम तर मंशियात फरोश साउथ के इलाके में मंशियात फरोशी का धंधा कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से दावा जरूर किया जाता है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी भी मंशियात फरोशी का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल इन तफसीलात के लिए। कोयटा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान नॉर्थ में अदा की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। नमाज जनाजा में आला सियासी और अस्करी और सिविल हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने मादर वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को खिराज अकीदत पेश किया। शुरका ने बहादुर अफसर की अजीम कुर्बानी को मुल्क के अमन इस्तेहकाम के लिए एक नाकाबिल फरामोश मिसाल करार दिया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को अपने आबाई गांव में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कौम अपने बहादुर सपूतों को कभी फरामोश नहीं करेगी, जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए जान का नजराना पेश किया। किताब मार्का हक कौमी तारीख, अज़्म, कुर्बानियों और अजीम फ़तह की शानदार अक्कास है। किताब मार्का हक पाकिस्तान की अजीम जद्दोजहद, कुर्बानी, इस्तिकामत और कौमी अज़्म की एक बसरी और तारीख़ी दस्तावेज़ है। किताब में मौसर तस्वीरें, मवाद, मुनज़्ज़म दस्तावेज़ी रिकॉर्ड और स्ट्रेटेजिक गहराई के ज़रिए कौमी तारीख़ के अहम लम्हात को उजागर किया गया है। ये तसनीफ़ इस कौम के जज्बे की अक्कास है, जिसने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी का दिफा इज़्ज़त व वक़ार के साथ किया। किताब में पाकिस्तान की मज़ाहमत, इस्तिकामत और कौमी यकजहती के तारीख़ी पहलुओं को निहायत मौसर अंदाज में पेश किया गया है। किताब मार्का हक में पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, जुर्रत और साबित कदमी को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया है।
किताब मार्का हक एक लाजवाल विरसा है जो मुस्तकबिल की नस्लों को अपने कौमी शऊर और तारीखी हक़ाइक़ से रुशनास कराएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिए डॉन न्यूज़ के साथ। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। ओलिविया, शुक्रिया। Your partner in making every beginning perfect. Orient Living Innovation. लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। हर उम्र में चलने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। 100% नेचुरल हर्ब से तैयार करदा मरहबा गैस मिल, खाते जा। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। दीगर इश्तराक में शामिल हैं डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू स्टोर। जहां ममता वहां डालडा। सब्सक्राइब करें, ये ऑफर है हिट क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। New Pell Refrigerators works as good as it looks. Service Tires, Pakistan's global tire brand. सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। कितनी बड़ी फैमिली है तेरी? 7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलेनोर की कॉलिंग फैमिली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान एक बार फिर रुख करेंगे डॉन मीडिया के ज़रिए एहतमाम ब्रीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जारी है। Up north, our glaciers, the source of this entire system, are changing. Their behavior is no longer predictable. This directly affects how much water we receive and when we receive it. Across the country, we are seeing sharper extremes, floods on the one side, droughts on the other. The 2022 floods showed the scale of destruction climate change can bring, and yet other years we struggle with water shortage. Downstream, the Indus Delta is shrinking, sea intrusion is advancing, communities that once thrived are now at risk. This is reality we are dealing with. It is serious, but it is not beyond our ability to respond. Provided we act with clarity and discipline, our approach is straightforward. First, we are strengthening our water system, the means building and managing infrastructure that can store water when it is available and release it when it is needed. At the same time, we are improving monitoring using both ground system and modern technologies to ensure better decision making. Second, we are focusing on efficient
use. Agriculture consumes the largest share of water. We cannot afford wastage. Better irrigation practices, smarter cropping choices, and rational water management are no longer optional. They are necessary. Third, we are improving coordination within country. Water is a shared resource. It requires trust and cooperation amongst the provinces. We are strengthening institutional mechanism so that decisions are based on data, not perceptions. Fourth, we recognize that the Indus is a transboundary system. Stability depends on respecting established frameworks, maintaining cooperation, and avoiding unilateral actions. Water must remain an area of discipline, not dispute. Let me be clear on one point. This is not just a technical issue, it is a national priority. It is about food security, economic stability, and social balance. We also need to connect science with policy. We have the data, we have the expertise, but we must ensure that this knowledge directly informs decisions on the ground. And above all, we must keep the people at the center, the farmer, the villagers, the communities in the delta. Our policies must translate into real improvement in their lives. Ladies and gentlemen, the Indus has sustained us for generations, but it will not sustain us automatically in the future. It will require careful management, strong institutions, and consistent policies direction. The message is simple. We have capacity to manage this challenge, but we must act in a coordinated and disciplined manner. I look forward to hearing the perspective of fellow participants and to constructive a discussion on practical solutions. Thank you very much. Thank you. Thank you, Minister Saab, for such a passionate speech about the urgency of the matter. I'd like to now draw everyone's attention towards a beautifully made video that has been produced jointly by the United Nations and the Khan Foundation. And we have in the room with us the person who's actually made it, Mr. Nihal Moinuddin. If we could have a show of hand, or if you could stand up for 1 second, if we could give him a round of applause for his lovely work. If I could request the audio video team to just please the video now. It's called Melting Away.
Are temi me wan nias doran ulu ko cosa ma te yakama na zo beshale mana asul kit karwasi me hoku mani miki arni me ke phat nati thum side change niti berman sildi berman alaqami abad bisakhat uzrati han cheezen biwe जब हम ग्लेशियर्स पे या ऐसी जगहों पे बैठते हैं तो वो सब कुछ हमारी उतर जाती है थकान। हम रहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में है तो हमारा वास्ता नदी नालों से, दरियाओं से, झीलों से, चश्मों से हमारा वास्ता बहुत बचपन का ही रहा। شو بلا قصة سنيار نمربوط شو بلوم मैं शुआ के बिला का दायत जख्मात के मेरे बिला का दावे शुआ के बिला में ताजा सेल टूटीला शुआ के बिला दायत तो मैं दा खतरा के बिला का शीशा इसी तरह टक 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 दरवाजे घर पे ही थे कॉल किया बहुत सख्त सैलाब आ रहे हैं घर से निकलो जल्दी बोला हम लोग बच्चे के साथ निकल गए। इतना अचानक में आया कि हमें अपने रहने का कोई बंदोबस्त भी नहीं तो फिर भी हम खुले आसमान तले वो रात गुजरी है कैसे गुजारी है वो हमने गुजारी है वो हमें पता है। 11 घराना खत्म हो चुका है बिल्कुल सिरे से ही जमीन जो थी वो भी मतलब पूरा ही खत्म हो चुका है। The 2022 flood was devastating. Damage that caused this huge destruction in this village. During the search, we initially assessed this area, this glacier. We informed the local communities. We conducted awareness sessions, evacuation drills, safe havens were identified, and then evacuation routes were defined. So people were prepared to face this, disaster. I think we're all appreciating what a talented eye Nehal has, obviously, but I think you need a big heart to listen to all of these stories so up close. And, you can see the connection you've made. And, of course, there's a physical endurance element to going up north as well that sometimes people don't appreciate. So, kudos to you and thank you for, doing this. And it was a pleasure to witness this right now. Before I request the next speaker to come on, I'd request everyone to maintain decorum because we have, honorable speakers here. Let's keep our phones on silent and try to keep the movement to a minimum. I'd like to now invite Dr. Iram Sattar. She's seated here with me. She's a water law policy and negotiation expert, and I'm sure she'll, give us a lot to think about. I think I'm now audible. Can I just please offer my thanks also for making such a painfully evocative film, and I'm almost really honored, unfortunately, because of the the message to follow you, so we can hopefully bring some of these conversations together. So really, thank you. I think my slides are supposed to be up there. Okay. So unfortunately, just so you know, I'm not sure that you'll be able to see the entire slide, and that's just a limitation of the place that we're in. I will speak and I will ask the organizers to make sure that the PDF is uploaded to some kind of website. So you should be able to find it and you should be able to sort of dive more. I'm very available, happy for all kinds of Q&As and engagement. So let's keep the dialogue going is the point. Okay. I am going to be super on time. So what you're seeing is, obviously the first slide of what I'm presenting. Let me make sure it's all together. Okay.
I hope that you're seeing as much of that as possible. The image behind this title is called The Water Line, painted by a student and artist at Harvard College called Karen Choi. She presented it at a conference at MIT 2 weeks ago, and I was so moved that I wanted to make sure that we were able to look at it here also in the context of this conversation. It tells the story we are here to have today. Past, present, and future, separated by a single line of water. The Indus Basin, in our purposes, is that line. Between what we have inherited, what we are living through, and what we have a chance to build. I'm Dr. Iram Sattar, as you heard. I work at the intersection of water, law, and governance, and the human lives and ecosystems that depend on both. I want to speak to you today not just as an expert, but as someone who believes that we are at a genuine turning point. Many speakers have echoed this today. And the turning points require something harder than analysis. They require moral clarity and the courage to act on it. So let's begin and dive into some of this stuff. Before I speak about the data and governance, I want to ground us in something more elemental, in the imaginative work of an artist who understands instinctively what I will spend the next 15 minutes or so trying to argue. Karen Choi calls this mural the water line. Please look at it carefully. Above the water line, an imagined future. Floating cities in harmony with nature, organic architecture, wind turbines, people walking freely. And that solar punk vision. A future grounded not in extraction but in care. At the waterline is the present. Homes caught in limbo. Are they floating or are they sinking? That ambiguity is not artistic license. It is a precise description, unfortunately, as some of this movie was just showing us, of where Pakistan stands right now. Below the waterline, it's the past. It's oil, infrastructure, highways entangling the roots of the great tree that you can see there, the charging bull, the weight of the choices that have brought us here. The tree is the life force threading all three of these things together, these timelines. पाकिस्तान है, एक तरफ खुद्दामुल हरमैन हैं, एक तरफ मुफ्ती आजम फलस्तीन हैं, और एक तरफ खुद्दामुल हरमैन शरीफैन के साथ अल्लाह ने जिनको मुहाफिजुल हरमैन शरीफैन होने का एजाज दिया है, वो आज की इस तकरीब में आपके सामने है। खुद्दामुल हरमैन शरीफैन के साथ अल्लाह ने जिनको मुहाफिजुल हरमैन शरीफैन होने का एजाज दिया है, वो आज की इस तकरीब में आपके सामने हैं, और वो हमारे वजीर आजम हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उस पाकिस्तान के वजीर आजम हैं जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मोहतरम वजीर आजम साहब, हम तो मलांग लोग हैं, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा, मशाइख, आलम इस्लाम की अहम तरीन तंजीमों के कायदीन, इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन कौंसिल के कायदीन, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के कायदीन, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इन 2 माह में जिस अंदाज से उम्मत को जमा किया और जिस अंदाज से उम्मत की तौहीद को बरकरार रखा, हम सब आपको सलाम पेश करते हैं। ये पूरी उम्मत आपको सलाम पेश करती है। इसीलिए इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन कौंसिल ने जब अपनी लिजना के जरिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम और इस्लामी दुनिया से वाबस्ता है, ये बात सामने रखी कि आज आपकी खिदमत में फ़लस्तीन के मसले पर, आलम इस्लाम की वहदत और इत्तेहाद के मामले पर जो आपकी खिदमत हैं, हमारी तरफ से, पूरी उम्मत की क़यादत की तरफ से, उलमा की तरफ से, ये वफद मुफ्ती आजम फ़लस्तीन आपको एक छोटी सी दिरा, एक जायजा पेश करेंगे। इसी तरह जिस तरह आपने जंग के शुरू में जाके अपने भाई अमीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठ के इस उम्मत की वहदत और इत्तेहाद का फैसला किया और उसमें आप कामयाब हुए,
अल्लाह ने आपको कामयाबी दी। पूरी दुनिया लिख रही है कि इस्लामाबाद अर्जुल अमनी व सलाम है। ये अल्लाह ने आपके खाते में रखा था, आपको मिल गया। मैं दावत देता हूं, आलम इस्लाम में इस वक्त अमन और वहदत और इत्तेहाद के दाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम मोहतरमुल मकाम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि वो आए और छठी आलमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, वफाकी वजीर मजहबी अमूर, अखिल करीम आइना अख सफ़ीर सब मौजूद होना है। नवाफ मलिकी अखिल करीम अना अकल्लम शुवैया फिल लुगतुल अरबिया बाद लुगतुल वतनिया इंशाअल्लाह। اليوم أريد أن أتحدث عن موضوع مهم جدا وحساس، وهو رسالة الإسلام في السلام. فالإسلام دين قائم على السلام والمحبة والتسامح وخير الإنسانية، وكلمة الإسلام مشتقة من السلام، وهذا دليل واضح على أنه دين السلام. وأيضا أخي الكريم وإخوان الكريم، يعلمنا القرآن الكريم مرارا السلام والصبر والعفو، وإن حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلها مثال عملي على أن الإسلام لا ينتشر بالسيف بل بالإخلاق والتحمل والمحبة. فقد فضل صلى الله عليه وسلم أصبر في مواجهة الظلم وحسن المعاملات في مقابلة العدو. هذا نقطة مهمة جدا. والآن أنا أتكلم في اللغة الأردية. शुक्र। मेहमानान गिरामी, आज ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा जो कि हमारे बरादर ममालिक के मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं, और जिस तरह मैंने अर्ज़ की, उलमा, मशाइख़ अज़ाम और बड़े बड़े मुहद्दिस यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, छठी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर पाकिस्तान उलमा कौंसिल और इंटरनेशनल तंजीम हरमैन शरफीन कौंसिल को इस शानदार इज्तिमा के इनेकाद पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यह इज्तिमा, ये फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा इत्तेहाद उम्मत की झलक पेश कर रहा है, और दरपेश मसाइल के हवाले से यकसुई, यगानगत और भरपूर मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कौम की बेटियों और इंतहाई काबिल बच्चे और बच्चियां, मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करना चाहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा के और हमारे प्यारे दीन इस्लाम के लिए जो खिदमात आपने इंजाम दी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि बामी इत्तेहाद और मोहब्बत और मिसाली किरदार के ज़रिए इंशाअल्लाह हम इन मसाइल का हल निकालेंगे। और इसी तरीके से ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मरले पर मुनक़द हो रही है जब हाल ही में खित्ते और दुनिया में एक नई
तारीख रकम की गई, और वो ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान 11 और 12 अप्रैल को पिछले महीने मुज़ाकरात हुए, और मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आरजी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए और सालची के हवाले से पाकिस्तान की उन्होंने दावत कबूल की। ये है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों और नौजवान कौम के बेटों और बेटियों, ये है वो एतमाद, तारीखी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूं कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल और ये भी हकीकत है कि 1979 के बाद ये पहला मौका है कि अमेरिकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठी और गुफ्तगू की। मैं समझता हूं कि ये वो एक अदना सी खिदमत है जो पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये खिदमत अंजाम दी, और इसे नहायत तदब्बर, हिकमत और जोश और वलवले और अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम के साथ, पुख्ता अज़्म के साथ ये बातचीत के दरवाजे खोले। ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खित्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। और इस हवाले से जहां पर पाकिस्तान ने ये एक तारीखी रोल अदा किया, वहां पर मैं अपने इंतहाई प्यारे भाई सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस अमन मुज़ाकरात के लिए अपना पूरा किरदार अदा किया, भरपूर रोल अदा किया उन्होंने। और इसी तरह हमारे अजीम दोस्त चीन, बरादर मुल्क तुर्किया और बाकी हमारे बरादर ममालिक ने इस नेक काम में भरपूर हिस्सा डाला। और यहां पर यह बात मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि मैं यहां पर नायब वज़ीर आज़म हिसाबदार साहब का जिक्र न करूं, जिन्होंने इन मुज़ाकरात में नहायत शानदार उन्होंने किरदार अदा किया। और उससे बढ़कर यहां पर मैं फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने फरीकैन को जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया, उनको कायल किया। और फिर मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने शबाना रोज भरपूर कोशिशें की जो कि अभी तक जारी हैं, और तारीख इंशाअल्लाह इन काफिशों को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। हम सब अल्लाह ताला से दस्त पर दुआ है कि ये काफिशें, अल्लाह ताला इन काफिशों पर अपनी कमाल मेहरबानी से इनको कामयाब करे और इस पूरे खित्ते में तावन, मोहब्बत और इखलास के साथ मामलात आगे चलें। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम, यहां पर मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि हालिया आजमाइश में जहां पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर में अमन के मफाद के लिए एक नहायत मुतवाज़न और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, वहां सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की भी एक नई तारीख रकम हुई है। हरमैन शरफैन की अर्ज पाक का तहफ़्फ़ुज़, दिफा और सलामती हमें
इंतहाई मुकद्दम और जान से ज्यादा अजीज है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी दफाई मुआहदे हमारे इसी आनी अज़म की तस्दीक करते हैं और दीन इस्लाम उम्मत के इत्तेहाद, बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी पर जोर देता है और तफरका तनाज़ात को मुस्तरद करता है। हालिया बहरान के दौरान फिरका और मसलक से कतई नजर कि कौन किस फिरके से ताल्लुक रखता है, कौन किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है, पूरी कौम या 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उस वक्त तमाम मकातब फिक्र के लोग यकजहां दो कालिब थे और उसके बाद इस मौके के ऊपर पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक है और वो ये चाहती है कि अमन कायम हो और जंग का हमेशा के लिए खात्मा हो। मैं समझता हूं कि ये किरदार पाकिस्तान का इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी और सारी रहेगा और उलमा कराम की खिदमत में मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस मौके को गनीमत जानते हुए आप उम्मत में मजीद इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, अपनी शीरी जुबान से, अपने इल्म से। आप में से बेशुमार यहाँ पर हुफ़ाज़ कुरान तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े बड़े जय्यद आलम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको अल्लाह ताला ने ये खासा अता फरमाया है कि आप कुरान हकीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का जिक्र करते हुए न सिर्फ लोगों को उनके दिलों में आप घर करते हैं बल्कि वो अबदी पैगाम देते हैं जो कि हमें बार बार कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त जिस तरह कौम इकट्ठी है, मैं किसी नजरिए की यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, किसी मकतबा फिक्र की यहाँ पर बात नहीं करना चाहता। ये कहना चाहता हूँ कि पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम यकजहां दो कालिब है और वो लोग जो कि उम्मत को तकसीम करते हैं और दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, वो मुसलमान कहलवाने के हकदार नहीं हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज इसकी शदीद जरूरत है कि आप अपनी इस तगदो को, इस मेहनत को, इसमें मजीद इजाफा करें। और मैं खितामन अर्ज करूंगा कि फलस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर न सिर्फ कायम है बल्कि आज मैं उसकी फिर दोबारा तजदीद करता हूँ और मैं आप सबको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और अवाम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों और बहनों की आज़ादी और उनका कानूनी हक मिलने तक पाकिस्तान कश्मीरियों का और फलस्तीन का हमेशा साथ देता रहेगा जब तक कि वो आज़ाद नहीं हो जाता। खितामन अखिल करीम अक्सफीक ला नंसा अबदन अबदन दौलतल ममलकत अल अरबिया सऊदिया लि अजाबी हुकूमतन व शअबन बिक़ियादती खादिम हरमैन शरीफैन व वली अहद अल अमीन समूह अल अमीर मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद वकूफिहा इला जानब पाकिस्तान दौमन व अबदन फिल अज़मात नाना मसरूर जिद्दन वल्लाहु लदीन सऊदिया पाकिस्तान अखिल शकीक। शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम।
अब इस कॉन्फ्रेंस का यादगार और तारीखी लम्हा आ पहुंचा जिसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली मुमताज़ शख्सियात को यादगारी और एजाज़ी शीट से नवाजा जाएगा। अब मुफ्ती आजम फ़लस्तीन दुआ करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़ज़लुस सलाह व अतम्मुत तस्लीम अला al-हादिल बशीर सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि at-ताहिरीन व सहाबतिहि al-ghurr al-मयामीन व मन सारा अला नहजिहिम व इक्तफा अथरहुम वास्तन्ना सुन्नतहुम इला यौमिद्दीन व बअद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह إنك لا تخلف الميعاد। ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد أمة الإسلام إلى خير ما ينفعها في دنياها وآخرتها. اللهم وفق هذا المؤتمر العلمائي، هذا المؤتمر الذي يتحدث عن فضائل الإسلام ومحبة الإسلام للسلام إلى ما فيه الخير، ووفق العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك، ووفق الحكام المخلصين من أبناء هذه الأمة إلى ما فيه خير الأمة وشعوبها। इस्लाम कॉन्फ्रेंस जारी है। इस वक्त दुआ कराई जा रही है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिए डॉन न्यूज़ के साथ। है बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन। ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। AI Gaviscon, ये मैदे की इजाफी तेजाबियत को करे बेअसर और बनाए एक तह ताकि आपको मिले बदहजमी का फौरी हल। Gaviscon तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खुराक दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मालिश के मशवरे से इस्तेमाल करें। Introducing the new line of Pell refrigerators, a new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे ज्यादा रहा। अली बेटा,
जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। यूज करो ओलिविया लाइट क्रीम। ओलिविया, शुक्रिया। रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। इसकी प्राइस भी नहीं देखी। अरे ये तो अनमोल है, क्योंकि ये मरहबा इस बगौल है। कुछ चीजें होती हैं अनमोल। Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए अगले 48 घंटे अहम। अमरीका को अगले 2 दिन में ईरान की जानिब से जवाब मिलने की उम्मीद। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका और ईरान एक सफ़े पर मुश्तमिल MOU के करीब पहुंच गए हैं, जिसके तहत मुस्तकिल जंगबंदी और जौहरी मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तैयार होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द देरपा अमन में तब्दील होंगे और मज़ीद जानें ज़ाया नहीं होंगी। पाकिस्तान ने सालसी में तारीखी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल अंत तक दिन रात काविशों से फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सऊदी और चीन के किरदार की तारीफ। मोहम्मद बिन सलमान के किरदार को खराज तहसीन। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नई तारीख और रकम हुई। वज़ीर आज़म ने अर्ज़े मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ दिफ़ाई मुआहिदे की बुनियाद करार दे दिया। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर की जानिब से याबनाए होर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का खैर मकदम। तनाज़ा के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है कि ताज़ा तरीन पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के मुआहदे में मुंतज होगी। शहबाज शरीफ ने ट्रंप का इक़दाम जुर्रतमंदाना करार दे दिया। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का याबनाए होर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम मुअत्तल। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त का दावा। कहा कि देखना होगा कि मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ईरानी सदर का अमरीका को धमकियों से बाज रहने का पैगाम। वाज़ेह किया कि जबर के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इराक़ी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मुतालबात नाकाबिल कबूल करार दे दिए और कहा कि अमरीका चाहता है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और उसकी यक तरफा शराइत मान ले।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी और इसराइल की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी करार दे दी। कशीदगी कम करने के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात ज़रूरी। चीनी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका से फौरी जंग ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू। Ducks. They're isolated, they're starving, they're vulnerable, and at least 10 sailors have already died as a result of the civilian sailors. So already many nations privately and some publicly have asked the United States to help free their ships and to restore freedom of navigation in the Straits of Hormuz and this critical artery of global trade. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। जारेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। कहा कि आबनाए होर्मुज़ में तसादुम के दौरान 10 आम शहरी हलाक हुए। अमरीकी फ़ौज के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन्स और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। आबनाए होर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल नाकाबिले कबूल करार। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर अमन की उम्मीदें रोशन। तेल की कीमतों में तेजी से कमी आने लगी। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $7 करोड़ की कमी से $102 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। WTI भी 7% से ज्यादा सस्ता $95 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का बनाए होर्मस में एक और बहरी जहाज पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से टारगेट किया गया। फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दूसरे रोज मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों का दावा कर दिया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वजारत दिफा का एक्स पर पैगाम। UAE ने ईरान को जाहरे अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर क़ुरकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी के ईरानी हमले की मजम्मत UAE के मौक़िफ़ की तौसीक़ करती है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह किया कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात के ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक UAE को अमरीकियों और सहूनियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अमरीकियों और सहूनियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। पॉप लियो ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद एक बार फिर मुस्तरद कर दी। अमन का तबलीग करना चर्च का अपना मिशन करार दे दिया और वाज़ेह किया कि तनकीद की परवाह नहीं। चर्च ने हमेशा एटमी हथियारों के खिलाफ बात की है। हथियार उठाने की बजाय मुज़ाकरात करना बेहतर होता है। जंग के जरिए हथियार साजी की फैक्ट्रीज अरबों डॉलर्स कमा रही हैं। पैसा जंग पर खर्च करने की बजाय इंसानों की मदद और दुनिया से भूख के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। The most climate vulnerable countries in the world, facing increasingly severe floods, heat waves, water stress and dangerously poor air quality. डॉन मीडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम इस्लामाबाद में ब्रीथ पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस। CEO डॉन मीडिया ग्रुप नाज आफरीन सहगल लाखानी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को तेजी से बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। Flood आया was a devastating flood 25 पिछले साल अक्टूबर में। We again had to realize the consequences of the flood. 2022 के सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौसमियाती तग़य्युर के नुकसानात से बचाव के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। ग्रीन इकॉनमी की जानिब से मुंतकिल होना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ने बेपनाह नुकसान उठाया। वाज़ेह किया कि माहौलियाती तब्दीली के असरात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ 1% कार्बन पैदा करता है।
हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है कि जो कुछ आपने उस वक्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिसकैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत करार दिया और वाज़ेह किया कि मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। मार्का हक से वाज़ेह हुआ है कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह किया कि मार्का हक एक दिन मनाने की बात नहीं। भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया था। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया और सवाल उठाया कि भारत इंसाफ के असूल के मुताबिक पहलगाम वाक़े को बैनुल-अक़वामी अदालत क्यों नहीं लेकर गया। फील्ड मार्शल का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरअंगेज कार्रवाई से महसूस बनाने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान का शहरियों को निशाना बनाने का गुमराहकुन बयानिया मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। पूरे जश्न को जो है वो एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। 8 और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है। पंजाब में 8, 9 और 10 मई को मार्का हक के हवाले से तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई के लाहौर के लिबर्टी चौक पर कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को तकरीब में मरियम नवाज शरीक होंगी। वजारत इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का ऐलान। हर चाल हर फरेब हमारे पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब। हम जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारा लहू हमारी जान वतन के नाम पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। दुश्मन की कोई भी चाल, कोई फरेब या धोखादही पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर मुश्किल और हर तूफान में मुल्क के साथ खड़े हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैगाम। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक के मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। तो याद रखें कि एडवांस से जारी प्रोमो में मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तकारीब का सिलसिला जारी। पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद। असातिज़ा और तालिबानी खिलाड़ियों को खूब दाद दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड्स गूंज उठे।
बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज़े जनाजा FC बलूचिस्तान नॉर्थ के हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। आला सियासी शख्सियात, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को अपने आबाई इलाके में मुकम्मल एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 4,400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। विफाकी आईनी अदालत के दायरे अख्तियार पर तफसीली फैसला जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाक के मुताबिक इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एक दिन की कलम छोड़ हड़ताल। बेशतर महकमों में सरकारी उमूर ठप। विफाक के तहत आईनी और मुआशी मामलात पर स्पीकर की जेर सरबराही कायम कमेटी, वजीर तालीम, वजीर कानून, मुशीर खजाना और अपोजिशन लीडर भी कमेटी का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक जाती मुआलज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल अदालत के सामने पेश नहीं हुए। मंगल को दोबारा सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल तलब। बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों के हवाले से तफसीलात तलब कर ली गईं। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो गया। 3,000 से ज्यादा मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने के हेल्थ कल्चर तब्दील हुआ। पंजाब के पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। वज़ीर आला पंजाब की अराकीन असेंबली से गुफ्तगू। पाकिस्तान का मजीद LNG के लिए स्पॉट की खरीदारी का फैसला। आलमी कंपनी से 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली गईं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 7 मई तक बोलियां तलब की। उसी दिन बोलियां खोली जाएंगी। पहले कार्गो की सप्लाई 12 से 14 मई तक रखी गई है। दूसरे LNG कार्गो की सप्लाई 24 से 26 मई के लिए होगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए नापरा में दरख्वास्त दायर। नापरा की जानिब से दरख्वास्त पर 19 मई को समाअत होगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा करार दिया। लाश और जख्मी जना अस्पताल मुंतकिल। क्वेटा में पुलिस की फायरिंग से कार सवार नौजवान की हलाकत के केस में 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। कराची में ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का बड़ा नेटवर्क फाल होने का इंकशाफ। मुनज़्ज़म नेटवर्क का दायरा कारपोश इलाकों तक फैल गया। बरसों से बंद डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट बहाल हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और वजारत दिफा को खैराज तहसीन। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। महकमा मौसमियात की आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में गर्मी की शदीद लहर। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म रहने। पंजाब में गर्म मौसम के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा।
सिंध में 11 मई तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। यूएई की रियासत रासुल खैमा के बुलंदबाला पहाड़ों पर पाकिस्तानी नौजवान ने जाल पर खेलकर फिलिपाइनी खातून की जान बचा ली। पाकिस्तानी गाइड फैसी शिलमानी गर्मी की शिद्दत से बेहोश होने वाली फिलिपाइनी खातून को 3 घंटे तक कांधों पर उठाए चलकर पहाड़ से नीचे उतार लाया। और चीन के शहर शियानिंग में रंगारंग नाइट शो, ड्रोन से आसमान जगमगा उठा। रिवायती फूलों से सजे अफराद और लालटेन उठाए गार्ड्स ने झील के किनारे परेड की। फनकारों की परफॉर्मेंस से समा बन गया। That's the shot. Flawless. फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं। न्यू लक्स, जिससे मिले टैंजरीन की फ्रेशनेस और सीरम जैसा ग्लो, तो मैं करूं कुछ नया। वेट, लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर शॉट्स। मगर किसके लिए? वी गॉट द शॉट। मेरे लिए। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन। ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने। स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बेपनाह काविशें की हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की कोशिशों से बातचीत जल्द मुस्तकिल और पायदार अमन में तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा और दुनिया के लिए अमन के लिए अनथक काविशें की हैं। वजीर आजम ने अमन की काविशों पर नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। वो इस्लामाबाद में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये खिदमत अंजाम दी। पुख्ता अज़्म के साथ ये बातचीत के दरवाजे खोले। ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खित्ते में अमन कायम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए होर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम किया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लिखा कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जुर्रतमंदाना क़यादत का मुजाहरा करते हुए आबनाए होर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम बर वक्त रोकने का ऐलान किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर बरादर ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से की गई दरख्वास्त पर मुस्बत और फराख दिलाना रद्द-ए-अमल इस नाजुक मरहले में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुफाहमत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तमाम ऐसे इक़दामात की भरपूर हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है जो तहम्मुल, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल को फरोग देते हैं और उम्मीद है कि मौजूदा पेशरफ्त एक देरपा मुआहिदे की राह को हमवार करेगी जो खित्ते और उससे आगे पायदार अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए होर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम फौरी तौर पर रोक दिया और यह भी दावा किया कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि हम मुसलमान अल्लाह के सामने सर झुका सके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता।
अमरीकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया, ताहम ईरान के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की गई थी। उनका कहना था कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई। अब देखना होगा कि आया मुआहदा हतमी शक्ल देकर इस पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में अब तक 10 मलाह हलाक हो चुके हैं। बहुत से ममालिक ने अपने जहाज निकालने के लिए अमरीका से दरख्वास्त की है। वाज़े किया प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई ऑपरेशन है, अमरीका पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह और ईरान की मसलहत तशख़ीसी कौंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में अमरीकी सदर, वज़ीर दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमरीकी सदर, वज़ीर जंग और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ में एक सिफ्त मुश्तरका है। ये सब अपनी खाम ख्यालियों को कामयाबियों के तौर पर पेश करते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें नहीं झुका सकता। इराकी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियाँ देना बंद कर दे। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफी और लाकानूनियत है। ये सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीर मुकद्दम का आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमरीकी सदर की पोस्ट को शेयर करते हुए फारसी में लिखा कि जो शख्स एक ही गलती को दोहराता है वो आखिरकार पछताता है, और फिर अंग्रेजी में लिखा वंस बीटन ट्वीट्स शाय। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत में ख़ित्ते में सफारतकारी का रास्ता खुले रहने पर जोर दिया है। अब्बास इराक़ची के मुताबिक इलाक़ाई ममालिक के दरमियान मुसलसल राबता और मुज़ाकरात ज़रूरी हैं ताकि कशीदगी में इजाफा न हो और सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से बचाई जा सके। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के साथ मुमकिन अमन मुआहिदे के इशारों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% से ज्यादा कमी के बाद तकरीबन $103 फी बैरल तक आ गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन 7% गिरकर $95 फी बैरल हो गई। इससे काबिल दोनों बेंचमार्क्स में तकरीबन 4% की कमी देखी गई थी। इस बारे में आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुमकिन अमन मुआहिदों के इशारों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% से ज्यादा कमी के बाद तकरीबन $103 फी बैरल तक आ गई है। मशरक़ी वुस्ता में एक बार फिर अमन की उम्मीदें रोशन होने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आज दौरान कारोबार 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,72,000 पर ट्रेड हो रहा है। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में एक अहम सिफारती मुलाकात का आगाज हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बीजिंग में चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात की। बीजिंग में होने वाली मुलाकात के दौरान चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक फैसला कुन मोड़ पर है और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ही कशीदगी कम करने का मुअस्सर रास्ता है। मुलाकात में चीन ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की काविशों के लिए अपनी हिमायत का आदा किया और सिफारती हल पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने चीन के मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि बीजिंग का मजबूत मौक़िफ़ काबिल कद्र है।
बहरी जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक आज भी आबनाए हुर्मुज़ के तरफ जहाज़ों की नकलो हरकत निहायत कम है। तनाज़े के दौरान इलाके में जहाज़ों की दुरुस्त नकलो हरकत की तस्दीक मुश्किल रही क्योंकि बाज़ जहाज़ों ने अपने ट्रांसपोर्टर बंद कर दिए हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में खलल आ रहा है और मुअत्तबर मालूमात मिलने में मुश्किलात का सामना है। मामूल के हालात में दुनिया के तेल और LNG का तकरीबन 5वां हिस्सा इस आबी गुजरगाह से गुजरता है। दुनिया की तकरीबन 1/3 खाद मशरक़े वुस्ता के लिए खुराक, अद्वियात और टेक्नोलॉजी जैसी अहम दरामदात भी यहाँ ही से जाती हैं। न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा है और बहुत सी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। पामोलिव नेचुरल्स, न्यू लुक, नेचुरल ग्लो। न्यू डव इंटेंस रिपेयर, जिसमें है 8% बायो प्रोटीन फ्यूजन, पाकिस्तान में पहली बार बालों की गहराइयों तक जाए एंड रिवर्सेस अप टू 3 years of damage with न्यू डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है हाई क्वालिटी PCB, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। Introducing the new line of Pell refrigerators, a new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे ज्यादा रखा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज V5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी *400# मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। सीधी सादी खुशी है सुपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना। इसमें है हाई क्वालिटी PCB, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। Introducing the new line of Pell refrigerators, a new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. पाकिस्तान उल्मा कॉन्फ्रेंस से इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार खिताब कर रहे हैं। इस्लामी उम्मा के उनका एक बहुत बड़ा फाल इस वक्त जिम्मेदारी भी है और रोल भी है, और रोल है उम्मत को इकट्ठा रखना। और वो मैं नहीं कह रहा, कुरान हकीम में आप सब माशाल्लाह अपने अपने ताई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, आपका इल्म कई 100 गुना मुझसे ज्यादा है, लेकिन अल्लाह करीम ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थामे रखो तो फिर ही उसमें कामयाबी है। और उसको जो आपकी जो मेहनत है वो उस रस्सी को सबको थामने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है और कर रही है। इस वक्त आपने देखा कि पिछले साल जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, एक बिल्कुल बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया, जिसके नतीजे में मार का हक हुआ, बुनियानुल मरसूस हुआ,
हम सब ने, पूरी कौम ने, दुनिया ने देखा कि वो जो कुरान हकीम में है कि एक शख्स जो है वो 10 लोगों पे हावी होगा, यानी 1 to 10, आपने देखा कि उसका अमली मुजाहरा आपने पाकिस्तान में देखा। जो हमारी जो क़यादत है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बलबला अंगेज, उनकी बहादुर अफवाज की सरबराही में, और फिर एयर चीफ बाबर सिद्धू साहब, और फिर नेवल चीफ, इन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फतह नुसरत अगर आपके साथ हो तो ये नहीं कि कितना बड़ा आपका बंदे मुकाबिल जो है वो दुश्मन है या जिससे आपका मुकाबला है, अल्लाह ताला आपको फतह नुसरत देते हैं, और आपको अल्लाह के फजल करम से फतह नुसरत मिली। पाकिस्तान अपना फर्ज जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह कोशिश कर रहा है। जैसे हजरत ने फरमाया कि फॉरेन ऑफिस के हवाले से मैं समझता हूं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी मसला इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ जो बात होती है दुनिया में, हम उसके हवाले से भरपूर अपना पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है। 2 साल पहले OIC का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इजलास हुआ बेंजोल में, गैम्बिया, उसमें हमने सबको कन्विंस किया कि सेक्रेटरी जनरल के पास एक परमानेंट सीनियर एम्बेसडर होना चाहिए, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से सारी दुनिया में अपनी जिम्मेदारी इस्लामी मुआलक के हवाले से पूरी करे। उसके बाद हमने UN, यूनाइटेड नेशन में, कौम मुत्तहिदा में हमने एक परमानेंट दिन मनाने का वहां एग्री करवाया। मार्च में वो दिन मनाया जाता है, और फिर UN के सेक्रेटरी जनरल का भी एक परमानेंट एक रिप्रेजेंटेटिव इस्लामोफोबिया के हवाले से यानी उसको अपॉइंट किया गया। ये इसलिए है कि कौम मुत्तहिदा जो हमारी तंजीम है, जो 57 ममालिक की एक सबसे दुनिया में दूसरी बड़ी ये तंजीम है कौम मुत्तहिदा के बाद, उसको हम कोशिश करते हैं कि जितना फाल कर सके अपने अपने यानी किरदार से, अपनी कंट्रीब्यूशन से, अपनी एक्टिविटी से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त वो काम करते हैं। उसका फवायद क्या है कि आपने देखा कि फलस्तीन की बात हुई, ये फलस्तीन हो, जम्मू कश्मीर हो, ये वो चीजें हैं जिनका हल जो है वो हमारी सबसे अव्वल प्रायोरिटी थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। फलस्तीन के हवाले से हमने पिछले साल जब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो 5 इस्लामी ममालिक, 5 मैं वुड से कि अरब ममालिक और 3 इस्लामी ममालिक, सऊदी अरेबिया, उर्दन, फिर अमारात, कतर और जो है हमारा जॉर्डन, ये, और फिर तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, इन ममालिक ने मिलके फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की, उनको एंगेज किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वहां खून रेजी बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उसमें बेपनाह कमी आई, और वो कोशिश जारी और सारी है। 8 ममालिक इसके हवाले से OIC की स्पेशल मीटिंग्स भी हुई। इसी तरह हमें जो कश्मीर का मामला है, जब तक कश्मीर उनके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक और उन कश्मीरियों की अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक रेफरेंडम के जरिए आज़ाद नहीं होगा, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि साउथ एशिया में टेंशन रहेगी। हमें चैलेंज करके हमारे दुश्मन ने देख लिया, अल्लाह ताला ने फजल करम किया आपकी दुआओं से और बहादुर क़यादत से। सैयद आसिम मुनीर और जैसे मैंने कहा एयर चीफ और नेवल चीफ, उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता।
हाल ही में आपने देखा कि ईरान के ऊपर जब हमला हुआ इसराइल का, तो पाकिस्तान ने 28 फरवरी से लेकर आज तक अपना भरपूर किरदार अदा किया और हमने 47 साल के बाद यूएस को और ईरान को एक ही मेज पे ला के बैठा दिया। 47 साल के बाद आज तक जितने उनके मुज़ाकरात हुए हैं, पिछले साल भी हुए ओमान के जरिए, इस साल भी हो रहे थे, वो तमाम इनडायरेक्ट बिला वास्ता होते थे। वो इलादा बैठे होते थे, दूसरी तरफ एक पार्टी इलादा बैठी होती थी, और जो ओमान के जो पिछले 2 साल में हो रहा था, उनके वजीर खारजा फिर वहां से लेके उनके प्रपोजल उधर जाते थे, उनका जवाब लेके उधर जाते थे। इस दफा हमने कहा आप इकट्ठे बैठे और बात करें। उनकी शर्त ये थी कि पाकिस्तान फिर भी साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी साथ बैठा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो जिम्मेदारी मुझे, सैयद आसम मुनीर साहब को और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको आसिफ मलिक साहब को दी, और हमने 21 घंटे उनके साथ बगैर किसी ब्रेक के उनके साथ उनको एंगेज किया। जो आप देख रहे थे कि दर्जनों एक दूसरे के ऊपर डेली अटैक्स हो रहे थे, ईरान के ऊपर इसराइल के अटैक्स होते थे, और ईरान जाहिर है कि जवाबन वो फिर मिडल ईस्ट में, वो भी मुस्लिम ममालिक है, वहां अटैक कर रहा था। वो कहते तो थे कि हम जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया अपने भाई ईरान को, अपने पूरी दिल के साथ मुसलमान उम्मत का एक हिस्सा होने के नाते हमने पूरी कोशिश की कि ये कम से कम आपस में जो कुछ हो रहा है ये बंद हो, और साथ हमने ये भी बावर करवाया कि सऊदी अरेबिया के लिए हमारी जो पाकिस्तानी है वो उसकी जान भी हाजिर है हरमैन शरीफैन की हुर्मत की पासदारी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह किंग सलमान को अल्लाह ताला ने और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब को ये एक सादत बख्शी कि वो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क कहते हैं, कि वो कस्टोडियन है, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये सादत बख्शी कि हम मुहाफिजीन हैं, हम खादिम हैं उन हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए। और ये मैं नहीं, ये 24 करोड़ अवाम की आवाज है। जैसे भी बात हुई कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब ये बात आती है हरमैन शरीफैन की, जब ये बात आती है मक्का मुकरमा की, जब बात आती है मदीना मुनव्वरा की, तो हर पाकिस्तानी उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हर लम्हा तैयार होता है। ये हमारी एक तारीख है। माजी में आपने देखा, जब आज से तकरीबन 40 साल पहले आपको याद होगा जब हरम शरीफ पे कुछ मुर्तदों ने कब्जा किया, मैं उस वक्त हरम शरीफ में मौजूद था, मैं पहुंचा ही था बल्कि, और मुझे वो सारा वाकया मैंने देखा हुआ है। और पाकिस्तानियों ने फिर जो अपनी उस पे अपना हिस्सा डाला, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वहां रूटीन के मुताबिक तवाफ शुरू हुए और उम्रा और फिर हर सादत। तो ये मैं समझता हूं कि जो पिछले साल हमारा एक तारीखी रिटर्न मुआहदा हुआ है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, वो वैसे तो वो दिल से हमेशा से पाकिस्तान उस पर अमल करता रहा है, लेकिन दोनों ममालिक ने यह सोचा कि इसको हम लिख के भी एक तारीखी एक मुआहदा होगा, क्योंकि मुआहदे भी जिंदगी में होते हैं, उसका जिक्र भी होता है, तारीख भी बनती है। सुलह हदैबिया भी एक मुआहदा था जिसका कुरान हकीम में जिक्र है। तो ये जो सादत थी अल्लाह ताला ने इस हुकूमत को बख्शी कि हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट
हमने सऊदी अरेबिया से पिछले साल सितंबर में किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त जो फ्री कैंप थे उनको ये जरूर बताया कि प्लीज सऊदी अरेबिया हमारे लिए नो गो एरिया है कि कोई भी उसकी तरफ मैली आंख भी उठा के देखे। हम पाबंद हैं इस मुआहदे के तहत। और शायद आपको मालूम होगा इस वक्त भी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, हमारा स्क्वाड्रन एयरफोर्स का वहां मौजूद है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप वापस आ रहा हूं कि जो उलमा कराम का जो एक पूरी उम्मत को इकट्ठा करने का काम है, वो ये कायदीन जो यहां बैठे हैं, आप बैठे हैं, वो एक बहुत वक्त की जरूरत है। 57 ममालिक है, 57। अल्लाह ताला ने इनको हर चीज दी हुई है। 2 अरब आबादी है। पाकिस्तान के जरिए अल्लाह ताला ने इनको एटमी कुव्वत बनाया हुआ है इस्लामी उम्मत को। पाकिस्तान के जरिए अल्लाह ताला ने इस 57 ममालिक को मिसाइली कुव्वत बनाया हुआ है। सिर्फ जो चाहिए वो हमारा इत्तेफाक, इत्तेहाद और मिलकर तमाम दुनिया में एक उम्मत के हवाले से और उम्मत होके उनसे डीलिंग करनी है। हम ये नहीं करते कि हमने कोई चढ़ाई करके कोई, उनके भी अपने हकूक हैं और कुरान हकीम हमें अपने सबके हकूक बताता है। अपने मुल्क के अंदर भी जो माइनॉरिटी होती है उसके भी हकूक है, जो अक़लियत होती है। तो इस्लाम तो एक क़यामत तक के लिए हमें एक ज़ाब्ता हयात मिल चुका है कुरान हकीम की शक्ल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो उनकी ज़िंदगी है, अहादीस हैं, वो हमारे लिए एक मशअल राह है हमेशा के लिए। तो इसलिए ये जब उम्मत इकट्ठी होकर काम करेगी तो इंशाअल्लाह इसको कोई दुनिया की ताकत इसको शिकस्त या इसको यानी नीचा नहीं दिखा सकती। पाकिस्तान जो है, मैं जैसे अर्ज किया कि अल्लाह ताला का खास रहमत है, करम है और हम सब की खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने एकेडमी कुव्वत बनाया, एक मिसाइली कुव्वत बनाया। मैं अपने 40 साल सियासी लाइफ में मैं इन दोनों प्रोग्राम्स के साथ बड़ा क्लोजली अटैच रहा हूं। ये भुट्टो साहब ने शुरू किया, फिर अपना हर गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया और फिर अल्लाह ताला ने मियां नवाज साहब को ये सादत बख्शी कि 28 मई 1998 को वो इस जो अल्लाह ताला ने जो एक नेमत दी है उसको टेस्ट कर सके। मैं उनके साथ था। 28 मई 1998 को सरताज अजीज साहब मरहूम साहब थे। हम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो अब है उस वक्त नेशनल डिफेंस कॉलेज होता था और इसी तरह की एसोसिएशन मेरी मिसाइल के प्रोग्राम के साथ रही है 1999 ऑनवर्ड्स। तो ये है, ये अल्लाह ताला ने हम पे बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम किया है और जो हमारी मोहब्बत, जो हमारा एक रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है सऊदी अरेबिया के साथ ख़ुसूसन और तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ, वो इस हुकूमत की तरजीह है कि हमने उम्मत के साथ चलना है, उम्मत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उम्मत की जो मामलात है एक दूसरे के साथ अफ़ाम और तफ़हीम से करने हैं। इसी स्पिरिट के तहत आपने देखा कि अभी जो यूएस, ईरान और फिर मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा था, जो हमारी कोशिशें मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की क़यादत में और फिर बेपनाह मेहनत जनाब सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान के जो हैं और फॉरेन ऑफिस, हमारी पूरी कोशिश थी कि उनको डायरेक्ट टॉक्स पे राजी करना, सीज फायर करवाना। जो हुई, पहले एक हुई, फिर उसको एक्सटेंड हुआ, फिर दूसरी एक्सटेंशन, फिर तीसरी एक्सटेंशन। कम से कम जो कई 100 लोग रोज शहीद हो रहे थे और हजारों में तादाद जा रही थी, वो बंद हो गई। अब आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला, हमारी कोशिश है कि ये सीज फायर परमानेंट एक जंग बंदी में खत्म हो और जो मुसलमान ममालिक हैं अगर उनमें को आपस में दिल में कुछ कोई गैप आ गया है, कोई फासला हुआ, वो दोबारा जुड़े, एक दूसरे के साथ वही मोहब्बत हो
और मैं इसका बिलीवर हूं कि अगर हम मिलके उम्मत के तौर पे अपनी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और पाकिस्तान इस हवाले से ये हुकूमत बड़ी क्लियर है, ये लीडरशिप मियां शहबाज शरीफ हो या उनकी हुकूमत हो, सैयद आसिम मुनीर हो और या हमारे नेवल चीफ हो और हमारे एयर चीफ हो, ये सब लोग एक ही पेज पे हैं। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ में पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, इसके लोगों की अपनी यानी बेहतरी के लिए, इसके उनकी तरक्की के लिए दुआ फरमाएं और अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत जो है हरमैन शरीफैन, सऊदी अरेबिया और अपने मुस्लिम ममालिक के साथ अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी इज्तिमाई काविशों से गज़ा जंगबंदी मुमकिन हुई और 47 साल बाद दोनों फ़रीक़ैन को मेज़ पर लाने में कामयाब हुए। और उन्होंने कहा कि हम अमरीका को ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए हैं। कोशिश है कि ये मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। और बहुत सी खबरें हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद पाए हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैस कैश ऐप खोलो, प्लान सिलेक्ट करो, हो गया जैस कैश इंश्योरेंस। सोचो समझो कर लो। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। $7 करोड़ मेरे अकाउंट में आएगा, फिर तू जाएगा। 7 करोड़? 7। चल, फैमिली को कॉल मिला। हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो अंकल, वो थोड़े पैसे चाहिए थे। खाला, आप जितने आसानी से कर सकती हैं उतने कर दे। चंदा इकट्ठा कर रहा है क्या? नॉट फेयर बट यार, जिंदगी का सवाल है, अब तो मेरा उधार वापस कर दे। ये किसे उठा रहा है? शिदे, तू? कितनी बड़ी फैमिली है तेरी? 7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलेनोर की कॉलिंग फैमिली। यूफोन और टेलेनोर की कॉलिंग फैमिली मिलकर हो गई मोर देन 7 करोड़। ओह, तो अब यूफोन से टेलेनोर और टेलेनोर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With यूफोन and टेलेनोर, call more than ever before. ये बात यार, तू सबसे मांग रहा था, भाई से ही मांग लेता। क्या? मैं भी तो तेरी फैमिली हूँ। यूफोन या टेलेनोर एक ही बात है। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन, ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। बच्चों के हेल्थ की बात हो या पूरी फैमिली के टेस्ट की, एक माँ होने के नाते स्टैंड तो मुझे ही लेना पड़ता है। ऐसे में मेरी स्मार्ट चॉइस है डालडा स्टैंड अप पाउच, क्योंकि ये है इजी टू पोर और इजी टू स्टोर, जो बनाए अब कुकिंग और भी आसान। बेहतरीन टेस्ट के साथ डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू स्टोर।
जहाँ ममता वहाँ डालडा। Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। न्यू एंड इम्प्रूव्ड लाइफ बॉय विटामिन ई और ग्लिसरीन के साथ स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि लाइफ के हर टेस्ट के लिए स्किन रहे रेडी। स्किन रेडी तो हम लाइफ रेडी। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे ज्यादा रहा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी *400# मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। नए मुल्क जाने की परेशानी है या किसी से दूर होने की? उसने कहा है तुम्हारा इंतजार करेगी। वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारे दादा की तरह। हर उम्र में चलने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद 5 हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैज कैश ऐप खोलो, प्लान सेलेक्ट करो, हो गया जैज कैश इंश्योरेंस। सोचो, समझो, कर लो। न्यू एंड इम्प्रूव्ड लाइफ बॉय विटामिन ई और ग्लिसरीन के साथ स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि लाइफ के हर टेस्ट के लिए स्किन रहे रेडी। स्किन रेडी तो हम लाइफ रेडी। Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे ज्यादा रहा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी *400# मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन।
दे आए गैविस्कॉन। ये मैदे की इजाफी तेजाबियत को करे बेअसर और बनाए एक तह ताकि आपको मिले बदहजमी का फौरी हल। गैविस्कॉन। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खुराक दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मालिश के मशवरे से इस्तेमाल करें। बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। यूज करो ओलिविया लाइट क्रीम। ओलिविया, शुक्रिया। Pakistan's biggest all-new dynamic AI inverter AC, self-cleans with 5th gen auto clean, sterilizes with advanced UV. Pakistan's biggest all-new dynamic AI inverter AC, self-cleans with 5th gen auto clean, sterilizes with advanced UVC, eliminating bacteria for cleaner, safer air. Because every breath matters. Orient, living innovation. बदहजमी, तेजाबियत और गैस का नहीं डर। ट्राई करें मरहबा गैस निल। 100% नेचुरल हर्ब से तैयार करदा मरहबा गैस निल, खाते जाओ। Introducing the new line of Pell refrigerators, a new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. नेक्स्ट। वो निहारी को वाइप कर देगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। 5 साल की वारंटी के साथ रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है हमारे जाबाज मुहाफिज जुर्रत की तस्वीर। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द देरपा अमन में तब्दील हो जाएंगे और मज़ीद जानें ज़ाया नहीं होंगी। पाकिस्तान ने सालसी में तारीख़ी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल अंत तक दिन रात कोशिशों से फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सऊदी और चीन के किरदार की तारीफ। मोहम्मद बिन सलमान के किरदार को खिराज तहसीन। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नई तारीख रक़म हुई। वज़ीर आज़म ने अर्ज़ मुक़द्दस के तहत दिफ़ाई मुआहदे की बुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में इंसानी जानें बचाने में कामयाब रहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सिफारती काविशें जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर उसूली मौक़िफ़ दो टोक है। इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में उलमा काउंसिल कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुस्तकिल जंग मुआहदे की उम्मीद। पेशरफ के लिए अगले 48 घंटे अहम। अमरीका को अगले 2 दिन में ईरान की जानिब से जवाब मिलने की उम्मीद। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका और ईरान एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के करीब पहुंच गए, जिसके तहत मुस्तकिल जंगबंदी और जौहरी मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तैयार होगा। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर की जानिब से आबनाए होर्मोस में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का खैर मकदम। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है कि ताज़ा तरीन पेशरफ्त ख़ित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के मुआहदे पर मुंतज होगी। शहबाज शरीफ ने ट्रंप का इक़दाम जुर्रतमंदाना करार दे दिया। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का बनाए होर्मोस में फौजी ऑपरेशंस
आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान, प्रोजेक्ट फ्रीडम मुअत्तल, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ हतमी मुआहिदे के लिए नुमायां पेशरफ्त का दावा और कहा कि देखना यह होगा कि मुआहिदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ईरानी सदर का अमरीका को धमकियों से बाज रहने का पैगाम, वाज़ेह किया कि जबर के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मुतालबात नाकाबिल कबूल करार दे दिए और ये कहा कि अमरीका चाहता है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और उसकी यकतरफा शराइत मान ले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी हममंसब से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी और इसराइल की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी करार दे दी। कशीदगी कम करने के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका से फौरी जंग ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। जैरेड कुशनर और विटकोफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। कहा कि आबनाए होर्मुज़ में तसादुम के दौरान 10 आम शहरी हलाक हुए थे। अमरीकी फ़ौज के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। आबनाए होर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल नाकाबिल कबूल करार। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर आम की उम्मीदें रोशन। तेल की कीमतों में तेजी से कमी आने लगी। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $7 कमी के साथ $102 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा है। WTI भी 7% के इजाफे से सस्ता हुआ, $95 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का आबनाए होर्मुज़ में एक और बहरी जहाज पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर नुकसानात की तफसीलात मालूम हो नहीं सकी। मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरे रोज भी मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों का दावा। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वज़ारत दिफा का एक्स पर पैगाम। UAE ने ईरान को जारे अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर क़ुरकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की ईरानी हमले की मजम्मत UAE के मौक़िफ़ की तौसीक़ करती है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक UAE को अमरीकियों और सहूनियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अमरीकियों और सहूनियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। पोप लियो ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद एक बार फिर मुस्तरद कर दी। अमन की तबलीग चर्च का मिशन करार। वाज़ेह किया कि तनकीद की परवाह नहीं, चर्च ने हमेशा एटमी हथियारों की बात की। हथियार उठाने की बजाय मुज़ाकरात करना बेहतर होता है। जंग के जरिए हथियार साजी की फैक्ट्रीज अरबों डॉलर्स कमा रही हैं। पैसा जंग पर खर्च करने की बजाय इंसानों की मदद और दुनिया से भूख के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। डॉन मीडिया के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में ब्रीफ पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस CEO डॉन मीडिया ग्रुप नाज आफरीन सहगल लाखानी ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को तेजी से बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। साल 2022 की सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ब्रीफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मौसमियाती तग़य्युर के नुकसानात से बचाव के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। ग्रीन इकॉनमी की जानिब मुंतकिल होना वक्ती अहम ज़रूरत करार दिया।
वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। ब्रीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ने बेपनाह नुकसान उठाया। वाज़ेह किया कि माहौलियाती तब्दीली के असरात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ 1% कार्बन पैदा करता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत करार दिया। वाज़ेह किया कि मार्का हक की अजीम फतह ने पाकिस्तान को भारत की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। मार्का हक से वाज़ेह हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह किया कि मार्का हक का एक दिन मनाने की बात नहीं। भारत ने पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। सवाल उठाया कि भारत इंसाफ के उसूल के मुताबिक पहलगाम वाक़े को बैनुल अक़वामी अदालत क्यों नहीं ले गया। फील्ड मार्शल का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरअंगेज कार्रवाई से महफूज बनाने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान का शहरियों को निशाना बनाने का गुमराहकुन बयानिया मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। पंजाब में 8, 9 और 10 मई को मार्का हक के हवाले से तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई को लाहौर के लिबर्टी चौक पर कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को तकरीब में मरीम नवाज शरीक होंगी। वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी का ऐलान। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। दुश्मन की कोई भी चाल, कोई फरेब या धोखाधही पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हर मुश्किल और हर तूफान में मुल्क के साथ खड़े हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैगाम। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। प्रोमो जारी। तो याद रखेंगे उन्वान से मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तकारीब का सिलसिला जारी। पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद। असातिज़ा और तलबा ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड गूंज उठा। बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा FC बलोचिस्तान नॉर्थ के हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। आला सियासी शख्सियात, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को अपने आबाई इराक़ी में मुकम्मल एजाज के साथ सिपुर्द खाक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वफाकी मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ 1 दिन की कलम छोड़ हड़ताल। बेशतर महकमों में सरकारी उमूर ठप। वफाक के साथ आईनी और मुआशी मामलात पर स्पीकर की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर तालीम, वज़ीर कानून, मुशीर खजाना और अपोजिशन लीडर भी कमेटी का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक ज़ाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल अदालत के सामने पेश नहीं हुए। मंगल को दोबारा सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल तलब। बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों के हवाले से तफसीलात तलब। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू। 3000 से ज्यादा मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर तब्दील हो गया। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। वज़ीर आला पंजाब का अरकान असेंबली से इजहार ख्याल।
पाकिस्तान का मजीद LNG के लिए स्पॉट खरीदारी का फैसला। आलमी कंपनी से 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली गई। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 7 मई तक बोलियां तलब की। उसी दिन बोलियां खोली जाएंगी। पहले कार्गो सप्लाई 12 से 14 मई तक रखी गई है। दूसरे LNG कार्गो सप्लाई 24 से 26 मई के लिए होगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए नापरा में दरख्वास्त दायर। नापरा की जानिब से दरख्वास्त पर 19 मई को समाअत होगी। कोयटा में पुलिस की फायरिंग से कार सवार नौजवान की हलाकत के केस में 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। और कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई होने लगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म। पंजाब में गर्म मौसम के साथ गर्द आलूद हवाएं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। शॉट फ्लॉलेस। फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं। न्यू लक्स, जिससे मिले टैंजरीन की फ्रेशनेस और सीरम जैसा ग्लो, तो मैं करूं कुछ नया। वेट, लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर शॉट्स। मगर किसके लिए? वी गॉट द शॉट। मेरे लिए। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन। ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाखर। हेडलाइंस आपने देखी, अभी देख सकेंगे आप प्रोग्राम जरा हट के। देखते रहिए डॉन न्यूज़। आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह खान और मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहजेब जिलानी। अमराती वजारत दिफा ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि आज दूसरे दिन भी UAE मिज़ाइल और ड्रोन हमले झेल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 15 मिज़ाइल और 4 ड्रोन आए थे, ताहम ईरान ने अब तक कल के हमले की बाज़ाब्ता ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह जनरल डॉन केन ने पेंटागन की हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि खलीज में हालिया ईरानी हमलों का मयार इस कदर संगीन नहीं है कि उनसे मौजूदा जंग बंदी टूट जाए। बकौल जनरल केन, ईरान इस वक्त खलीजी जहाज़ रानी और हमसायों को हिरासा करने की कोशिश कर रहा है। अब तक ईरानी 9 कमर्शियल जहाज़ों पे फायरिंग कर चुके हैं, 2 जहाज़ों को पकड़ चुके हैं। अमरीकी फ़ौजों पे 10 से ज़ायद बार हमले कर चुके हैं। ताहम अमरीकी बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने हर बार हमला आवरों को पसपा होने पे मजबूर कर दिया है। वज़ीर जंग पीट हेग्जिथ का कहना है कि जहाज़रानी की हिफाजत के लिए फ़िलहाल ईरानी फ़ज़ाई और बहरी हदूद में दाखिल होना ज़रूरी नहीं है। मुबसरीन कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से खलीज में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक मुतबादिल रास्ता खोलना ईरानी दावे को कमज़ोर करने की कोशिश है, जिसका रद्द अमल बराह रास्त अमेरिका से टक्कर लेने की बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात पे हमलों की शक्ल में निकल रहा है। अगर अमेरिका ये मुतबादिल रास्ता खोले रखने में कामयाब रहता है तो उससे आबनाए हुर्मुज़ पे ईरानी सौदेबाजी की पोजीशन कम
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत तवानाई तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत शुमारी कमेटी का इजलास हुआ है। इसहाक डार ने हुकूमत की जानिब से पहले ऐलान करदा मुख्तलिफ किफ़ायती इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। हुकूमत की जानिब से किफ़ायती इक़दामात पर अमल दरामद करवाने पर जोर दिया गया है। इसहाक डार ने पहले ऐलान करदा मुख्तलिफ किफ़ायती इक़दामात पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया है। इससे मुताल्लिक़ आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत तवानाई तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत शुमारी कमेटी का इजलास हुआ है और उन्होंने खुसूसी हिदायत जारी की हैं कि जो किफ़ायती इक़दामात थे उन पर अमल दरामद करवाया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत तवानाई तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत शुमारी कमेटी का इजलास हुआ। मार का हक़ 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवक़ार तक़रीब का सिलसिला जारी। जश्न फतह की मुनासबत से पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद हुआ। असातिज़ा और तलबा ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड गूंज उठा। तक़रीब के अख्ताम पर मेहमान ख़ुसूसी की जानिब से नुमायां खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफीज़ तक़सीम की गईं। मैच का मकसद मार का हक़ की कामयाबी का जश्न मनाना, तलबा और फौज के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ देना था। मार का हक़ 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर के तालीमी इदारों में जश्न फतह की तक़रीबात हुई। तलबा ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की। मिली नग़मों और टैबलोस के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तलबा ने मार का हक़ की कामयाबी पर पाक फौज को ख़िराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के हक़ में पुरजोश नारेबाजी की गई। मार का हक़ के हवाले से सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि मार का हक़ में भारतीय खुफिया एजेंसीज की पुष्पनाही पर मबनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का मकसद पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त करना था। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को हर लिहाज से हर सतह पर बेनकाब किया और इसके नतीजे में भारत पूरी दुनिया में कमज़ोर रियासत के तौर पर सामने आया। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मार्का हक़ हुआ उसमें पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मीडिया का जो किरदार था वो बहुत अहम था, क्योंकि आज का जो दौर है इसमें जो डिसइंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज़, उसको एक जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इंडियन मीडिया है उसने बहुत सोच समझ कर अपनी फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की गाइडेंस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाई, जिसका मकसद पाकिस्तानी अवाम के हौसले तोड़ना था। और इस मौका पे जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने जो इंडिया की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन थी उसका भरपूर मुकाबला किया और उसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी उस झूठ का भांडा फोड़ा। आज पूरी दुनिया में भारत जो है वो एक झूठ बोलने वाली कमज़ोर रियासत के तौर पे बेनकाब हो चुका। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल होने पर मार का हक़ की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी कर दिया गया। तो याद रखें कि उन्वान से जारी प्रोमो में मार का हक़ की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया है। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर होने वाली कौमी बुनियाद मरसूख तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand beautiful planes were shot down. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। मार का हक़ को 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिस शख्सियात ने पाक फौज को जबरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया। शोबिस शख्सियात ने मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों और अजीम कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मजबूत फौज, महफूज पाकिस्तान। शोबिस शख्सियात ने मुसल्लह अफवाज की मुल्क की सलामती की ज़ामिन करार दिया। मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो वो सरहदों पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा फैसल भाई आप लोग चल करें, हम लोग देख लेंगे इनको। वो एक ऐसा जुमला था जो मैं जानता था कि जिस खारस के साथ पाक फौज अगर ये बात कर रही है तो कुछ तो है। तो वो जो ईमान की एक मैं कहूँगा पुख्तगी है, या वो जो एक ईमान पे यकीन है हमने, जो अल्लाह पे यकीन है हमें, वो असल में जीत है हम। जिस तरह से हमारी पाक आर्मी, पाक फौज ने
हम सबके लिए ये जो काम कर दिया, या अब हमें सबको फख्र होता है कि हमारे एक पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, हमारी अपनी एक इज्जत बढ़ गई पूरी दुनिया की नज़रों में। और आजकल भी जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है दुनिया के हालात ठीक करने में, सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच आर्मी बिहाइंड अस। हम हैं बुनियादुल महसूस, हमसे लड़ना बढ़ना नहीं है, हमसे प्यार करें, हम प्यार करने वाले लोग हैं। लड़ेंगे तो देखें स्कोर जो है वो अच्छा नहीं होगा, बुरी बात है, खर्चा हो जाएगा आप लोगों का, बेइज्जती भी होगी। तमाम पाकिस्तानियों ने जो है वो इस दिन पे बड़ा फख्र किया है और 6-0 की बहुत सारी मीम्स भी बनी है, बहुत कहते हैं ना एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया है। और नो डाउट पाकिस्तान ने इस दिन जो है वो सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया है कि उसकी शान क्या है और उनके साथ कोई भी जो है वो जंग लड़नी नहीं चाहिए, और अगर लड़नी है तो आपको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डेंट्रो 1 ने पाकिस्तान आर्मी कैडेट सरदार इरसाम अब्बास PM 152 लॉन्ग कोर्स को पासिंग आउट परेड के मौके पर ओवरऑल बेस्ट फॉरेन कैडेट करार दिया। यह एजाज़ तमाम तरबियती शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले गैर मुल्की कैडेट को दिया जाता है। ये कामयाबी पाक फौज की जूनियर क़यादत के आला पेशावराना मयार, आज़्म और बेहतरीन कारकर्दगी की मजहर है। ISBR के मुताबिक कमिश्निंग परेड का मुआयना ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट के मुताबिक उन्होंने किया। तकरीब में सिफारती कोर के अरकान, कैनबरा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, पास आउट होने वाले कैडेट्स के अहले खाना और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के हुकाम शरीक थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान देरीना अस्करी ताल्लुकात मौजूद हैं। 2013 से अब तक पाक फौज के 7 अफसरान RMC में प्लाटून कमांडर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 2009 से अब तक 46 पाकिस्तानी कैडेट्स इस इदारे से फारिगुल तहसील हो चुके हैं। ये 14वां मौका है कि जब किसी पाकिस्तानी आर्मी कैडेट को ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार दिया गया। इनमें लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद तमगाए बसालत में शामिल हैं, जिन्होंने 4 सितंबर 2020 को शिमाली वज़ीरिस्तान में जामी शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट नासिर शहीद का नाम RMC परेड ग्राउंड की यादगारी तख्ती पर भी दर्ज है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने 190 मिलियन पाउंड्स केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की और कहा कि अपीलों में केस की पैरवी से मुतालिक बानी PTI की कोई हिदायत मौजूद नहीं है। सलमान सफदर ने 190 मिलियन पाउंड केस मुलतवी करने की इस्तदा की है। 190 मिलियन पाउंड्स केस में बैरिस्टर सलमान की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि अपील की पैरवी में ही मैं ही करूंगा और इस हवाले से तो मुझे बानी से हिदायत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत बानी से मुलाकात के लिए सख्ती से जेल हुकाम को हुक्म जारी करे। जेल हुकाम बानी और बुशरा बीबी के वकला के इस केस से मुतालिक मुलाकात नहीं करवा रहे। उन्होंने इस्तदा की कि वकालतनामा और हिदायत बानी से लेनी है, इसलिए जेल के जो हुकाम हैं उनसे मुलाकात का हुक्म दिया जाए। अदालत कल 7 की अपीलों की समाअत मुलतवी कर दे। ये इस्तदा की गई है बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से। इस्लामाबाद में डॉन मीडिया के ज़रिए एहतमाम रीद पाकिस्तान के उन्वान से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जारी है। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने डॉन मीडिया के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे फोरम्स माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए निहायत अहम हैं। हुकूमत और बिलखसूस वज़ारत ख़जाना मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इक़दामात में हर मुमकिन ताउन फराहम करें। इस पर हम बात करेंगे DawnNews के रिपोर्टर अमीर हमजा से, जो इस वक्त मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के हमरा मौजूद हैं। अमीर, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था मुशीर ख़जाना का इस अहम कैंपेन से मुतालिक? जी बिल्कुल डॉन मीडिया के ज़रिए एहतमाम बरीद पाकिस्तान के उन्वान से इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के मुकामी होटल में मुनक़्क़द की जा रही है और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ क्लाइमेट एक्सपर्ट बल्कि आला सतही जो हुकाम हैं पाकिस्तान के वो भी शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त इस्लामाबाद के मुकामी होटल में ये कॉन्फ्रेंस जारी है। मेरे साथ एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर खुर्रम साहब मौजूद हैं, इनसे इस मुतल्लिक़ बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि डॉन मीडिया की बरीद पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इस मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि ब्रीथ पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉन ग्रुप को, डॉन की मीडिया टीम और सारे ऑर्गेनाइजर्स आपके मैनेजमेंट को, जिन्होंने ये एक बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इनिशिएटिव लिया है और डिस्कशन स्टार्ट किया है। क्योंकि ये जब बात शुरू होती है और पाकिस्तान देखें ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी से 2-4 है
और इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह की इंगेजमेंट, इस तरह के डिस्कशंस जो हैं, ये अवेयरनेस भी देते हैं और साथ में जो कहते हैं ना एक्शन ऑन ग्राउंड कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दिलाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है एंड आई एम होपफुल कि हम एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जितना सपोर्ट कर सकें, जितना हम इनको जो है वो आगे लेके जा सकें, क्योंकि इसमें ये विन विन है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनिशिएट करता है, प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, डिस्कशन शुरू करवाता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आती है, फाइनेंसिंग के अरेंजमेंट हो या फिर जो है प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना हो। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं होपफुल हूँ कि इसको हम आगे लेके चलें, इसको बड़े स्केल पर लेके जाएँ। जी, जिस तरह आपने इनसे भी जाना है, इनकी जानब से भी डॉन मीडिया की जानब से ब्रीथ पाकिस्तान के उन्वान से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है उसको सराहा गया। ताहम इनकी जानब से फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से डॉन मीडिया के साथ मुकम्मल तौर पर तावन की भी यकीन दहानी करवाई गई है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अमीर हमज़ा इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अभी अपने देखने वालों को बता दें कि वफाकी आईनी अदालत ने मरी में 577 केनाल अराजी के अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं और आईनी अदालत ने 40 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की अराजी का कब्ज़ा पंजाब हुकूमत को देने का हुक्म दिया है। मरी में वफाकी आईनी अदालत का 40 अरब रुपए से ज़ायद की ज़मीन पंजाब हुकूमत देने का हुक्म सामने आया है और मरी में 577 केनाल अराजी के अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई हैं और वफाकी आईनी अदालत ने 40 अरब रुपए से ज़ायद की ज़मीन पंजाब हुकूमत को देने का हुक्म दिया है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बदौलत भक्कर में बंजर रकबा जदीद ज़र्रई और बरामदी मरकज़ में तब्दील हो गया है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़र्रई शुबे में जिद्दत, बरामदात में वसअत और खुद कफालत की जानिब मुअस्सर अंदाज में पेशरफ्त जारी है। CEO पेनिट्रा लिमिटेड फुरकान अली अख्तर के मुताबिक भक्कर में 1800 एकड़ का जदीद ज़र्रई फार्म सेट 60 दिन में तैयार करके नई मिसाल कायम की गई। फार्म पर 13 सेंट्रल पाइवोट सिस्टम्स और 24 मेगावाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के जरिए आपाशी यकीनी बनाई जा रही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पेनिट्रा के मुताबिक 4 माह कबल ये ज़मीन 20 से 50 फीट बुलंद रेत के टेलों पर मुश्तमिल थी, जिसे कलील मुद्दत में काबिल काश्त बनाया गया। सरगोदा में ज़ेरे तामीर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मनसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। 220 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद तरीन दिल का अस्पताल जल्द ही अवाम की खिदमात के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में जारी इस मनसूबे पर मजमूई तौर पर 13 अरब रुपए की लागत आ रही है। 97 केनाल अराजी पर कायम इस अस्पताल में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। अस्पताल में 28 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी वार्ड, 4 ऑपरेशन थिएटर्स और जदीद रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कायम है। मनसूबे की तकमील से सरगोदा, खोशाब, मियांवाली, भक्कर, झंग और गिरदनवाह के इलाकों के लाखों मरीजों को सहूलत मिलेगी। उन्हें दिल के अमराज के इलाज के लिए लाखों लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। पामोलिव नेचुरल्स, न्यू लुक, नेचुरल ग्लो। बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। खुशी है सुपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। चाय बस रेडी है, सही टाइम पे आई हो। बताओ आज इतनी परेशान क्यों हो? ऑफिस में आज बहुत बुरा दिन गुजरा। चल अब तुम रिलैक्स करो। मेरा दिन तो फिक्स हो गया, अब तुम्हारा दिन फिक्स कर। आ जाइए। तुम हेल्प के लिए मुझे कॉल कर लेती ना। मुझे पता था तुम खुद ही आ जाओगी। बिन बोले समझ जाने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। मेरी स्मार्ट चॉइस है डालडा स्टैंड अप पाउच, क्योंकि ये है इजी टू पोर और इजी टू स्टोर, जो बनाए अब कुकिंग और भी आसान, बेहतरीन टेस्ट के साथ।
डालडा स्टैंड अप पाउच, जहां ममता वहां डालडा। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैस कैश ऐप खोलो, प्लान सेलेक्ट करो, हो गया जैस कैश इंश्योरेंस। सोचो समझो कर लो। मेरी स्मार्ट चॉइस है डालडा स्टैंड अप पाउच, क्योंकि ये है इजी टू पोर और इजी टू स्टोर, जो बनाए अब कुकिंग और भी आसान, बेहतरीन टेस्ट के साथ। डालडा स्टैंड अप पाउच, जहां ममता वहां डालडा। Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज V5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। बातें खत्म हो सकती हैं, पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। न्यू एंड इम्प्रूव्ड लाइफ बॉय विटामिन ई और ग्लिसरीन के साथ स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि लाइफ के हर टेस्ट के लिए स्किन रहे रेडी। स्किन रेडी तो हम लाइफ रेडी। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। बातें खत्म हो सकती हैं, पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। बच्चों के हेल्थ की बात हो या पूरी फैमिली के टेस्ट की, एक माँ होने के नाते स्टैंड तो मुझे ही लेना पड़ता है। ऐसे में मेरी स्मार्ट चॉइस है डालडा स्टैंड अप पाउच, क्योंकि ये है इजी टू पोर और इजी टू स्टोर, जो बनाए अब कुकिंग और भी आसान, बेहतरीन टेस्ट के साथ। डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू स्टोर, जहां ममता वहां डालडा।
Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज V5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। मेरी स्मार्ट चॉइस है डालडा स्टैंड अप पाउच, क्योंकि ये है इजी टू पोर और इजी टू स्टोर, जो बनाए अब कुकिंग और भी आसान, बेहतरीन टेस्ट के साथ। डालडा स्टैंड अप पाउच, जहां ममता वहां डालडा। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैस कैश ऐप खोलो, प्लान सिलेक्ट करो, हो गया जैस कैश इंश्योरेंस। सोचो, समझो, कर लो। अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म के दौरे गिलगित बल्तिस्तान की मुखालफत कर दी। नैयर हुसैन बुखारी ने लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत को इंतखाबी कवायद के खिलाफ करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मई की शाम को तलब कर लिया। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिला मानसहरा का दौरा 25 अरब रुपए से ज़ायद लागत के 12 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। Than ever before. ये बात है। मैं भी तो तेरी फैमिली हूँ। यूफोन या टेलेनॉर एक ही बात है। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 9 मई को कराची में सीवी पर मार्का हक उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबिदी ने कहा कि तकरीब में पाक अफवाज को उनकी शानदार खिदमात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन की जहरियत का मुअस्सर और बरवक्त जवाब देकर मुल्क का दिफा मजबूत किया। 9 मई बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीवीओ के मकाम पर कराची में एक बहुत बड़ी गैदरिंग मार्का हक के नाम से करने जा रही है, जो कि फर्स्ट एनिवर्सरी है कि जिस तरह हमारी अफवाज ने हमारे फील्ड मार्शल क़यादत में इंडिया को जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया कि इंडिया जब तक इंडिया बाकी है, जितनी भी उसकी उम्र है वो बाकी है, वो याद रखेगा पाकिस्तान का ये मुंह तोड़ जवाब। क्योंकि हम बड़े अमन पसंद लोग हैं, हम कभी जो है वो अटैक नहीं करते, लेकिन अगर हमें अटैक किया जाता है, हम पे जंग मुसल्लत की जाती है, तो हमने जिस तरह जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो तमाम अफवाज को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ में अपनी लीडरशिप स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस तरह उन्होंने जहाँ हमारी अफवाज हमारे बॉर्डर्स पे, हमारी फ़िज़ाओं में, हमारे बहरी उसमें जो है समंदरों की हिफाजत कर रही थी और दुश्मनों को
मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। ऐसे वक्त में इंटरनेशनल फोरम्स में जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा हर फोरम पे लड़ा, उसके लिए तमाम कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तमाम कौम इस पे उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, अपनी अफवाज के, हमारी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, आसिफ अली जरदारी साहब के और तमाम पाकिस्तानी अवाम के, कि जिनकी दुआओं के बगैर, जिनके जज्बों के बगैर, जिनके हौसलों के बगैर शायद ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती थी। थैंक यू। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। Palmolive Naturals. New look, natural glow. That's the shot. Flawless. फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं। न्यू लक्स, जिससे मिले टैंजरीन की फ्रेशनेस और सीरम जैसा ग्लो, तो मैं करूं कुछ नया। वेट, लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर शॉट्स। मगर किसके लिए? We got the shot. मेरे लिए। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज V5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. New Dove Intense Repair, जिसमें है 8% बायोप्रोटीन फ्यूजन, पाकिस्तान में पहली बार बालों की गहराइयों तक जाए and reverses up to 3 years of damage with New Dove Intense Repair. बातें खत्म हो सकती हैं, पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। New Dove Intense Repair, जिसमें है 8% बायोप्रोटीन फ्यूजन, पाकिस्तान में पहली बार बालों की गहराइयों तक जाए and reverses up to 3 years of damage with New Dove Intense Repair. Introducing the new line of Pell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. कितनी बड़ी फैमिली है तेरी? 7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली। यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली मिलकर हो गई मोर देन 7 करोड़। तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With यूफोन and टेलीनॉर, call more than ever before. ये बात है। मैं भी तो तेरी फैमिली हूँ। यूफोन या टेलीनॉर, एक ही बात है। Palmolive Naturals. New look, natural glow. वेलकम बैक। मौजूद ज़ाहिर है वही है कि आज NOC की डिमांड के लिए कराची प्रेस क्लब में औरत मार्च के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी।
7 ख़वातीन को धर लिया गया। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार के कहने पे कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी मज़म्मत की और लोगों ने ये मज़म्मत की है। हमारे साथ मुनीज़ा और जुहा मौजूद हैं। मेरी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से आज बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये जो है मार्च, जो लफ्ज़ मार्च है ना, असल में उससे उन्हें टेंशन होती है। वो ये कहते हैं कि जैसे कोई जलसा कर लें किसी कन्फाइंड जगह पे या बाग वाग में, जो भी करना है कर लें। मार्च से होता ये है कि जो मजहबी तबका है वो फिर अट्रैक्ट होता है, वो फिर वहाँ वायलेंस का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम इन्हें समझाते हैं कि भैया ये दिन मना लो, लेकिन एक कन्फाइंड जगह में। तो इसमें इस बारे में कभी आपकी बात हुई है उनसे? नहीं, या उन्होंने कोई बात की आपसे? उन्होंने हमसे ये कम्युनिकेट नहीं किया। हर साल वो, मेरा ख्याल है एक ये तो है कि रिस्ट्रिक्ट करें। मतलब मुझे थोड़ा सा ये फील आता है ना कि ऑफन हमारे मुल्क में कहा जाता है औरतों से कि ज़रा अंदर रहो, घर के अंदर रहो। हमारी तो जो एक सोच है कि औरत को राइट है कि वो आके सड़कों पे आके अपने हक की बात करे। और आज जो हमें अरेस्ट भी किया है, मतलब मेरा ये सवाल है सिंध गवर्नमेंट से कि हमें वो क्या सिग्नल कर रहे हैं। मतलब एक तरफ वो कहते हैं कि हम औरतों को पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, औरतों को स्कूटीज़ और बाइक्स देते हैं कि जाओ बाहर फिरो, फ्रीडम। लेकिन जब एक औरतों की मूवमेंट आके सिर्फ ये कह रही है कि मुझे एक दिन मार्च करने दें, मुझे अपनी राइट्स के साथ, और हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वी हैव डन 7, हमने 7 मार्चेस किए हैं उनके साथ मतलब उनकी कोऑपरेशन के साथ मिल के। तो अब एकदम से ये एक चेंजिंग एटीट्यूड, और मैं समझ रही हूँ कि हमारे मुल्क में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम हो रहा है, जगह कम हो रही है, मगर एक तरह से इस एक औरतों की तहरीक को कह देना कि नहीं, एक दिन भी तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते, नहीं, ये तो कहना भी नहीं है ना, ये तो बस है ना कि यार बस 2 मगर आज अरेस्ट, और आज अरेस्ट करना या औरत मार्च इस्लामाबाद और रियासत को अपने, अच्छा, जिससे उल्टा और खबर बनती है। एग्जैक्टली, और हेडलाइंस बनती है। अब मतलब हमारा मौजू आज कुछ मुख्तलिफ होना था आपके साथ, लेकिन अब हम गिरफ्तारी, साथ में रियासत को ये भी फिक्र है कि उसका बैरून मुल्क सॉफ्ट इमेज भी होना चाहिए। ये सारी चीजें कॉन्ट्रोडिक्टरी चल रही होती हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि हमने बात तो करनी थी आपके मुतालबात के बारे में। थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, अगर आप मुझसे कोई भी आगाज करना चाहेंगे। जी, हमारे हर साल काफ़ी सारे मुतालबात होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, बट कुछ हमारी कोर डिमांड्स होती हैं। सो उनमें से मैं एक का इन पर्टिकुलर जिक्र करना चाहूँगी। पहली दफ़ा ये है कि हम लोग मैरिटल रेप पे बात कर रहे हैं खुलकर, क्योंकि ऑब्वियसली औरत मार्च जब से शुरू हुआ तो रेप, हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, वो तो एक रनिंग, एग्जैक्टली, बट मैरिटल रेप इन पर्टिकुलर पे ये पहली दफ़ा है कि हम खुलकर एक खुसूसी डिमांड कर रहे हैं। और हमारी डिमांड ये है, हमारी डिमांड्स कुछ हुकूमत से होती हैं बट बहुत सारी माशरे से भी होती हैं, क्योंकि हुकूमत चलो लॉ मेकिंग कर भी ले, उनकी इम्प्लीमेंटेशन एक तो होनी बड़ी मुश्किल होती है। माशरे में एक्सेप्टेंस ना हो एक लॉ की तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर भी नहीं सकते। एग्जैक्टली, माइंडसेट हमारा एज अ मूवमेंट, एक तहरीक के तौर पे हमारा लोगों की जहनीत बदलने का काम है। सो हमारा ये मुतालबा है हमारे माशरे से कि औरत को ये हक होना चाहिए कि चाहे उसकी शादी हुई भी हो, चाहे सामने वाला बंदा उसका शौहर भी हो, तब भी उसे ना कहने का हक होना चाहिए। और ये बहुत एक बेसिक चीज़ है, और ये हमने डिमांड इसलिए इस दफ़ा इस तरह से रेज़ किया क्योंकि पिछले साल लियारी का एक केस आया था। एक लड़की थी शांति जी, यस, शादी के दूसरे रात पे उसके हस्बैंड ने इतनी बदतरीन तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिनसी तशद्दुद, उसके नतीजे से वो मर गई थी। और वो केस हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र वहाँ पे उसे वो लेके चलती रही और अभी भी वो केस कोर्ट में जारी है। तो हमारा मुतालबा वहाँ से ये उठा है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि औरत को मरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर डिमांड टू कम टू सर्विस। हम लोग होता ऐसे, एग्जैक्टली होता है ऐसे ही, होता है ऐसे, लेकिन हम लोग अभी माशरे से ये डिमांड कर रहे हैं कि औरत को चाहे एक ज़ख़म ना भी आए, कोई फिज़िकल निशान ना भी आए चोट का, फोर्स फिर भी फोर्स है और फोर्स गलत है। और औरत के पास ये, ऑब्वियसली किसी के भी पास ये हक होना चाहिए कि उसका जब जिस्म है तो उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए, चाहे उसने निकाह किया हो या कुछ और किया हो। आपने अपना थोड़ा सा, मतलब पिछले कई सालों में आपने थोड़ा सा अपना दायरा वसी भी किया है, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेंस इशूज़, इसमें ख्वाजा सरा भी आते हैं और मुख्तलिफ जो अगर मैं कहना चाहूँ मार्जिनलाइज्ड, और कोई लफ्ज़ मुतबादिल इसका है नहीं इस वक्त। एक और मैं अभी पढ़ रहा था तो आपने शेल्टर्स की भी डिमांड की है,
तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कुछ हद तक मेरा ख्याल है कि शायद पंजाब में कायम हुए थे, पाकिस्तान कराची में भी, सिंध सूबा सिंध में भी कायम हुए हैं। टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, थोड़ा ब्रीफली। हाँ, सो बेसिकली हमारी ये डिमांड है कि कराची में एटलीस्ट सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में और स्पेशली कराची में हर डिस्ट्रिक्ट में एक शेल्टर होना चाहिए। हैं ऑन पेपर शेल्टर्स हैं लेकिन ऑपरेशनल नहीं हैं। शेल्टर एक इतनी इम्पॉर्टेंट डिमांड है औरतों के लिए, खुसूसन डोमेस्टिक वायलेंस। आप डोमेस्टिक वायलेंस के स्टेटिस्टिक्स हम सब जब आपके पास जगह नहीं है तो हाँ, क्या करोगे? और यही होता है कि वो शेल्टर अगर पेपर पे भी अलॉट किया गया है तो उसका वजूद नहीं है। और फिर जो शेल्टर्स चल भी रहे हैं उसमें भी औरतों के लिए कोई रास्ता नहीं है, यानी कोई नौकरियां, कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है सच, वो जेल की तरह। और कब तक वहाँ रहेंगे? आखिरकार फिर वो कहते हैं कि चले, इससे बेहतर मैं घर ही चली जाऊँ वापस। बिल्कुल। और हमारी डिमांड ये है कि एक तो शेल्टर्स को ऑपरेशनल होना चाहिए और औरतों की जो तंजीमें हैं या जैसे औरत मार्च है उसके कंसल्टेशन के साथ उसके रूल्स बनाएं और हॉस्टल्स भी दिए जाएं। अब देखें कराची में स्पेशली आप देखें इतनी यंग औरतें हैं, काम करना चाहती हैं। जी आई एम सो सॉरी, वक्त खत्म हो गया है, मुझे बार बार कान में आवाज दी जा रही है। आपके बाद भी बाकी मुतालबात मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन प्लीज इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, 10 मई को जरूर आएं और हम मुंतजर हैं एनओसी के। हाँ प्लीज हमारा राइट टू एनओसी हमें दिलवाने में मदद करें। थैंक यू। वो कोशिश करेंगे दोबारा गिरफ्तार ना हो। आज के इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। Palmolive Naturals, new look, natural glow। खेलते हैं बालों का fill in the blanks। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन। ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान राजी हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खोल देंगे। नाकाबंदी खत्म और आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए भी खुल जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान राजी ना हुआ तो ऊंची सतह पर बमबारी शुरू की जाएगी। अगर ईरान राजी हो जाता है तो एपिक फ्यूरी ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान राजी हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। नाकाबंदी खत्म और आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए खुल जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान राजी ना हुआ तो ऊंची सतह पर बमबारी शुरू हो जाएगी। अगर ईरान राजी हो जाता है तो एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम बयान सामने आया। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर ईरान राजी हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। नाकाबंदी खत्म और आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान राजी ना हुआ तो ऊंची सतह पर बमबारी शुरू हो जाएगी। अगर ईरान राजी हो जाता है तो एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान राजी हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए भी खुल जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान राजी ना हुआ तो ऊंची सतह पर बमबारी शुरू हो जाएगी। अगर ईरान राजी हो जाता है तो एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा। अहम स्टेटमेंट सामने आई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर ईरान राजी हो जाता है तो आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये पैगाम समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इससे कबल हमने देखा था कि अमरीका की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ईरान को अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा और उन्होंने कहा कि अच्छा होगा, ये खुश आइंद होगा कि अगर ईरान राजी हो जाए। अगर ईरान राजी हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। नाकाबंदी खत्म हो जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए भी खुल जाएगी। वाज़ेह रहे कि एक जानिब से आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है तो दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल करके उसका पिछला हिस्सा बंद किया हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि अगर ईरान राजी हो जाता है तो आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खोल देंगे। नाकाबंदी खत्म और आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए खुल जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान राजी ना हुआ तो ऊंची सतह पर बमबारी शुरू हो जाएगी। अगर ईरान राजी
हो जाता है तो एपिक फ्यूरी ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। ईरान राजी हुआ तो आबनाए होर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। नाकाबंदी ख़त्म और आबनाए होर्मुज़ ईरान के लिए खुल जाएगी। ईरान राजी ना हुआ तो ऊंची सतह पर बमबारी शुरू हो जाएगी। अगर ईरान राजी हो जाता है तो एपिक फ्यूरी ख़त्म हो जाएगा। अहम स्टेटमेंट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नाकाबंदी ख़त्म हो जाए तो आबनाए होर्मुज़ ईरान के लिए खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान राजी हो गया तो आबनाए होर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी और आबनाए होर्मुज़ ईरान के लिए खुल जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान राजी ना हुआ तो ऊंची सतह पर बमबारी शुरू हो जाएगी। Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. नए मुल्क जाने की परेशानी है या किसी से दूर होने की? उसने कहा है तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारे दादा की तरह। हर उम्र में चलने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। बढ़ती मैं जाऊं खुद पे एतमाद है, चल दी हवा पढ़ के। Olivia hair color. New look, new pack. Olivia, शुक्रिया। रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। जहाँ प्यार की रस्में, वादे कस्में, चाहत का इकरार है, वहाँ गुलबहार है। जहाँ प्यार, वहाँ गुलबहार। Introducing the new line of Pell refrigerators. अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. Jet Cool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Pell refrigerators works as good as it looks. वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है हमारे जाबाज मुहाफिज जुर्रत की तस्वीर। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। ईरान राजी हो गया तो आबनाए होर्मुज़ सबके लिए खोल देंगे। नाकाबंदी ख़त्म और आबनाए होर्मुज़ ईरान के लिए खुल जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, वाज़ेह किया कि ईरान राजी ना हुआ तो ऊंची सतह पर बमबारी शुरू हो जाएगी। अगर ईरान राजी हो जाता है तो एपिक फ्यूरी ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द देरपा अमन में तब्दील होंगे और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। पाकिस्तान ने सालसी में तारीखी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल अनथक दिन रात कोशिशों से फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर की जानिब से आबनाए होर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने ट्रंप का इक़दाम जुर्रतमंदाना करार दे दिया। That's the shot. Flawless. फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं। न्यू लक्स, जिससे मिले टैंजरीन की फ्रेशनेस और सीरम जैसा ग्लो, तो मैं करूं कुछ नया। वेट,
Let's try a few more shots. मगर किसके लिए? We got the shot. मेरे लिए. Lux, मेरा fresh glow. खेलते हैं बालों का fill in the blanks. अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए. कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल. नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू. इसमें है बायो प्रोटीन. ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक. अब बाल देखें 2 गुना घने. Strong and no hair fall worries. नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू. पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन. अस्सलामुअलैकुम. डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत. हेडलाइंस आपने देखी. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डॉन न्यूज़. Palmolive Naturals. New look, natural glow. New Dove Intense Repair, जिसमें है 8% बायो प्रोटीन फ्यूजन. पाकिस्तान में पहली बार बालों की गहराइयों तक जाए and reverses up to 3 years of damage with New Dove Intense Repair. बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं. पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर. सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज. चाय बस रेडी है. सही टाइम पे आई हो. बताओ आज इतनी परेशान क्यों हो? ऑफिस में आज बहुत बुरा दिन गुजरा. चल अब तुम रिलैक्स करो. मेरा दिन तो फिक्स हो गया, अब तुम्हारा दिन फिक्स कर. आ जाइए. तुम हेल्प के लिए मुझे कॉल कर लेती ना. मुझे पता था तुम खुद ही आ जाओगी. बिन बोले समझ जाने वाली दोस्ती. लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग. अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना. मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए. पुत्र, मुझे चादर दे ज्यादा रहा. अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो. अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा. एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे. अब जैज V5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें. ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें. ये ऑफर है हिट क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट. रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना. इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी 5 साल की वारंटी के साथ. रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का. मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले. क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें. दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले तभी तो सबसे ज्यादा चले. लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले. इंसान हर नए काम से डरता है. पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद 5 हाथ का खेल बन जाता है. इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है. जैज कैश ऐप खोलो, प्लान सिलेक्ट करो, हो गया जैज कैश इंश्योरेंस. सोचो समझो कर लो. Palmolive Naturals. New look, natural glow. They give me fake polls. They said 32% of the people are against President Trump. Well, when you explain it, is it okay for, they're totally fake, Iran to have a nuclear weapon? Can't let Iran have a nuclear weapon. You'd have problems like nobody would believe, and it's going very well. President Trump has directed U.S. Central Command to restart the free flow of commerce through the Strait of Hormuz under the umbrella of Project Freedom. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran
Iran to tax, toll, or control. The world needs this waterway a lot more than we do. Americans should by now have learned this lesson, that in dealing with the Iranian nation, they cannot use the language of threat and coercion, and must prevent the United States from further complicating the existing situation. We have been in touch on regular basis. Objective is common. This conflict ends in a dignified manner. We are pleased to facilitate all these efforts, and we are very hopeful that the Islamabad talks it reach to a very advanced level, and we still hope that it will eventually and hopefully very soon conclude. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफ अनू। नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। मिडल ईस्ट का जिक्र करें या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी है, गैर यकीनी की सूरत हाल जो है अब वो जारी है। कुछ कहना मुश्किल है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। पिछले दिनों में अगर ये लग रहा था कुछ बयानात से कि शायद सूरत हाल या जो बातचीत है दोनों ममालिक के दरमियान वो एक अच्छी तरफ इस मामले को लेके जाए, तो पिछले दिनों में तो गुज़िश्ता रोज़ ख़ास तौर पे एकदम लगा कि कशीदगी बढ़ रही है। पहले अगर ज़िक्र हो रहा था मीडिया रिपोर्ट्स में कि एक 14 नुकात हैं जिन पर ख़तो किताबत जारी है, ईरान ने अमेरिका को भेजे हैं, नए कोई प्रपोजल्स हैं और अमेरिका से भी उम्मीद हम कर रहे थे कि मुस्बत जवाब आ सकता है। तो गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़े फिर पता चला कि हमले हुए ऑयल टैंकर्स पे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि हुर्मुज़ में मौजूद जो उनके जहाज़ थे उन पर हमले हुए हैं। उन्होंने Climate Change Act 2017 and the continued oversight of the Standing Committee on Climate Change and Environmental Coordination, we have institutionalized a framework that moves us crisis management to proactive adoption. Our legislation focus has expanded to include the National Adaptation Plan, NAP, and the 4RF framework, which guide our journey towards sustainable recovery and reconstruction. Ladies and gentlemen, our duty as lawmakers is to ensure the sustainability and resilience facility and our national climate finance mechanisms translate into tangible relief for our citizens. In a strong show of commitment to environmental sustainability, National Assembly of Pakistan joined the world in observing Earth Hour 26, demonstrating its resolve to combat climate change and reaffirm commitment to environmental conservation and sustainable development. Domestically, the National Assembly continues to host high-level national seminars and regional conferences bringing together experts, civil society and global lawmakers to exchange best practices. Beyond our domestic borders, this House has become a vibrant hub of climate diplomacy, actively championing the cause of Global South. The Parliament of Pakistan has consistently demonstrated proactive leadership. From hosting key regional engagements such as 2022 IPU Asia Pacific Seminar in the aftermath of the devastating floods to actively participating in global platforms like COP, advocating for loss and damage financing and global climate justice to ensure that the voice of climate vulnerable nation is heard. These platforms not ensure that Pakistan's voice is heard, but is influential in shaping a collective international response to the climate crisis. While these efforts demonstrate strong commitment, policies alone do not deliver outcomes. The institutions do this is where the Parliament assumes a central role. In the context of the 18th and 26th constitutional amendments, which have accorded greater constitutional significance to climate change, the role of Parliament of Pakistan in advancing legislative oversight and policy advocacy in the domain has become increasingly important. Climate action requires strong coordination between federal and provincial governments, which clearly defines the role and align legislative framework. Parliament must facilitate the coordination and ensure a unified national approach to climate governance.
The urgency of Pakistan cannot be overstated. Climate impact in Pakistan are accelerating and cost of inaction continues to rise. The challenge is no longer policy formation, it is effective enforcement. This conference provides us with opportunity to move beyond discussions and towards action. It must serve as a working platform to develop actionable pathways for an improved climate governance. Last but not the least, the effectiveness of our climate response will not be judged by the strength of our commitments, but by the impact of our implementation. Pakistan stands committed to resilience, reform and climate justice, but we also stand firm in calling global equity, shared responsibility and meaningful support. The time is to act now and the responsibility rests with us all. With this, I thank you all. I'd now like to invite the Honorable Federal Minister for Law and Justice to deliver his keynote address. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I extend my heartfelt gratitude to the organizers of this event. The Honorable Deputy Speaker, with your kind permission, I have a long written speech, लेकिन मैंने सोचा ये है कि टॉपिक ऐसा है कि इस पे थोड़ी दिल की बात ही कर लें, क्योंकि ये लिखी लिखाई बातों से मसले हल नहीं होते. हम बैठते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बगैर कुछ लिए चले जाते हैं. तो इतना बड़ा इनिशिएटिव, इतनी एफर्ट एफर्ट, और उस एफर्ट के बाद अगर सिर्फ तकरीरें ही बचेंगी तो कुदरत तो नाराज होगी हमसे जो हमने पहले ही कर दी है. नेचर को नाराज किया है तो आज हम सारे बैठे हैं यहां पे. क्यों ना नेचर नाराज हो कि आज से सिर्फ 100 साल पहले की दुनिया क्या थी जो शायद लाखों सालों पे मुहित थी, और पिछले 100 साल में, या टू बी वेरी फेयर एंड एग्जैक्ट, फिजा में उड़ते हुए लाखों जहाज और उनसे निकलती हुई मिशंस, सड़कों पर रेंगती चलती हुई करोड़ों इंजन वाली गाड़ियां और मोटर बाइक्स और उनसे निकलती हुई मिशंस, और फिर हम कहते हैं माहौल ठीक नहीं है, माहौल बहुत बड़ा चैलेंज हो गया. जाहिर है ये चीज़ें इंसान की तरक्की के साथ साथ आई, हमें इन्हें बर्दाश्त भी करना है. लेकिन सिर्फ लग्जरी तो नहीं है ना, फिर अपनी आने वाली नस्लों को देने के लिए माहौल भी तो छोड़ के जाना है. तो हमें क्या करना है? हमें बैलेंस आउट करना है. इस लग्जरी को एंजॉय करने के साथ साथ ये इंश्योर करना है कि हमने अपना माहौल, जिसे कि हम क्लाइमेट कहते हैं, उसको किस तरह से ठीक रखना है. मैं एज अ लेजिस्लेटर, एज मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, बगैर किसी मुनाफिकत के दिल से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आज भी लीगल फ्रेमवर्क में शायद इतनी ज़्यादा कमियां नहीं हैं, नीयत में, विल टू डू में और एक्शन में बहुत ज़्यादा कमी है. और जब तक ये गैप्स दूर नहीं होंगे, इस तरह की हम दर्जनों कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, हम अच्छी अच्छी लिखी लिखी बातें करके या पैनल डिस्कशन सुन के उठ जाएंगे, हमारे बच्चों को वही माहौल मिलेगा जो हम उन्हें देना चाह रहे हैं. इसलिए कि विल नहीं है, इसलिए कि नीयत नहीं है. मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूं कि प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी है और प्लास्टिक बैग्स पे हमने लेजिस्लेशन कर दी है. प्लास्टिक बैग्स मौजूद हैं, फर्क जरूर पड़ा है लेकिन मौजूद हैं.
मेरे और आपके बचपन में तो नहीं थे होते, कागज के लिफाफों में थैलियों में पकौड़े भी मिलते थे, समोसे भी खाते थे, सारा कुछ करते थे। कन्वीनियंस है, सस्ता है, फटता नहीं, टूटता नहीं है, दूध भी उसी में, पानी भी उसी में, गन्ने का रस भी उसी में, मिठाइयाँ भी उसी में। तो फिर यही करेंगे ना जो हम कर रहे हैं। ड्रेन सारी चोक कर दी हैं हमने, बीमारियां उससे फैल रही हैं और खर्चे पे खर्चा आता है उसकी वजह। ये ठीक कब होना है? जब हुकूमत ने नहीं करना, अकेली ने, मैंने, आप सब ने अपने इर्द गिर्द रजा कराना तौर पे भी लोगों को तैयार करना है कि खुदा के लिए इस जो एक बिद्दत है इससे तो हम लोग बच जाएं, इससे तो बाहर निकले। एमिशंस की बात हुई है, इंडस्ट्रियल एमिशंस अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम अपनी आसाइश की एमिशंस भी तो नहीं ना छोड़ते। हम छोटे छोटे कामों के लिए भी हम बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाल लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रियासत ने देनी है, लेकिन जहां पे है भी बहुत सारे शहरों में, मैं लाहौर की बात करता हूं, ऑरेंज ट्रेन में कोई कमी नहीं है। इट्स एयर कंडीशन, इट्स फास्ट, इट्स क्लीन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 2 दफा एक्सपेरिमेंटली उसमें सफर किया है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मासवा इसके कि आम आदमी के साथ आपको बैठना होता है। वो स्पीडो बसें हैं, आपके पास कराची में भी होंगी, हमारे पास लाहौर में है, लग्जरी एयर कंडीशन बसेस है। बाहर जाके तो हम लाइनों में लग के टिकटें भी लेते हैं, चढ़ भी जाते हैं, सफर भी करते हैं, बड़ा खुश खुश आते हैं। तो यहाँ पे शर्माते क्यों हैं हम लोग? क्यों नहीं इस्तेमाल करते? रवैये नहीं बदलना चाहते हम लोग। रवैये बदलने अपने आप से शुरू करें। मैं ना किसी हुकूमत को डिफेंड करता हूँ, ना मैं किसी लेजिस्लेचर को डिफेंड करता हूँ, लेकिन ये काम एक बंदे का नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं कल्ले बंदे का काम नहीं हजूर, ये सबको मिलके करना पड़ेगा, वरना रोएंगे। जैसे शाह साहब ने कहा है कि ये कोई डिस्टेंट थ्रेट नहीं है, जिस खित्ते में हम रह रहे हैं और जिन हालात में हम रह रहे हैं, इट्स अ रियलिटी। आपके साथ जो हो रहा है, वो फ्लड्स हैं, वो क्लाउड बर्स्ट्स हैं, वो बारिशों ने फ्लड ले आए कि सिंध वाला केस समझ ही नहीं आता। बलूचिस्तान में क्या हुआ, पंजाब में अभी गंदम तैयार थी, याला बारियां, बारिशें, फसलें लेट गई, ग्लोफ हैं, ये सारा कुछ है। तो सर ये एक इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी को हुकूमत ने भी नाफिज करना है और हम सब ने अपने घरों से कोई कार पूल कर लिया करें, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सोच कर लें, कोई गैर ज़रूरी सफ़र, कोई प्लास्टिक के बैग्स के खिलाफ कोई मिशन के तौर पे जारी कर दें, शौकिया आतिशबाजियाँ और ये सारी चीज़ें इनसे हट जाएं, कोई ऐसा लाइफस्टाइल अपना लें जिसमें जो हो सके कम अज़ कम वो तो करें। मेरे ख्याल में यही ब्रीद पाकिस्तान का पैगाम होना चाहिए। आप सब दोस्तों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुंतज़मीन को फिर बड़ी मुबारक देता हूँ कि आपने एक बड़े नेक काम के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। सबको बहुत शुक्रिया। Very fair words from the Honourable Minister that we must all delve deep inside of ourselves and actually look for change bit by bit. Our last speaker for this evening is Mr. Makhdoom Fakhr Zaman. He's the member of the Provincial Assembly of Sindh. He's also the Parliamentary Secretary from the Home Department at the Government of Sindh. Sir, please join us for your address. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today I don't come here as the Speaker of the Sindh Assembly. He was here to be gracing us with his presence, but because of some work he couldn't make it. So he's entrusted me to come here and represent my government, represent my assembly. So I'm really honored and privileged to be standing in front of you. This issue is no longer a distant threat, as the Honourable Minister and the Honourable Deputy Speaker just said. It is here and it is shaping the destiny of Pakistan, particularly Sindh. Sindh stands on the front lines of climate vulnerability, from devastating floods to creeping coastal erosion, from water scarcity to rising heat. We are living in the reality that many still debate. I will mention a couple of incidents which have occurred in the recent future. In 2022, over 12 million people in Sindh were affected by floods, with 2 million homes damaged or destroyed.
Entire districts remain submerged in floodwater for months. Then just recently, last year in 2025, new floods submerged by cloudbursts. 1.2 hectares of cropland devastated rice, cotton, and sugarcane harvests, and they displaced several rural families among several districts. Then if we talk about Karachi being the jugular vein of Pakistan. In Karachi, if you notice, like the past 5-6 days or past week, you have temperatures rising above 50 degrees Celsius. Just 2 days ago, 10 people passed away due to extreme temperatures. And obviously, let's not forget, Sindh represents 90% of Pakistan's coastal exposure, and Indus Delta has shrunk by more than 90%, threatening ecosystems and livelihoods around Thatta, Badin, and Sajawal. Water scarcity and salinity are destroying fertile lands in Badin, Thatta, forcing farmers to migrate from there and move to urban areas or part districts. This is not just a crisis, ladies and gentlemen. It is a turning point. And obviously, let me just put it to your attention that it's a constitutional duty. It's not a choice. Our constitution is clear. Article 9 guarantees the right to life. Article 14 guarantees dignity. Article 38D calls the people, and now Article 9A, which the Honorable Deputy Speaker of the Federal Assembly just mentioned. We recognize the right to clean, healthy, and sustainable environment. Our courts have already interpreted these rights to include environmental protection and climate action. This means one thing, ladies and gentlemen. Pakistan's laws and commitments, I would just put some acts in front of you. Pakistan Climate Act 2017, National Climate Change Policy 2021, National Disaster Management Act 2010, National Determined Contributions, NDCs, 10 Billion Tree Tsunami Program. These are all acts and policies which were done by Pakistan over the past decade. These are strong foundations, but there remains a disconnect between policy and ground realities. Laws exist, but their impact is not always felt where it matters the most, which is the villages, the coastal belts, floodplains, and among that, vulnerable communities living there. And let me tell you, the frontline exposure is Sindh. Sindh's challenge is not only climate vulnerability, it's also governance complexity. We face fragmentation between federal and provincial frameworks, weak translation of policy into district-level actions, insufficient integration of local knowledge into planning. Meanwhile, Sindh's geography demands specialized responses. Coastal erosion displacing communities in Thatta and Sajawal, Indus Delta collapse due to reduced freshwater flows, fish losing livelihoods as mangroves and fish stocks decline, farmers battling salinity, drought, unpredictable seasons, as we see that we are also predicted to face the Super El Nino this year as well. But I'll also highlight some of Sindh government's leadership's achievements so far as well. If you notice, Sindh Environment Protection Act in 2014, establishing a provincial framework for environmental safeguards. Sindh Climate Change Policy 2017, one of the first provincial level climate policies in Pakistan. Mangrove restoration. Sindh now hosts the largest mangrove plantation drives in the world, protecting coastlines and supporting fisherfolk livelihoods. Climate resilient housing, reconstructing 2.1 million homes designed to withstand floods and extreme weather. Renewable energy investments, while wind corridors in Jimpir and Garo are producing clean energy, reducing reliance on fossil fuels such as oil and gas, and which is much needy of the hour, as you could say, with the situation going on in the world. Coming forward, these are significant achievements of Sindh, but they show that Sindh is not just a victim of climate change, it's also trying to act on it as well. But the next phase requires us to move from response to resilience, from policy to people-centered implementation. So what's the way forward, ladies and gentlemen? We must legislate for reality, not theory. We need to decentralize climate governance, empower local governments, mandate district-level climate planning, institutionalize climate cells at district level. We need coastal and delta-specific legislation, Indus Delta Protection Framework, coastal zones management laws, and restoration of freshwater flows. We also need to enlighten our community
People living in the coastal areas or people who are mostly affected are the farmers and the fisher folks. They do not have the knowledge. We need to bring them the knowledge and give them the education so they know what is the decline of their crops and the fish as well. So, and obviously we need provincial autonomy with federal coordination. We want federal provincial alignment. We want each other to take responsibility, because we all are Pakistanis at the end of the day and we are all getting affected by it. So, ladies and gentlemen, closing this, we are not owners of this land. We are its caretakers. Pakistan has laid the foundation. Sindh has shown leadership. But now we must rise. We cannot prevent the rains, but we can ensure they do not become disasters. We cannot stop rising temperatures, but we can protect those most vulnerable. As Chairman Bilawal Bhutto Zardari has rightly said, climate change is the biggest challenge of our generation, and it demands urgent and collective action. That action begins here, today. Through the laws we pass or the ones we delay. The choice is ours. Let it for the farmer in Matiari. Let this legislate for the child in what happened. Palmolive Naturals. New look, natural glow. इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैस कैश ऐप खोलो, प्लान सेलेक्ट करो, हो गया जैस कैश इंश्योरेंस। सोचो, समझो, कर लो। न्यू एंड इम्प्रूव्ड लाइफ बॉय विटामिन ई और ग्लिसरीन के साथ स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि लाइफ के हर टेस्ट के लिए स्किन रहे रेडी। स्किन रेडी तो हम लाइफ रेडी। बातें खत्म हो सकती हैं, पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैस से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैस। बच्चों के हेल्थ की बात हो या पूरी फैमिली के टेस्ट की, एक माँ होने के नाते स्टैंड तो मुझे ही लेना पड़ता है। ऐसे में मेरी स्मार्ट चॉइस है डालडा स्टैंड अप पाउच, क्योंकि ये है इजी टू पोर और इजी टू स्टोर, जो बनाए अब कुकिंग और भी आसान, बेहतरीन टेस्ट के साथ। डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू स्टोर, जहाँ ममता वहाँ डालडा। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे ज्यादा रहा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन, ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। खुशी है सुपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। बातें खत्म हो सकती हैं, पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैस से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैस। That's the shot. Flawless.
फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं। न्यू लक्स, जिससे मिले टैंजरीन की फ्रेशनेस और सीरम जैसा ग्लो, तो मैं करूं कुछ नया। वेट, लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर शॉट्स। मगर किसके लिए? वी गॉट द शॉट। मेरे लिए। लक्स, मेरा फ्रेश ग्लो। बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज। नए मुल्क जाने की परेशानी है या किसी से दूर होने की? उसने कहा है तुम्हारा इंतजार करेगी। वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारे दादा की तरह। हर उम्र में चलने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे ज्यादा रखा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत, और वो भी बेहतर कीमत में। पूरे 50 रुपए की बचत के साथ लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का न्यू लुक। जब भी रोना होता है, मैं हेयर फॉल के बारे में सोचती हूँ। मेरे बाल। मावरा स्टॉप क्राइंग। यूज सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन अर्जिनिन और विटामिन ई के साथ। ना बाल गिरेंगे ना आंसू। सनसिल्क वर्क्स फॉर मी। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। फास दौरान इनकलाब किया बनाए हुर्मुज़ में मखसूस रास्ते इस्तेमाल न करवाने वाले जहाजों को वार्निंग। ईरान के ऐलान करदा ज़ाबतों के मुताबिक आबी गुजरगाह इस्तेमाल करने वाले जहाजों के कप्तानों से इजहार तशक्कुर। ईरान के दिफाई निजाम ने खलीज फारिस में कुशुम जजायर के करीब छोटा ड्रोन मार गिराया। और BSF हेडक्वार्टर समेत भारतीय पंजाब में 2 मकामात पर गुज़श्ता रोज धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान तहरीक ने कबूल कर ली। मुकनिहारी को वाइप कर देगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। कितनी बड़ी फैमिली है तेरी? 7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली। यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली मिलकर हो गई मोर देन 7 करोड़। तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With यूफोन and टेलीनॉर, call more than ever before. ये बात है। मैं भी तो तेरी फैमिली हूँ। यूफोन या टेलीनॉर एक ही बात है। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स, जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज।
पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र मुझे चादर दे ज्यादा रखा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। न्यू डव इंटेंस रिपेयर, जिसमें है 8% बायो प्रोटीन फ्यूजन, पाकिस्तान में पहली बार बालों की गहराइयों तक जाए एंड रिवर्सेस अप टू 3 years of damage with new Dove Intense Repair। इंसान हर नए काम से डरता है। पहली बार प्रेशर कुकर भी रॉकेट लगता है, पर 3 सीटी के बाद बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इंश्योरेंस भी ऐसी ही होती है, जब तक समझो नहीं मुश्किल लगती है। जैस कैश ऐप खोलो, प्लान सेलेक्ट करो, हो गया जैस कैश इंश्योरेंस। सोचो, समझो, कर लो। Palmolive Naturals, new look, natural glow। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें इमरान अली साहब से और अनवर इकबाल साहब से। अनवर इकबाल साहब, ये तो आपसे पूछना पड़ेगा कि क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल को कंट्रोल कर सकेंगे? कई इस पे बहुत लंबी बहस होती रही है पिछले दिनों में, और कोई जिसको कहते हैं ना कंसेंसस नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ईरान के हवाले से जंग बंदी मुआहिदा, क्या इजराइल जो है उसको रोक पाएंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप? एक मैंने आज स्टोरी की है, आपने देखी होगी, डॉन में आज लगी हुई है कि जो जूइश ग्रुप्स हैं यहाँ, जूइश लोग हैं, उनमें इवन वो जिसको कहते हैं वो कनेक्टेड जूज, जो कि कम्युनिटी से कनेक्टेड होते हैं, उनमें भी ईरान वॉर कितनी अनपॉपुलर, और जो लिबरल जूज में तो उसकी सपोर्ट कम होते होते अब 14% पे आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिकन जूइश लॉबीज हैं उनमें इतना शक व शुबा पाया जाता है जंग के हवाले से, तो मैं ख्याल सदर ट्रंप के लिए बहुत दुश्वार नहीं होगा इसको कंट्रोल करना इसराइल को, क्योंकि मेरे ख्याल कि ये पॉपुलर जंग, इसराइल में भी ये जंग पॉपुलर है। एक तो बात ये, लेकिन एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है ईरान में भी और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में भी, जो हमारा नैरेटिव है ना उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मैं जब पाकिस्तान के टीवी चैनल देखता हूँ या ईरान की चीज़ें, मैं फारसी भी पढ़ता हूँ, तो मुझे जो हैरत होती है इस बात पे कि वो ऐसा पेश किया जैसे अमेरिका की शिकस्त हो चुकी है, अमेरिकन मईशत जो है तबाह हो चुकी है, डॉलर अब इंटरनेशनल करेंसी नहीं रहा, अमेरिका ना गोला बारूद बना सकता है ना असला बना सकता है। अब ये सारी बातें इसलिए की, और सदर ट्रंप की छुट्टी हो जाएगी, इम्पीचमेंट हो जाएगी, ये सारी बातें इसलिए की जाती हैं कि लोग अमेरिकन सिस्टम को नहीं समझते। अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हार भी जाएं फिर भी 2 साल पूरे करेंगे और फिर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए रूल कर सकते हैं। अगर असलहा यहाँ दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि असलहा बनाना और गोला बारूद बनाना जो है उसको उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। तो जंग जब ना भी हो रही हो, जब भी इनकी जो कंपनीज जो बनाती हैं वो आपस में लड़ रही होती हैं, हर वक्त नए नए हथियार और नए नए गोला बारूद बन रहे होते हैं। मईशत अब भी स्ट्रॉन्ग है। अभी मैंने 450 मील गाड़ी चलाई ओहायो से वाशिंगटन तक परसों चौथ, और सारे रास्ते आप देखें, ठीक है पेट्रोल महंगा जरूर हुआ है, लेकिन की खुशहाली में, लोगों के मूड में, मैं आया था जिसको कहते हैं नेशनल सीनिक हाईवे, वो पे हर चंद कदम पे एक रेस्टोरेंट होता है, एक कुछ तफरी का प्रोग्राम होता है, लोग उसी तरह उसी खुशहाली से रह रहे हैं। तो अमेरिका कोई तबाह नहीं हुआ है। अगर ये बात आप मान लेंगे
कि अमेरिका तबाह हो गया और ये नैरेटिव बना लेंगे, तो आपके लिए फिर जीती हुई जंग को नहीं छोड़ना चाहता। अगर आपने कन्विंस कर लिया कि आप जंग जीत गए, तो फिर आपके लिए सुलह बहुत मुश्किल होगी। अगर दोनों फरीक ये समझे कि ये जंग ना जीते हैं ना जीत सकते हैं, कि जंग उलझ गई है, तो दोनों ज्यादा तेजी से सुलह के करीब आएंगे। इमरान अली साहब, अनवर इकबाल साहब तो बहस को दूसरी तरफ ले गए। वो कह रहे, मतलब कि हम अभी तक बात ये कर रहे थे कि दोनों जो हुकूमतें हैं उनको अपने ही लोगों को ये पैगाम देना है कि हम जीते हैं। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा आसान ये होगा कि दोनों समझें हुकूमतें कि वो उलझी हुई हैं। सो वेरी क्विकली सर, क्या वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? अनवर ने एक एक बात जो की है, ये आखिरी वाली भी, उससे पहले भी बिल्कुल दुरुस्त है। कैन डिप्लॉय मिलिट्री पावर वेयर एवर व्हेन एवर इट वांट्स, और कोई इकोनॉमी तबाह नहीं हुई। वो 5 का 5.5 तक का भी उनमें लोगों में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेंगे। अमेरिका इज थ्राइविंग, इट्स ओके। उसने जंग में गलतियां की हैं, बट डोमेस्टिकली द यूएस इज अ ग्रेट पावर। इस बात को रिकॉग्नाइज करने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। बहुत बहुत हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मईशत और दूध के हवाले से। Once upon a time, there was a planet untouched, untamed, and alive. A world that never needed protection until we arrived. Water once meant life, now it brings loss. Forests weren't just trees, they were homes. Glaciers once remembered a colder planet. We once looked up and saw the stars. Now we can't even see what's right above us. Children still draw the sky blue. Reality is starting to look a bit different. Nature once breathed freely. Now it struggles under our waste. Once upon a time, this was a beautiful planet. The ending, it's up to us. Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together.
रावलपिंडी में फी किलो दूध 30 रुपए, फी किलो दही 40 रुपए महंगी। दूध की नई कीमत 220 रुपए से बढ़कर 250 रुपए फी किलो हो गई। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मईशत के हवाले से एक बहुत अहम इशू का, और वो है जो दूध होता है, ख़ास तौर पे जो कार्टन्स में दूध बाज़ार में मिलता है उस पे जो हुकूमत ने फ़ैसला किया था GST लगाने का। 18% टैक्स ये जब लगाया था हुकूमत ने, तो उसके बाद पाकिस्तान उन ममालिक में उसका शुमार होता था जहाँ सबसे ज़्यादा महंगा दूध जो है वो दस्तयाब होता है। इस इजाफे पर बहुत तनकीद भी हुई थी हुकूमत में। हुकूमत ने इसको डिफेंड करने की भी कोशिश की थी, और इस पे तनकीद हम कह सकते हैं कि होती ही रही है। बहुत अहम चीज़ है, ख़ास तौर पे बच्चों की जो है ग़िज़ा में ये बहुत अहम होता है। इसलिए हर साल बजट से पहले इस पर ये बहस होती है कि क्या ये टैक्स हटाया जा सकता है कि नहीं। इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन हो, STPI हो, इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी के जो माहिरीन हैं, उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है कि अगर ये टैक्स कम किया जाए कुछ हद तक, तो ये पाकिस्तान में बच्चों के लिए बहुत अहम होगा। जो वज़ीर हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के राना तनवीर हुसैन साहब, उन्होंने भी बहस जब उनसे की गई या बात की गई तो उन्होंने तस्लीम किया कि इसकी वजह से मसला होता है, और उन्होंने कहा कि इस टैक्स के निज़ाम में अगर नरमी की जाए तो पैदावार और जो दूध की पैदावार है और साथ में जो कौमी महसूल हैं, दोनों में इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है इस हवाले से, पर देखते हैं कि अब इवेंचुअल फ़ैसला क्या होता है। और इसी मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अमीन, CEO हैं पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए, अगर हम यहाँ से शुरू करें कि ये जब टैक्स लगा है तो उसके बाद आप लोगों की सेल या जो प्रोडक्शन है ओवरऑल, उस पर कितना फ़र्क पड़ा है ओवर द ईयर्स? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। देखिए, थोड़ी सी 2-3 चीज़ें क्विकली मैं शेयर कर लूँ। हमारे यहाँ दो तरह के बुनियादी तौर पे दूध या मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक जिसे हम सेफ डेयरी, सेफ मिल्क कहते हैं, और एक हम अनसेफ की बात करते हैं। इन दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि सेफ मिल्क वो है जिसके ऊपर सर वक्त जरा कम है, अगर आप बुरा ना माने तो आप ये बताएं कि आप जो डेयरी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ख़ास तौर पे जो कार्टन मिल्क होता है उसकी सेल्स पे ये टैक्स की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है और प्रोडक्शन पे? पिछले 2 सालों में, 1.5 सालों में तकरीबन 27% जो है वो पैकेज्ड मिल्क की सेल्स कम हुई हैं। इंडस्ट्री ऑलरेडी कोई 47% कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो जो आपका जो सवाल है कि कोई 27% जो है सेल डिक्लाइन हुई है ये टैक्स की वजह से, और जैसा कि आपने खुद ही कह दिया कि ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट सेल रेट है। किसी भी मुल्क में 18% टैक्स नहीं है। अच्छा सर, और ये बताएं कि क्या आपने कोई स्टडीज देखी हैं या आपने करवाई हैं कि इससे बच्चों की सेहत पे कोई डायरेक्टली, आई मीन इज देयर अ लिंक बिटवीन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस प्राइस इंक्रीज? कोई ऐसी स्टडी सामने आई है या आप लोगों की इंडस्ट्री ने करवाई है? क्यों मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पॉवर्टी बहुत बड़ी है पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में, तो बच्चों की सेहत पर तो फर्क पड़ा ही होगा, पर इसको हम डायरेक्टली आपकी इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स लगा है उससे कैसे लिंक कर सकते हैं? मैं इसीलिए आपसे पहले उस सेफ अनसेफ की बात करता। ये जो 27% सेल ड्रॉप हुई है, ये सेफ मिल्क की सेल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, अब क्योंकि दूध पीना था तो वो जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है, अनसेफ मिल्क है, वो उसकी तरफ लोग कंज्यूमर चला गया है। तो बजाय उसके कि वो खुले दूध या जो अनचेक दूध है उसको बेहतर किया जाता, लोग सस्ते ऑप्शन पे चले गए। अब जो आपने बात की सेहत क्यों खराब हो गई, क्योंकि वो दूध ना टेस्टेड है ना कंट्रोल्ड है, उसकी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि हुकूमत से आप लोग बार बार बात तो कर रहे हैं, तकरीबन हर साल ही गालिबन आप लोग ये इशू उठाते हैं, हुकूमत से रिस्पांस इस दफ़े तो अच्छा मिल रहा है। आपको लगता है कि हुकूमत को ये इशू समझ भी आया है और वो कुछ करेंगे इसके बारे में?
जी उम्मीद तो है। हमने पिछले साल, क्योंकि दुनिया के अंदर 5% और 10% टैक्स होता है मिल्क के ऊपर, पिछले साल हमने 5% की बात की थी। इस साल गवर्नमेंट के, हुकूमत के हालात देखते हुए हमने 10% प्रपोज किया है और ये बताया है कि अगर 10% टैक्स हो जाएगा तो कंज्यूमर को भी 20 से 30 रुपए सस्ता दूध मिलेगा। उम्मीद है कि इस दफा उनको बात तो खैर हर साल समझ आ जाती है, बट उम्मीद है कि इस दफा वो 18 से 10% कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें IMF का भी क्या कोई रोल है? आई मीन आप लोग क्योंकि हर साल हुकूमत से बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी नो के इशू यहाँ क्या है कि हुकूमत ने रेवेन्यू इकट्ठे करने हैं, IMF का दबाव है, दूध के ऊपर टैक्स लगाना बहुत आसान है। इज दैट एन इशू दिस ईयर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए IMF तो आपको ब्रॉडर पिक्चर देता है कि जी इतनी कलेक्शन होनी चाहिए। IMF ये नहीं बताता कि दूध पे लगाओ, पानी पे लगाओ, फलाने पे लगाओ, वो ये बात नहीं होती। हुकूमत के पास क्योंकि और जगह नहीं है तो जो भी उनको जगह मिली या मिलती है उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। मिल्क के ऊपर पहले टैक्स नहीं था, 2 साल पहले उन्होंने फौरन 18% लगा दिया। हम उनको यही बता रहे हैं कि जी 18% ना लगाएं। पहले हम 5% की बात कर रहे थे, अब हम 10% की बात कर रहे हैं कि दुनिया में मैक्सिमम टैक्स 10% है। आप भी 10% टैक्स लगा दें, इसमें हुकूमत को भी फायदा है। इट्स अ विन विन डील। कंज्यूमर को भी फायदा है कि उसको कुछ दूध, पैकेज मिल्क, सेफ मिल्क सस्ता मिल जाएगा और इंडस्ट्री को भी फायदा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इफ दिस इज द केस, जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी 18% टैक्स नहीं है, तो हुकूमत ने फिर 18% टैक्स लगाने